Saranan sir from southern region. Madhyana ministry. దీన్ని ఇట్లా ఎట్లా పెరుగుతుందండి క్యాల్విన్ పెరుగుతుందండి క్యాల్విన్ ఆటోమేటిక్గా ఎదిగింది जूम कैसे है वो आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं फोटो निकले तो ऐसे सुरेश कुमार नहीं आना सर Thank you, sir. And then from the rear row, Rajesh Kumar Agarwal, sir. Sir, you can see. Srinu Gorla from Meena, sir. Anup Chakrabarti, sir. Southern region. One, Bhaskar, sir. Rangarao is Chairman Action Committee of Western Region. Rangarao sir. And our special invitee from Chandigarh, Sri Mahan Sanjwan sir. Sanjwan ji, yes. आगे Ajit Kumar sir, please come on rise. Okay, so thank you everyone on the dais. Shekhar sir, please. We called you. Sorry sir. Please come on, sir. So welcome all to this session of Tech Talks 2024 Mumbai. So we'll now honor the chief guest, the guest on dais. आप टेक ओवर करेंगे सर? विल टेक ओवर? चलो आ गया ना दूसरा जमाना को भी दे हाँ सर बताइए I request Sri O.E. Babu, our Secretary Western Region, to hand over a book. Welcome the chief guest with a bouquet. Sri Agarwal sir. उनको bouquet. I request Karimala ji. To welcome Sri Venkatamana sir, Chief Architect, with a bouquet. Shri Karimullah. All delegates, please take a seat. Na? All delegates, please take a seat. We now have seats here. So thank you all for coming to the session. I request the chief guest to give his address, please.
Good morning, everyone. Respect. Hello. Good morning, everyone. Respected dear Shri Babu Varghese, Secretary, Shri Krishna Kumar ji, President, the convener of this program, leaders of association from Delhi, Chennai, and other cities, states, all members of CPWD Engineers Association, all friends, colleagues, ladies and gentlemen, I am thankful to you for inviting me in this August gathering and program Tech Talk. As all we know that CPWD is completing its 170 years of service to the nation since its inception in the year 1854. And we all are proud of being working in this prestigious organization. Recently, CPWD has completed Central Vista project, including construction of new parliament building, redevelopment of Kartavya Path, and construction of many IITs, IIM, AIMS scattered all over the country. And these all new buildings has added another features to our glory of the CPWD. We all are proud of it, being the member of this esteemed organization, and we have directly and indirectly contributed in the construction of all these prestigious buildings projects. I was told by the association that last year program was held at North Indian Association Hall and was attended by the SDG sir and other senior officers, wherein Shri P.R. Charan Babu was also present and was honored. I am really happy to know that event is being graced by the presence of Shri Ramdas Athawale ji, the Honorable Union Minister for State for Social Justice and Empowerment, as chief guest of this event today. This association, I was told that, is the largest primary service organization recognized under CPWD, and this association represents around 4,000 plus members as assistant engineers, executive engineers as its members. Association itself has completed 75 years of glorious existence and celebrated Platinum Jubilee at New Delhi on 11th November 2022. That occasion was graced with the presence of Honorable Union Minister, Minister of State for UD, DG Sir, and other senior officers of Ministry, CPWD, and other departments. Apart from service to the cadre, this association has always supported the cause of the nation, and during Kargil War and COVID pandemic, they have come forward for the service of the nation, which all we know. At presently, this organization is being led by Mr. Shishpal Singh ji as General Secretary and Mukesh Sharma ji as President. So, in Western region, Engineer Babu Varghese as Secretary and D. Krishna Kumar, the President and Convener of this program, are leading the association. And I wish all good wishes to them for their success in their endeavor. I also come to know that Western region of association used to have its annual general body meeting at the beginning of each year in Mumbai. Since this year onwards, all similar events henceforth will be known as Tech Talks, wherein new products, new technology, new software, etc. will also be discussed and displayed in the meetings. I am happy to attend this meeting or function and declare open the technical session of the Tech Talk 2024 Mumbai, open for all. When I was entering, I have seen that number of renowned and reputed companies dealing in the field of civil, electrical and mechanical items, technology
are participating here with their new innovative products, technology, and materials. I come to know that large number of engineers from Western region, including from all states under Western region, that is Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, Maharashtra, central leaders from Delhi, and other leaders of the association from all metros, that is Chennai, Kolkata, are also participating and present in this meeting. I wish them all success and welcome in this meeting here. I have also been told by the association that there are certain grievances with the members of the association, which especially they are getting promotion very late. Pay scale is also not has been denied in their, which was their legitimate right, and cadre restructuring, various technical and administrative issues. I hope their leaders will certainly fight for it, and members will get benefit out of this amicable solution on all these pending grievances, complaints. I am happy that association is arranging a wonderful platform with the name Tech Talk and with display of many engineering products, which may prove to be very useful in our career also. I wish all the best wishes to the Tech Talk 2024 being organized by the Association Western Region. All companies, their managers who are participating in this August gathering and exhibition, and hope knowledge gain here will certainly be useful in working of the CPWD. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking speech and declaring open the Tech Talks 2024. We will now start the technical sessions, and due to the paucity of time, we were supposed to start 11 o'clock, at 11:30. We will be going fast on the presentations, and thank you everyone. Thanks for coming on stage. Thank you, sir. Thank you very much. Please. For the convenience of all presenters, diamond partners and platinum partners, there have been, so we are going with alphabetically for the presentations. We are starting with ALP Aeroflex, then Asian Paints, Cape Electric, Chandan Steel, Cubicle India, Daikin, Diamond International, Kohler, Monday Tubes, Mehta Tubes, MSD Controls, Resicon, Saurashtra Cements, that is the Snowsum division, Schneider, represented by Jyoti Electricals, then Trimble Solutions, Window Tex, and after the minister's visit, we'll have Shakti Harman. Thank you. The ELP Aeroflex, please have your present ready, I think. 2 minutes, while we clear the stage. After Aeroplex, it is Asian Paints. Asian Paints representing in the dais. Fine. Can you share your PDF with the USB point? Thank you. Yeah, please. Thank you. Yeah, fine. Mr. Abdul Kader Bengali, he is the Chief Operating Officer of ALP Aeroflex. And ALP Aeroflex, we introduce on the company, and we have got around 30 stalls in the through way which you entered. So I urge all of you to take time off. There are specific time slots for visiting the stalls. So I request you to please visit the stalls and enhance your knowledge and make them happy. Thank you.
A very good morning, everyone. Am I audible? Great. At the back? Wonderful. While the entire stage is getting ready, let me take the opportunity of, first of all, starting it and thanking everyone. Krishna Kumarji and the entire senior leadership team of CPWD, thank you for giving us the opportunity for being able to present a very important solution. But before I start my discussion over here, I think we all understand why we are in a Shamiana. It looks very beautiful, but at the same point of time, you also want to make sure that it is insulated. If it is not, and we have fans over here, we have coolers over here, and the whole purpose of it is because we would want to have a comfort situation while we are sitting here. So what I'm going to talk about in the next 15 minutes or time is about the need for insulation. When we do an HVAC application or a building construction, why is it very, very essential for us to insulate, and what is the benefit of insulation? I'm sure each one of you are aware of it, that an insulation in a space of HVAC contributes to just 2% to 5%, sometimes 10% of the value of the contract. Too insignificant. Is that correct? However, this very small element can have a very major impact in the performance of the system throughout the life, and which is what I'll talk about. What I'm going to talk about today is in front of you in terms of agenda. Why do we need to insulate? Very, very important element. Some basics of insulation. I will not go into detail because I don't have sufficient time available with me. What is very important for us to understand about the needs for insulation, basic criteria for insulation, something about us as an organization, who we are, what do we do. And I'll end the discussion on a very important topic of selecting the right material, keeping into account the life cycle performance and not the performance at the day zero of the product's life. There are 6 major reasons why we need to insulate. The first one is energy conservation, condensation control. You don't want condensation to happen on the structure, on the pipe, on the duct, on the system. You would want to make sure that the process is controlled, which is on the third part. You don't want to have ice formation or the freezing control, which is required in a place where the temperature is very low. You also would want to make sure that there is human protection when the entire system is being used, and eventually noise. You can see the fan is making a lot of noise. It may not be convenient for you to listen. So can you acoustically insulate to make sure that it is comfortable to us as individuals to operate in wherever we are, be it a plant room, be it a conference room, be it a director's room, so on and so forth. I'll only talk about a very basic of it. So if you look at insulation, any material can insulate. Right now we have this particular cloth, and it is trying to contain some amount of heat from the outside to the inside. This is also an insulation. Similarly over here, so anything can insulate, but basically an insulation is broken down into 3 basic structures, which you see over here. Any material which is an open cell, which is typically a fiberglass or a mineral wool or a rock wool, which has an open cell structure, is an insulation. Something which is a semi-closed cell is also a form of insulation, which is basically a polyurethane foam or a cross-linked polyethylene, is a category of a semi-closed structure. And the third one, which is the most important part of it, is a closed structure, which is basically an EPDM or a nitrile rubber. Now what you see at the bottom, just go back, what you see at the bottom is something called as mu value. It's very important that you select the right material based on the water vapor diffusion resistance. And I'll talk about in the subsequent slide that that's a very important element. While insulation might become a very standard stuff, everyone we believe, we know it, that's great. Yes, every one of you are aware of it. But very important element is to select the right material for its life. It should perform for its life. Any material, any HVAC application which is designed for a period of 10 to 15 years. Would an insulation last for that long? A very important performance is the mu value. The mu value changes. Higher the mu value, which means higher the resistance to water vapor diffusion, is a better material. And that's the reason why, as you see, from a mu value of 3, it goes to a mu value of 60,000 or 50,000. That's the advantage of how different material will perform differently over a period of time. There are a few basic key properties of an insulation, starting from the most important, which is thermal conductivity. The lower the thermal conductivity is a property for a better thermal resistance or the control towards heat transfer. The second part is water vapor diffusion, which I just now spoke.
Very important because when any material gets in contact with moisture, microbial growth happens. So the material should be good enough to resist the microbial growth is an important property of insulation. Fire, we all understand the importance of fire, so how much flame spread a material is contributing. When it is under fire, are there droplets coming in or not coming in? That's an important property which is there. However, a very important element, we all spoke about fire, but we all know that people in an unfortunate incident, and cases have been there, people die not because of fire, but because of smoke. And hence, is the smoke toxic? What is the density of smoke? What is the optical density of smoke? Those are very important elements which needs to be seen when we are selecting a material, which is where the toxic foam property comes in. Is it CFC free? Is it HCFC free? Is it nitrosamine free? Is it halogen free? Is it formaldehyde free? All important elements which would contribute to a material being environmentally friendly or not. How easy is it for us to handle it? Does it have fiber? Is it easy for someone to install? Would it have cold joints around it? Again, I always say the devil lies in detailing, and if the fine detailing has been done, we all should be in a much better situation for our life. And then noise control. But however, to me personally, I look at it that the most important element, Ashish next. The most important element which one should look at it, and I would urge the entire CPWD team to look at it, is consider the life cycle performance. It's not the performances, all of these are important, but it cannot be on day zero. Look at it how the material would perform over a period of its life, and then select the right material. What I'm going to be talking more focus is on the water vapor resistance. So just a small number, we all have understood that air is a good material of insulator, right? We have all seen double wall construction with 50 mm of air gap. We have this air opening over here which can really emit or transmit the heat outside. But water has 20 times of a higher heat conduction as compared to air. Studies have shown that if there is 1% of water vapor ingress, the ingress is just 1% of water vapor, the thermal conductivity will increase by 4 to 6%. And think of a situation what will happen over a period of time when water is in constant contact, because when you talk about chilled water, it is at 7 degrees centigrade. A small hairline gap of air entrapment over there will always cause water vapor on the surface of the pipe, for example. And similarly is the situation with the ducts. Hence, a wet insulation, I'll repeat, a wet insulation will never have the same performance as a dry insulation on day zero. We may believe that my air conditioning system is not working because my chiller is not working or my compressor is not working, but it is not that. It is the insulation which is not performing, and hence I am not getting the required comfort. And that's why selecting the insulation at the right time is very important. Now what would happen, you see at the bottom, if the water ingress happens, then you will have, number one, energy consumption will go up because the chillers will continuously run, and you will see that power is being consumed more. No reason for the chiller, but it's the insulation which is to be concerned. Number two, you will have condensation formation which will happen. Number three, it can lead to microbial growths. Number four, which you see is corrosion. I'm sure that you would have seen a lot of chilled water pipes. If you remove insulation, you would see that the pipes are corroded. And if the pipes are corroded, it will lead to long-term losses, which can be prevented, and the cause is insulation. And the last part of it was that there will be a weight gain of the insulation. A brief about us as to who we are. We are a proud Indian multinational company being founded in 1985. We are roughly around 2,000 crore plus group spread across various parts. Again, when we say we are proud because we are a truly Indian multinational company. And what you see at the top, we have operations from far east to far west, all across in 11 countries. We have multiple plants, and as we speak, there are 2 plants coming up, one in Hyderabad, one in Gugulkota, Nimrana, for additional expansion. That will make us become the largest insulation supplier in the country, and we are very proud of it, and we are there because of support coming in from each one of you and the other customers across the country. This is our facility, which is the polymer park. We have invested a lot of things on R&D. We have an R&D lab and in the same campus of Gugulkota, which is an NABL accredited lab. So it's not just we believe on R&D, but we are also working on that for external customers as well. And that's why we are able to offer a best quality.
What are we offering? As an organization, we primarily are working on two categories. So if you have any needs for thermal solution or any needs for acoustic solution, we as ALP Aeroflex would be able to provide the right solutions to it. And we do it through three forms of category. So if you come across a situation where you're looking for cross-linked polyethylene, which is called as XLPE, for any application of thermal or acoustic, we have the solution. Go back. The second is nitrile rubber. We are the largest supplier of nitrile rubber in the country for various applications of acoustic and thermal. And we are also one of the largest supplier of EPDM insulation in the country. So the entire pyramid of solutions is available from the house of ALP Aeroflex. Certain range of solutions which we have placed all the products outside. We would really urge each one of you to come and see it. I will not go more into detail. We have all solutions of thermal, acoustic, we have solutions of jacketing, we have solutions of underdeck insulation, be it for concrete, be it for metal. We also have a lot of accessories which can make sure that the joints are very well sealed and they are addressed properly. But what I'm going to be focused on in my last part of the presentation is why should we look at long-term performance and why should we select a material which is called EPDM, which would soar over every particular property, every material, and what are the advantages to it. The first part of it is a very basic part of chemistry, that EPDM as a material is non-polar. What does polar or polarity means? It's the affinity to attract the moisture or the water particles. If my material is polar, which is the case with NBR of anyone, it's not about me, and I'm doing comparison between my two products, so it's not that I'm comparing with competition. If water comes in contact and if I have a non-polar material, my moisture will not come in contact. So I will not attract the moisture particles. And because of it, all the problems which I described earlier with respect to the water vapor diffusion would come down. And that's where it's the biggest advantage of the material in itself. Number two, the working temperature is far better. I'll not go into detail of it. Because of the moisture part of it, the corrosion element is much lower. It is much better in terms of the UV resistance as compared to anything else. It has an inbuilt microbial property. But again, to me, the most important part of it is this particular slide. As I said before, people die, unfortunately, because of smoke and not because of fire. When we talk about EPDM, and we can show across a video where we have put in a microwave, EPDM on one side, nitrile rubber on the other side, and you have seen black fumes coming from nitrile rubber, which are toxic, and EPDM has white smoke, and the density is very less, and it is non-toxic. We have all the tests. I'll not go into detail. We can discuss it out in the stall. But the toxicity is a reason why EPDM is becoming very popular, and we are very happy and delighted that large part of the CPWD development projects of, let's say, Mumbai Metro and all of others is where they have used EPDM as a material, because when we talk about large gathering, when we talk about large people coming in, the life risk is very high, and we should select a material which typically is safe from a long-term point of view. EPDM, because of non-polar, just to reiterate, my mu value remains constant, my thermal conductivity remains constant, which means over a period of time it does not drop, and it constantly performs in the life cycle part of it. We have all the certifications from FM to UL to IGBC to Green Guard, anything which you can call for. And we are privileged to be a part of many prestigious projects. Central Vista, as Sir Batu mentioned, we have supplied the insulation for Central Vista. We have supplied insulation to all prestigious government projects across the country, in the IIMs, in the IITs, in the AIMS, as we speak. And other sector, be it aviation, in terms of metros, in terms of IT, in terms of solar, all solar part are with us, in terms of data center, in terms of food and beverages, in terms of hospitals, in terms of metros, anything and everything. Thank you very much for this opportunity, and I'll be happy to take any questions if you have. Otherwise, we can discuss more details when we are there at the stall. But thank you for giving us an opportunity. Can you just go back? I have put so many hands, so I would expect all this number of hands at least to come up. Okay, I guess no questions. Thank you very much for the opportunity once again. Thank you. Thank you, Mr. Bengali, for your presentation. Learned something new. I would request the presenters to keep it restrict within the 10 to 12 minutes. And any questions will be taken in the stall, not here. We are running behind time, actually.
I request Asian Paints to come on to stage. Asian Paints कौन है सर? आदमी का नाम क्या है? Asian Paints. Mr. Kirtan, you will be taking this one. Samir Jain, please come on to the dais for your presentation. Next is, I think, Cape Electric. Are you ready, right? This is a timer for your. हाँ, करने से क्लैप करो तो प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Thank you, entire CPW team, for arranging this event and inviting us. I am Samir Vardhan Jain. I am taking care of technical for construction chemical division of Asian Paints. Asian Paints, as you can see, is well-established household name in paint category. When people want to upgrade themselves or want occasions like festivals or marriage, they first think of what? To repaint their house. And we as Asian Paint connect to their heart, and the customer always rely on us for such occasions. We always carry the legacy of reliability. Asian Paint is number one. As you can see, Asian Paint is number one in paint category with having 55% and more market share. But do you know that we are number one in waterproofing category also in retail sales? Yes, you heard it right. We are number one currently in India in terms of waterproofing in retail sales. And this all happened because of you, the customer, who allow us to prove ourselves, and we have done it. We have done it because of our quality products and efficient services. So we are from a project team of Asian Paints, and I would like to show you a small video on project sales.
in waterproofing, products and systems are just 50% of it. Another 50% is when we talk about the application, the applicator and the solution and the services on waterproofing. So Asian Paint is one of the companies in the industry which have introduced foolproof mechanism on effective tracking of waterproofing executions. Please go to the next slide. So in terms of execution, we have defined a complete foolproof system, how to track the execution and make a watertight systems. We have a small video presentation, please. Asian Paints, India's leading paints and decor brand, is driven by its strong consumer focus and innovative spirit. Asian Paints, our products, India's leading paints and over decor 75. Back. Asian Paints, India's leading paints and decor brand, is driven by its strong consumer focus and innovative spirit. Our products and the trust garnered over 75 plus years in the business has made our brand the third largest paint company in Asia. But this is only a part of our story. Our constant desire to keep learning and evolving has made us one of the most innovative companies in the world. While adorning India's homes through wall finish and decor, we have made rapid strides into the construction and chemical business with more than 8 years of experience. With more than 80 smart care products, 26 plants in 19 countries, and with the constant efforts of our team of researchers and doctors, we are the fastest growing waterproofing brand of India. The secret to our success is a strong, dedicated team that has its ears to the ground, catering to the needs of our customers and providing them with a one-stop solution. Under the Asian Paints Project Sales Division, we at Asian Paints Project Sales understand our customers' need for a better visibility, more transparency, and a hassle-free, on-time service. And for all those needs, we have one solution. Asian Paints presents Total Assure, a first-of-its-kind end-to-end service for building maintenance that provides a comprehensive and expert solution with professional execution and offers complete accountability and transparency in the service. With the integration of superior technology, seamless and optimized approach, we ensure a strong on-time delivery service to you. In order to provide you with a comprehensive and expert solution, our technologist visits the site to understand the problem and curates our customized waterproofing repair and painting solutions based on the usage of surface, severity of damage, and keeping your expectations in mind. We partner with highly experienced and professional applicators with mechanization capability and trained teams for a higher quality of execution and a quick turnaround time. To ensure seamless and efficient service delivery, the entire project is divided into stages. And we ensure tracking and complete transparency through a customized portal created for you to remain updated with project status in just a click of a button. We divide the project into project initiation, project planning, project monitoring and control, project updates, and at the time of project closure, our technologists hand over the warranty certificate to the customer, and our team stores all the documents on a server for future reference. Even after project closure, we are always there to help you with a predefined SLA of 48 hours to contact you.
With this assurance of Total Assure, you can expect on-time delivery services, seamless execution, quality application, higher supervision, and expert consultancy on solution recommendation. For the best results, choose the best in the business. Asian Paints, Total Assure. Again, I would like to thank you everyone. And I will promise everyone that we will be a reliable Asian partner. Paints. In We will be a reliable partner for your future waterproofing journey, and we will take your feedbacks and improve our system solutions based on that. Thank you once again, and our install number is 2. We would like you to show all our systems here. Thank you. थैंक यू सर. यहाँ बेल का जरूरत नहीं पड़ा, अच्छी बात है. सो नेक्स्ट इज केप इलेक्ट्रिक. घुमाएगा रुको. प्लीज कम ऑन द डैश. रात तक इधर ही है. रात तक इधर ही है. हाँ? इसमें से कनेक्ट होता है करने है क्या? हाँ बाद में कारण है एक ही लगाएगा ना, दो दो थोड़ी लगता ना एक बंदे का नहीं करेगा इसमें ही करो इसको. हेलो. हाँ नेक्स्ट इज चंदन स्टील. हाँ हाँ. रेडी विथ योर प्रेजेंटेशन राइट. हेलो. हाँ ऑर्डर ले लेंगे. From Cape Electric, Abhijit Kumar from Cape Electric. Hi, good afternoon all. I'm Abhijit from Cape Electric. I am working as a manager sales and marketing located at Mumbai. We, Cape Electric, having 2 factories. Mainly we are in the business of lighting protection system, earthing and electrical safety with junction boxes, such protection devices. Now, we have a plant at 2 different locations, Chennai and Nagarcoil, for the manufacturing of earthing and lightning protection system. And we have branches in different parts of metro cities and the other states like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Lucknow, and different places of India. पासपोर्ट मालूम नहीं. बोलता बात. We'll start with the first, the most and major issues of present India is electrical safety. Every day we are hearing that there is a fire in this hotel, this building. We are the one who is doing the electrical, we are the consultant for the electrical safety. We are taking care of complete forensic investigation of low voltage system if the reason, the issue and all these things happened for the fire. And secondly, we are, as I told you earlier, we are the manufacturer for earthing lightning protection system. And we are providing the modern solution of global earthing system for the
And we have the industrial plug and sockets for the junction box enclosures, feeder pillars. That we have the partners all over the India for that. And the last, we have surge protection devices. Surge protection devices is also a major things which which we are missing. We are only considering the lightning protection system, but we are ignoring the importance of surge protection devices in our building. This, you can see, this is the global earthing system. In this, you can see we have associated with the partner from the initial stage of the building. In this is the most and modern method of the earthing protection system. We don't require any earth pits, no vertical electrodes in the soil when we are utilizing this system in our building, either it is a commercial building, industrial building or residential building. This is a free from earth electrodes, and as you can see, I have clearly specified that this is the CPWD specification 2023, also adopted the same system, which is for the system which is having less than 1 kilovolt or more than 1 kilovolt, the same system should be adopted for the building. All earthing, as you can see, there is no earth pit in soil. The system, the thing is that we are making a completely grid below the buildings which can help us to avoid the vertical electrodes from our premises, either it is any type of building, commercial, industrial. With this is the common method for, there is no need of individual earth mats, earth pits for the different services like UPS, lift. For all, we can interconnect with the same grid which is available us from the bottom of our reinforcement, from the raft. See, just now in the earlier slides we have discussed about global earthing system. This is the integrated lightning protection system. Due to aesthetical point of view, now from the architects are not ready to use the external lightning protection system which is visible, because it is avoiding their aesthetics. It is the aesthetics is not good. So the system which is this, it is a completely embedded system inside the soil and inside the concrete. There is nothing which is visible that can be a problem for the aesthetic look of the premises. And as I informed you, we are the sole manufacturer of these items, earthing and lightning protection systems. And you can see just now we told that the importance of such protection devices. We are putting lightning protection system and we are thinking that our building and equipment both are safe, but it is not that. For making safe our equipment, we need such protection devices. Since by placing the lightning protection system in your building, we can only protect your structure. But for protecting the equipment, you need to install such protection devices in your panels. The things, we are segregating lightning protection in two parts. It is conducted surges and radiated surges. The conductors which is coming from your premises, from the outside structure, that can travel through the lightning can travel through that conductors and can damage your equipment. So again, I am making it clear, for placing lightning protection system, your equipment is not safe. You can see we have this bus bar mounted such protection devices, which is patent device. Patent device means we are offering 10 years warranty on that product. And the response time of that product is 1 nanosecond. 1 nanosecond, it can help you in that minimizing the current which is traveling through your conductor to the panels. And there is a different models that for
DIN rail mounted SPDs, that it will be up to 100 kiloampere, you can get that. For if the breaker size, it is purely depend upon the, we can selecting him, it is up to the, what is the short circuit current rating is there, what is the, we need for either only for distribution boards or for main LT panels. These are the consideration we have to thought before considering the such protection devices for our premises. You can see for the lightning protection system, we are using the lightning counters in our buildings. For the surge protection, also there is a counter which we can install for the surge protection devices. It will also work as a counter, and we can see that how much strike happened in our panels. See, as I informed you that we are working as a electrical safety consultant, or we are doing a complete forensic investigation for the for the safety. You can see we are participated for the we are participating with the client from the initial stage. Like that, we are giving design support, training support, verification of basic drawing support during erections. All these things we are doing, and we have a software called Solve. We are making everything save there for the future reference of yours as well. We are keeping everything as a in our software, which can make everything in a proper documented way, and we are see, as I mentioned here as well, there is a CPWD internal verification 2023 also explained about the verification and installation. That after the which we have installed the panels and breakers, whether they are able to trip in the specific time or not. For that, there is a different tests are there. As per IS 732, there is total 17 tests we have to do in our buildings. This is a non-metallic enclosures. Non-metallic enclosures means it is a double insulated enclosures where we don't need the earthing for this panels. It is double insulated. It is itself earthed column boxes. You can see we can customize this panel up to the requirement of our use. And there is a different see, it is a polycarbonate boxes, FRP boxes, GRP boxes are there, which we can use for feeder panel pillars, and different ranges are there. These are industrial plug and socket. We have associated for the brand called PCE for this industrial plug and socket. There is a different from 16 ampere to 125 ampere. There is a industrial plug and sockets we are having. Last sir. See, I have highlighted our USP. We are the UL listed installer, and we have the products for lightning protection system which is tested by the impulse current 10 by 350. And we are having own installation team in the complete all over India. We are doing all installation on our payroll employees. There is a no subcontracting the installations. I would like to inform you that we have associated our Managing Director Mr. Gopa Kumar associated with lot of Indian standard and international standard for the making the standards for the electrical safety, lightning protection system, surge protection devices. Thank you. Thank you, Abhijit. So that was from Cape Electric. So if you have seen the presentation, you would have seen that he was stressing about the structural earthing. That is something which is now part of our civil specifications for electric was part 1 2023. And then the interesting part is that the architects are very much in favor of that one because it sort of gives a more aesthetic appearance to the buildings. And so that is something which as engineers on field, both civil and electrical, have to respond to it because it makes the installation much more safe and then more aesthetic. That's what we all require. Thank you.
Please come on. Your time starts now. Okay, fine. From Chandan Steel, Siddharth Mittal from Chandan Steel. Thank you. Good afternoon to all of you. CPW engineers team, ladies and gentlemen. I, on behalf of Chandan Steel, taking care of marketing and product development operations, would like to talk to you about something which may be of great interest to CPWD activities. It's something new, and as India, we are growing, and we want to be the best in every sphere, whether it's our industrial applications, our products, our buildings, our engineering applications related to infrastructure. We want to be the best now. That's what the vision is. And Chandan Steel, 40 years back, thought of stainless steel when there was hardly any stainless steel being manufactured in India. So I take you through something very interesting for you to consider in your projects, in your applications, the need of the hour, the green steel. So I'll take you through the stainless steel legacy. We have been present in 65 countries with 40 years of experience, the coverage of applications ranging from the infrastructural applications to industrial applications to high precision applications. Chandan Steel brings on table a lot of technical expertise and product knowledge and the application knowledge to you. If you see, these are the milestones what we have been to, and being a Make in India company, it's had been a pleasure to have a joint venture with the inventors of seamless tube and pipe technology from Germany, Management Stainless Tubes, which invented it 130 years ago. So they came to us and we had a joint venture with them in 2018. Our products range from all sorts of forms you can think of in stainless steel, right from melting of stainless steel to anything like flats, like flanges, tubes, pipes, wires, wire rods. It goes into a wide range of applications. We are also a BIS certified company for all our products. If you can see this slide, what it talks about is our expertise and our knowledge in various applications, in various industry segments. These are the various acclaims, approvals from statutory bodies to the various industry segments like power sector, oil and gas, nuclear, automobile, whatnot. Yep. We are also very much environmentally clean, thought of. Now, I would like to make something more relevant and more interesting for you. What's the use of stainless steels and how this can be of great importance to you when we are talking of structures where structural life has to be 50 years, 100 years and whatnot. Stainless steel brings on table these kind of possibilities. Let's explore it through some of the applications. So we take through an application which is rebars. Now currently, as probably you all would know, that steel bars that we use basically are zinc coated or normal steel bars, hardened or epoxy coated. These kind of structures are more prevalent today in strengthening the concrete and the cement applications. Where now when we talk of stainless steel,
it has already found its prevalence and relevance globally, and it has been used in countries, developed countries like Japan, Germany, for last 40, 50 years. This is one of the applications, as you can see, going forward in various of the slides from Japan, Germany. This is an interesting one for you, where you expect that the repair and maintenance should be low, as well as the life of the structure has to be high. Then there is no doubt about it that stainless steel is really the way forward, and for a better vision for the infrastructure application. This is something which is what we call as an material selection guide, which probably, if somebody is interested, we can talk in detail when you visit our stall of Chandan Steels. These are some of already stainless steel is being now used for last few years in some of the Indian projects. As you can see, bridges, the railways, the high-speed trial tracks. This is a railways project again. There has been, in fact, in Mumbai, it has been used. So this is something like Kolkata Metro Rail. Now, wherever you are going in the metros, you would see a lot of stainless steel installations and structures. This is few more in Mumbai, as you can see. This is the Delhi airport, the bus shelters. So what all stainless steel products that you can find possible is for handrails, railings, rebars, entrances, steel furnitures. You can use it in any of your civil designs as a very reliable material with a lot of cost effectiveness in terms of life cycle costing. So if you want to have a very strong tomorrow, easy to use material with almost no maintenance, as well as long life and reliability, why? Because it has impact strength. It has a stainless feel because of a chromium nickel alloy being used, and it has very good thermal properties, corrosion properties. It can be used in any kind of environments, whether it's a saline environment, high temperatures, low temperatures, very good in mechanical properties on that front. So what you see as stainless steel, I would put it this way, that 30, 40 years back, when we used to have this slogan or an advertisement from Hero Honda, fill it, shut it and forget it. Stainless steel is something like that. You just put it and just forget about the repair and maintenance. Thank you very much. There's still 2 minutes left. That's a good thing. We expect people to do the same thing and following this one. We are already 32 minutes late as of now. Cubicle India. Yes, ma'am. Next is Daikin. Next is Daikin, please. Yeah, Suman Verma is here from Cubicle India. Function F5, function F5. Okay. Thank you everyone to invite me, and thank you CPWD team and Tech Talk team who has organized this event and given us an opportunity to introduce ourselves. Okay, so I would like to introduce Cubicle India. Cubicle India is a rising company in India, and it is the most top choice now. The customer is becoming trust on us. So next slide please.
Cubicle India is established in the year of 2018, and I am the founder. I would like to introduce myself. I am the founder of Cubicle India. And the next slide. Yeah, so I have already introduced. So what we do, we are the manufacturer and the service provider for the modular toilet cubicle systems, and we do projects all over India. So whether it's a restroom cubicles or a changing room, shower room, so we made these cubicles. And service, what service we offer? We offer the customized services, okay? And other things like, what happened? Yeah. Yeah, our vision is to become a best choice for all the customers who need this kind of cubicles. And next slide. We have launched our brand by the name of InCube. Yes. So as I told you, we have modular restroom cubicles, changing room cubicles, and shower cubicles, urinal partitions, and PD doors. We have defined in a 13 distinctive economy series and first choices. All these are the models which will explain you in detail in the next slide. This is the most budgeted series and yet to look very beautiful. So also we have other slides also where we have other options. So the second option is the first choice series. Third options. This is the ultimate series. And this is the anchored series. So we have a different kind of models depending on the sizes, height, models, and the hardware which we have used. And we have comes in an elegance model like a top ceiling hung. This is go for the luxurious projects. This is the curtain series we use. And this is the elegant series, top height cubicles. Invisible series, mostly suited for the Indian WCs or shower cubicles. Top anchored series, this is also for the luxurious project. This is the different models, the piping series to look beautiful, so mostly client go for this also. So PD door, this is the only concept of door. If someone need door which is 100% waterproof, so you can go for the PD doors as well. This is for the kids series, for the pre-primary schools or like mini KGs. So we have a vibrant color option for the kids as well. So what is the material we use for making this kind of cubicle? It's a high pressure laminate sheets made with a phenolic craft paper, layers of craft paper, and with a chemical treatment to make it more durable and moisture resistant. Next. The hardware which we use is the aluminum sections and SS304 sections and SS304 hardware and nylon. The first which explain you for the economy series, we use the nylon hardware. The lock, knob, hinges, core hook, all this is the standard hardware which we use for cubicles. So what is the features of material? We'll explain you the next slide. Yeah, it is the production timeline is 20 to 25 days is the production timeline, and it has a dual location setup. We have a factory in Chandigarh and Ahmedabad, and we also manage the inventory in Mumbai. We have a stock in Mumbai, so if anyone want very urgent basis, so that also can be provided. We do quality check of the material for each allotment. Whatever the material get produced, we do the quality check at the factory. And yes, for the urgent project, we can immediate supply the materials. IndiCube is also launching some like workstation, as mainly because of our services, client asked for the other products. So we have launched the workstations and modular ceiling, flush doors, carpet tiles, and IndiCube door frames. Yes, why choose Cubicle India? There are many companies who can give the toilets, but why choose Cubicle India is that immediate delivery and no false commitment. Whatever we are committing, if we are giving you in 2 days, so we will commit that. Otherwise, we will not take the order. And quality focus, yes, our main agenda is to focus on the quality what we are giving to our customers. The quality is the main focus.
and 10 years warranty. We give a 10 years warranty on a product, on your 100% waterproof material and other bending and other thing. And nationwide service, wherever is your project in India, whether it's in somewhere like what we can say, Siliguri, Assam, we will do projects there. Yes, skilled laborers. We only use the skilled labor who are experienced from last 20 years in the same cubicle installation. So we only use for this kind of person. We only use the tested and certified products. So we do our own testing. We have done the BIS certification and NABL certifications. And customized design, if client has their own design other than what we offered. So we also do that also. And yes, after sales service is very important. Once the work gets done, it's not like we have completed the project. The after sales service is also very important in our organization. Yes, prompt response. Yeah, whenever our client asks for something, we give immediate response to any of our client, whether it's for single cubicles or for the 100 cubicles or for the 1000 cubicles. Reasonable offer, yes, the price is the main criteria. The quality product which we offer, so for that, our price is very reasonable comparing to others. Next slide. We have some color option for the solid colors. You can see for the schools, kids, and for offices and other kind of project, we have lots of range. And we have wooden option. For the premium look, we can go for the wooden as well. These are some clients we have listed out here. These are the big clients we have dealt with. This is the project list. We have done lots of university. You can see all the universities, which is MIT, SR, other Parul universities. And in the banking sector also we did for ICICI, HDFC, other ICICI Lombard. And automobile sectors, Kia, Cargo, Jaguar, Skoda, all other known companies. And corporate sector we did for Godrej, Lodha, L&T, Norbit, Nexus. You can see all the Goa airport, Visakhapatnam airport, Bhuj, and like Oppo, Brand Factory, Luby, Marathon Future X, iPhone Factory. So our I'll talk about the recent achievement is that we are doing iPhone Factory. More than 6,000 cubicles has been already installed there in Chennai, Foxconn. And we are doing some government projects as well, which is also a very premium one. And yes, our office is in Virar, and our godown is in like Virar East. Yes, that's also in Virar. Only our factory is in Ahmedabad and Chandigarh. So thank you so much for giving your time. Thank you so much. थैंक यू मैम. सो अभी तक हम बेल यूज ही नहीं कर पाया. अच्छी बात है. प्लीज कंटिन्यू. डोंट वांट टू यूज द बेल टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन बिटवीन. तो नेक्स्ट डाइकिन. इसको लाता हूं. Good afternoon, everyone present here. I would like to thank CPWD for giving us this opportunity to present on this forum in front of all the CPWD engineers and our fellow partners presenting in the event today. So my name is Jasraj. I look after VRV business for Mumbai region. So I'll be taking you through the VRV presentation, and followed by that, my colleague Mr. Mragesh would be taking you through the chiller presentation. So firstly, I would like to introduce Daikin. Daikin is a known name in HVAC industry.
we proudly present ourselves as the #1 air conditioning company in the world. The company was established in the year 1924 by Mr. Akira Yamada in Osaka, Japan. So this year we'll be completing our 100 years of establishment, Daikin Industries, Japan that is. And today we have 95,000 plus employees working across the world, across the globe, from which about 84% of the working people are outside of the Japan. So coming to the India presence, we are registered as Daikin Air Conditioning India Private Limited in India. We came into India in 4th of April 2000. Our head office is situated in Gurgaon, and we have a factory at Nimrana, Rajasthan. So Daikin is an air conditioning specialist, which we are focused, and Daikin is the only air conditioning company which makes their own air conditioners, compressors, as well as the refrigerants. Our focus is on research and development, manufacturing, sales, and after-sales services. So I'm not sure many of people might be knowing, but the refrigerant R32 was invented by Daikin, and we opened our patent to all the fellow air conditioning companies so that they can also benefit from this refrigerant, and thus this was a step from Daikin towards our environment consciousness. So as I told you, we have a 40-acre factory in Nimrana, Rajasthan, and we have come up with a new factory in Sri City. So in this factory, we have our AC/DC training center, we have our R&D center, and the DIGEM facility. So DIGEM is basically Daikin Japanese Institute of Manufacturing Excellence. So there was a tie-up between India and Japanese government to provide skilled and trained labor for India, and they chose only 3 Japanese companies, and Daikin was one of the Japanese company which was selected by the government of India and Japan for imparting this training to the people of India. So this is the entire product lineup. So Daikin is only into air conditioning. We don't have any other product vertical. We don't have any other businesses that we are into. We are only into refrigeration and air conditioning business. Right from the residential machines, we have our air purifiers. We have a VRV system, which is our most premium product. We have the rooftop machines, and we have an entire range of chillers, refrigeration and filtration system also available. So this is one award that I would like to highlight here. In the year 2022, Daikin's chairman, Mr. Kamaljeet Java, received an Appliance of the Year award by Honorable President of India for the National Energy Conservation Award held in Delhi. These were for our energy efficient products. So now coming to the product presentation, that is the VRV first. So Daikin was the first company to bring this technology to the world. Now we are the first one to introduce VRT and VAV technology. So what is VRT and what is VAV? I'll just tell you about that. So VRT is nothing but the adjustment of the refrigerant temperature, basically the adjustment of the evaporator temperature to suits the internal climatic requirement. So based on the internal load, our evaporator temperature modulates, which is an additional command that our compressor is getting from the machine, thus improving the low load efficiencies of the machine. And VAV is nothing but the variable air volume, which controls the air volume according to the demand of the indoor. So this is one graph which shows in the normal predominant VRV system, what used to happen, only the reduction in the power was because of the inverter technology. We used to only change the flow of the refrigerant in the VRV system. But now in VRT, what we have done, we have also changing the evaporator temperature, which further gives you a reduction on the energy consumption, thus giving a very efficient system by using the VRT technology. So now most of the VRV's technology is known to everyone. So I'll be just taking you through the key highlights or the USPs of Daikin VRV system only. So one of the key USP that we have in our VRV system is that our PCBs are refrigerant cooled. So what happens at a higher ambient temperature, because of the running at the higher ambient temperature, the chances of failure of PCB increases.
So what we did this refrigerant cooled PCB, which brings down the failure rate of the PCB drastically, thus improving the reliability of the product. Now coming to the compressor, Daikin has its own compressor. We call it as a K-series compressor. These compressors are manufactured by Daikin, and they are manufactured by using a thixocaustic process. Thixocaustic process is basically a process of manufacturing a material with high tensile strength and usually used for turbines or piston manufacturing. The same technology is used in Daikin scroll compressors also. So this high tensile strength allows you to have a better volumetric efficiency inside the compressor, because we can reduce the wall thickness by using this. So 2.5 times stronger, and even with the thin, what you can say, vanes, we are able to achieve that equivalent amount of strength with this material. Now coming to the next feature, this is an automatic refrigerant charge function. So we are aware in VRV that we need to charge the refrigerant inside the system during the time of the commissioning. So predominantly what we used to do, we used to have a measuring system, and we used to measure the gas that we are topping up in the system. But now in this VRV-X, we have this automatic refrigerant charge function available, with the help of which the system will automatically calculate the amount of gas that is required, and based on the system piping length and based system connectivity, the system will automatically take the amount of refrigerant that is required inside the system. This will ensure that your system is never overcharged or undercharged, thus improving your efficiency drastically. Now, in most of the CPWD application or the government application, predominantly chillers were used. But nowadays, it has been shifting because of the flexibility in design. Because of the flexibility in design, and the what you can say, floor-wise or the stage-wise investment, so people are preferring for a VRV instead of a chillers nowadays. So this is the high static pressure that we have shown. These machines are actually able to be installed in a high-rise towers also because of the high static pressure on the outdoor units. And this is our range of side discharge machine, mainly for light commercial application, and we also have a VRV home for particularly for home applications. This is the entire gambit of the indoor that is available with us, right from compact cassette, round flow cassette, the one-way cassette, everything is available with Daikin. So you have a flexibility of design whenever you are planning your interiors or your office spaces. Now, during the COVID time, one important thing that we came to know is the indoor air quality. Everyone stressed a lot on the indoor air quality. So now with this Daikin PM 2.5 filters, we are able to give you a better filtration in the standard machine itself without doing any further attachment or any modification in the machines. You can just install these PM 2.5 filters in our existing machines. You can even go for a retrofitting of your existing machine with these PM 2.5 filters, and you can use this filter for better indoor air quality. We also have an option of MER weight filter with our round flow cassettes, which will improve your indoor air quality. Now, VRV was predominantly seen as a light commercial application, but now with the help of the AHU kit, we are able to connect these VRVs to the AHUs also, thus expanding our foray into hospitals or critical application wherein AHU-based systems are required for indoor end applications. This is one unique thing that we are promoting is a Daikin gas tight joint. So basically these are the braze-free connections that we can do with the Daikin machines. So no need of having a brazing joint on site, a complete elimination of fire work at site. You can use this gas tight joint and have a safe and fast and reliable installation using this Daikin gas tight joints. So these are some of the prestigious projects that we have done. The Central Vista and the new Parliament building in New Delhi is done by Daikin, around 4,000 HPs and 1,500 tons of chiller. The Statue of Unity, again 1,300 tons of chiller done by Daikin. This is Aeon in Pune. This is the largest single VRV installation in Asia. Around 35,000 HP is installed in one premises, and that is being done by Daikin.
Daikin did the first LEED Platinum certification project with our VRV machines. That is the CRISIL building in Powai. This was the India's first air-cooled VRV Platinum certificate project. Next is the first water-cooled project that we did, again a platinum project we did for, and these are the list of projects that we have done for CPWD. We can skip this. So these are all the reference projects that we have done for CPDs. So these are our channel partners. S-Cube, MaxCool, Iceberg, NA System and VAV Air Conditioners, who are working with us in most of our government projects. So you can get in touch with them also. And this comes to an end for the VRV presentation. We'll move ahead for the chiller one. Thank you. Yeah, thank you very much. And my name is Rajesh. I am basically part of applied team. So I take care of chillers. So very quickly, actually we are running out of the time, so I very quickly will run through this. So product already we have discussed. So we offer chillers right from 2 tons to 3,000 tons. That's the entire range we have. And apart from chillers, we are also doing the complete plant to management. So it's not that we are just giving you the chillers, but along with the chiller, complete plant management controls is also being offered by Daikin. The most important part, the thing which we wanted to discuss today with you is that BE has already come up with star labeling programs even for the chillers, and the chillers has become a mandatory equipment under the list. So going forward, all your chillers has to have a star labeling program under the BE certification, and that is where now we are moving from typical AHRI 550, 590 standards which we were using earlier for the chiller specifications. Those standards have been changed. So do please contact us so that we can discuss more about these standards and what B star rating program and how it is being done, and we can help you in the specification building for your project. So these are typical water cooled chillers we have from in a screw range we have from probably from 50 tons to 500 tons, and then we have chillers available in both VFD as well as non-VFD options with R134 as a gas and excellent power consumption figures. Centrifugals again we have from almost 200 tons to 3,000 tons. Up to 1,500 tons we are manufacturing in India itself. So you get the chillers from India itself. We also offer the magnetic bearing centrifugal chillers, which is a new technology, which is an oil-free centrifugal technology. We do have that chillers with us, up to 1,500 tons, and up to 1,000 tons we are manufacturing in India itself. Air-cooled chillers, we started manufacturing air-cooled in India itself, up to 500 tons. Now we are able to do it in India itself. Earlier these machines we were getting it from Italy, but now we have got the design transfer and we are doing it in India with excellent power consumption figures. And for your smaller requirements, we also have the modular scroll chillers. So like VRV, this also comes in modular, and if you have a typically a smaller establishment where you want to use a chill water system, you can do this system also. The same system with the heating option, so you can also get in hot water from the same system. These are the small modular chillers with the water cooled options. So if you want to have an energy efficient smaller system, these are the solutions which we have. Some of the references what we have, you can see most of the metro, new parliament building, that entire central vista, we have done many projects there. And of course the Statue of Unity, that is one of the most important projects. Thank you very much. Thank you for that. Next is diamond false ceilings. They have come all the way from Delhi, and they were brought to here by our Delhi team. Thank you for that, sir, Mukesh Sharma ji and your team. Thank you. Good afternoon, team CPWD. Thank you very much for giving us an opportunity to interact with you. I am Sunil Yadav, and I have my team also here, Shivapati and our channel partner APM, Mr. Amitav Goel. So, Diamond Ceiling is a group of 100 CR company. We are the manufacturer of false ceiling products. So here we have
mineral fiber ceiling tile, GRG false ceiling tile, metal ceiling, and GI grid suspension system. GRG false ceiling tile is a part of CPWD DSR. It was incorporated in 2016 in new technologies under item number 26.26. And along with the DSR, it's a part of SSR also, because in the MES is using SSR item as CPWD is using DSR. So actually basic manufacturing process of GRG false ceiling tile is product is gypsum plaster with glass fiber reinforcement. So आप जब हमारे स्टॉल में विजिट करेंगे तो then you will come to know that कि what is the product. This is a manufacturing process, like how we are manufacturing GRG false ceiling tile. We are using gypsum along with the glass fiber reinforcement, and what are the ratio of the gypsum and the plaster and the water. So we have several quality checkpoints, like 6 up to the what is the consistent strength, what is the consistent weight, finishing and everything. Along with the GRG ceiling tiles, we are the manufacturer of metal false ceiling tiles also. Like आपके projects के अंदर metal false ceiling tile भी use होता है. So हमारे पास high quality metal false ceiling tiles है. Along with the ceiling tiles, we are the manufacturer of grid suspension system also. Like जहाँ पे आपकी tile है, grid भी हमारा ही use होना चाहिए. और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे लैब से सर्टिफाइड है कि जो भी आपको एनआरसी चाहिए, कोई लाइट रिफ्लेक्टेंस है, आरएच वैल्यू है, तो सारे के सारे हमारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं. ये हमारे सर अप्रूवल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स है. सीपीडब्ल्यूडी के अंदर हमारा सीपीडब्ल्यूडी लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़ रीजन, मुंबई, जयपुर, देहरादून, जम्मू, सीपीडब्ल्यूडी मुंबई, नागपुर, ये सभी चीफ ऑफिस से हमारे अप्रूव्ड है. अलॉन्ग विद द एमईएस कमांड्स ऑल्सो, लाइक ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउदर्न वेस्टर्न कमांड. This is the list of the projects where GRG false ceiling tiles has been used in the mass base hospitals, Gandhinagar ESIC hospital and AIMS. इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में IIT, IIMs, ट्रिपल IITs, इनमें सभी में हमारा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है. These are the performance reports कि हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं. ये these are the application photos of wall paneling as well as on the ceiling. ठीक है, ये सब सर्टिफिकेशंस हैं हमारे. एनआरसी वैल्यू, दीज आर द पैटर्न्स ऑफ जीआरजी फॉल सीलिंग टाइल्स. हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं. ये अकोस्टिक सीलिंग टाइल्स along with the sleek grids, plain 24 mm grid, 15 mm grid. ये इंस्टॉलेशन बैक करना है. इंस्टॉलेशन प्रोसेस सर अर्लियर बटरफ्लाई सिस्टम यूज़ होता था, आज की डेट में थ्रेडेड रोड यूज़ होता है. सो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है. ये इंस्टॉल्ड फोटोज़ हैं कुछ शोरूम्स के. दीज आर द पार्टनर्स जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSUs. थैंक यू. Next is Kohler India. Thank you, Sunil ji from Diamond Fall Ceilings. Kohler India. And from Kohler, please. अच्छा वो लेट आने वाला है. Mandya Tubes, if you are ready, you can start with this one. Ramesh Munuz from Mandya Tubes.
Till PPTs get set, let's have one song. I will appreciate all of you join this song. आप पीछे सुन रहे हैं? हेलो या ये बहुत अच्छा एक सॉन्ग है, इंस्पायरिंग. आवाज आ रहा है? कैन यू मेक लिटिल लाउड प्लीज? लिटिल लाउड. फुल है यहाँ. आप समझ गए होंगे ये कौन सा सॉन्ग है. पीछे एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं. ये कदम किसी मुकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं. Sir, bottom line of sharing this song is, till we live on this planet, lifelong learning should be the nature and the attitude of every human being, every person. That's the reason I shared this song. So, I am Ramesh Munoj from Mandev Tube, sirs. We are manufacturer of copper pipes for air conditioning, particularly for the VRF air conditioning and medical gas pipelines. We have got a USP product over the other plain and copper tube manufacturers. Sir, मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा CPWD टीम एंड कृष्णा जी. थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर प्रेजेंटेशन. सर, आप गर्मियों में क्या एसी का फेलियर अफोर्ड कर सकते हैं? एनीवन एंड एवरीबॉडी, गर्मियों की सीजन में आप एसी का फेलियर अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं. तो इसका 100% सॉल्यूशन मांडेव ट्यूब्स में है, क्योंकि मांडेव ट्यूब्स की कॉपर पाइप्स में डिफरेंट यूनिक यूएसपी है विच सेव 3 joints out of every 4 brazing joints. I would like to share demo later in my presentation. Come on, next slide. So we are 57-year-old company and we have got a head office in Mumbai and the factory is at Umargaon, Gujarat. We have got 2 units where we are producing copper pipes, and our last year production was 2400 metric tons. So per month we have produced 200 metric tons pipe, out of which 150 tons is for the VRF air conditioning grade and non-VRF air conditioning grade, and the 50 tons are for the medical gas pipelines. Next slide. So these are the key unique features one copper pipe should have. We have got around 100 manufacturers of copper pipes in the country, but there are hardly few manufacturers, those who are able to complete the challenges of the industry. So our copper pipes are ROHS compliance. Ultra clean is the very crucial feature of the copper pipe, where it should be 0.38 milligram per meter square, the residue level should be, and we have achieved that. And the second key feature is the piping should be perfect sizing for the OD and the wall thickness ID with the close tolerance acceptable for the industries. These pipe need to be 100% 360-degree concentric wall thickness. And our feature is one and expanded copper pipe. Next slide, please. So this is the unique feature of our copper pipe. It has got a brazing ring inside, so you need not have to have a hold of brazing rod. To join 2 pipes, plain pipes for the VRF air conditioning or for the medical gas pipelines, you have to use socket to join 2 pipes.
You will not be able to see this from here, but what the basic funda is to join two pipes, you are using socket, so two bracing you require. Whereas Mandev has got a USP product with one end expanded, so you need not have this coupling socket, just one joint. So here you eliminate one joint out of every two joint. Second is, these pipes are bendable, half-hard, which is prescribed in the major OEM like Daikin in their installation guide, as well as various government tenders. They are mentioning pipe need to be half-hard. So what is the benefit of half-hard? Currently, most of the conventional practices, people are using elbow to join two pipes. Elbow to join two pipes. So there are two bracing here gets involved. So on this elbow, there are two bracing people do as on the product side. Whereas Mandev claims that the bending can be done on the project side. People can visit our stall. We have got a live demo of the bending where you skip two bracing joint out of every two bracing joints. So what we claim is, this is the key USP of our product, that out of every four joints, two of the elbow and one of the coupling, where our pipes are one and expanded. So out of every four joint, you are eliminating three joints. The key feature now we have added, this is again a design registered product, that is a pre-inserted bracing ring inside the tube. So when you do bracing, current practice is, in one hand, person hold a bracing rod, and the other hand he is having a torch. Where need a skilled and certified brazier you require to do this conventional bracing. Whereas we have put inside the exact quantity as for the double surface area of bracing required. So 360-degree and longitudinally double surface. So this whole bracing ring is quantity wise as per the different diameters, different size of bracing rings, and the material is put. So it will be always the correct volume for bracing the entire double surface longitudinally as well as 360-degree. In the current practice, the brazier will need, suppose he needs to put a 5 gram of bracing material, but sometime he may put 7 gram, sometime he may put 3 gram. So that will be always an uneven bracing with the lump also creation. Next slide, please. So the feedback advantages, we have launched this product for last 1 year, and these are the key benefits. People have already got the benefit. Instead of occupying two hands while doing bracing, we could get only one hand with the skillfully and with better workmanship. Skill level required is very nominal for this kind of bracing, because he just has to move the torch, and the torch movement should not be like car wiper. It should be like when you make a groom in the room, like one direction you have to make your flame go and your bracing material will be visible. And on the open end you can see the entire ring. Like a bangle you can see, where you can verify that your brazier has done correct bracing with 360-degree and with longitudinally on the double surface. Next slide. Next slide. We make a soft pipe as well as straight one and expanded with the bracing ring. Next. So fittings also need to be of the same grade, same thickness as per the CPWD gauge. CPWD has got a heavier thickness of copper piping, that is 18 gauge and 16 gauge, so which need to be mentioned on the tenders, because here the sizes, if the diameter is mentioned and thickness is not mentioned, then there are various sizes of thickness available, A, B and C kind of wall thickness, where on the name of value engineering, one should not use C or B grade of copper piping for CPWD. They are to be very much 16 gauge and 18 gauge pipes. Next slide. So we are the first out of 100 manufacturers, say we have got the BIS certification. Recently got it for 10773. IS 10773 is for the air conditioning piping. Next slide. So these are the various CPWD projects we have done in last 15 years. Vayu Sena Bhavan, Thal Sena Bhavan. Recently we have done a Central Vista also with the Daikin machines, and KG Mark and the Africa Avenue. And in Mumbai also we have done an International Institute of Population Studies for the Daikin machine 650 HP. Next slide. So these are the various OEMs approval we have since last 15 years. We have got the approval from them. Next slide. And the various building projects we have done the proper piping for their VRF air conditioning for last 15 years. Next slide.
And these are the various metros pan India. Currently we are doing for the Daikin for 23 station for metro line 7 and 8. We have done for the Chennai metro, we have done for the Pune metro. So all these metros, they prefer to use Mande make pipes over all other makes. And in the Daikin also installation guide, they prefer the Mande as number 1 make out of all the 10 approved makes. Next slide. And the various medical sector also, we have catered piping through their installation partners for their various hospitals pan India. And in the COVID time, earlier we used to do the 5 to 10% of volume for the medical. Now we have achieved that 20%. Next slide. Thank you for my presentation, listening me. And if you have any question, we can take later on in the question answer session. And we believe in life is for one generation, good name is forever, and the faith is in the name like Ram, Mahavir, and Chhatrapati Shivaji and Rana Pratap. Thank you. Jai Hind. Ramesh Munot from Mandi. Thank you, Ramesh ji. So, we will be immediately serving the lunch. As it's already mentioned, considering the timing also, it will be a working lunch. The lunch will be served in your seats. So, please bear with us and enjoy that working lunch while having the lunch, because we all engineers are habituated with the working lunch. So please, we will continue the program. Next is caller. Yeah, please, all of you stay in your seats. Lunch will come here. We'll now continue with caller. Yeah. Hello. Good afternoon, everyone. मेरा नाम मंदार मस्कर है. I am from Kolar, India. And thank you so much for this opportunity, especially to Fani Bhushan Singh sir and every dignitary or delegate who is present from CPWD. Mehta tube is here. Mehta tubes. Mehta tubes. Yeah. Please. Those who want to take a health break, means it is available in the main building, ground floor. Please utilize the facility in the Kendriya Southern building, ground floor, please. Good afternoon, everybody. I believe, I understand
you are now hungry. I am between you and the lunch. My only request is, I will not take much time. I request is, please switch off your mobile or keep. I have a mobile. Don't think of mobiles. I believe something I will tell you may be useful for you. I am from Mehta Tube Limited. We are one of the largest manufacturers of Southeast Asia for copper and copper alloy products. I have been meeting CPWD officers since years, from Nirmal Bhavan to Chennai, Bangalore, Lucknow, Calcutta, and up to Guwahati. And I'm amazed, really, I'm so happy. I've seen such a billion pool of manpower in CPWD. So many IITians, so many from NITs, but still humble, no show, so simple and highly knowledgeable. Actually, frankly speaking, over the years I have become fan of CPWD organization. I have never seen such a huge manpower billion in any other organization, not particularly any private companies. There are no less knowledge, more show off, but CPWD officers. Here also so many IITians, simple, no tie, no jackets, no high value clothes, no high costly mobile, but knowledgeable. So that they create they have produced a lot of services in India, right from AIMS to IITs, New Parliament House, Central Vista, where every year my attachment is there. Take any IIMs, we are there. Any IIM, any AIMS in India, we are there. I believe there are 23 AIMs we have constructed so far. Every year my pipe has been used. New Parliament House, we have used copper tube for plumbing. Great. Because we have been using low-cost material for drinking water, hot or cold, in building services, and that is really killing us. We are promoting cancer basically. But you have used in Parliament copper, simply copper, that is supplied from us. Our factory has been selected for that. Apart from these, there are vice in the house, VIP enclaves, and many other buildings. You have gone for copper. So that is the reason I am fond of CPWD. Now, we, being a manufacturer of copper pipe, our factories in Gujarat as well as in Daman, we have 5 plants, new generation plants, fully automated or semi-automated. Many testing facilities are online. No manpower is required. Like eddy current, no human touch. It is part of production. Production finishes, identifies, precision, eddy current, all online. If anything system fails, production stops. So my product comes with 0 leakages every time. Now, my products are air conditioning pipes, medical pipes, plumbing tubes, engineering tubes that may not be required for you. We also manufacture tube for shipbuilding, railway engines, oil and gas, heat exchangers. That may not be your subject, but we do it. We also manufacture copper steel for electrical earthing and cable terminals, electrical application again. So all are certified, all are with international certification, quality control plan, everything followed, all as per the specification. Now my air conditioning, I like to add, air conditioning, main problem in the air conditioning is leakages. Every installation, there are leakages. The reason is, we neglect fittings. All leakages come from the fittings. Leakages are always from the fittings. I met Chief Engineer Guwahati. He said, Mr. Vishwas, it is not only in air conditioning. It is in plumbing, it is in firefighting, it is in medical, it is in all piping work. Fittings are neglected because these are not building items behind the wall. So we don't care for behind the wall. What is in front of the wall, we take care. Behind the wall, you don't take care. Plus, these are not building items. So people neglect the fittings and leakages come from the lab. So I request CPWD
officers that please take care of fitting application. If fittings are bad, any amount of good quality pipe will be failed because leakages from there only. Now we have got a system introduced in India a couple of years back where no brazing is required. You don't need to braze because problem comes from the brazing. Brazing creates oxidation. That oxide goes to the compressor, chokes the expansion valve, and system fails. To avoid this, we have flame-free joints, cold joints. We can show you in a catalog in our stall. The world has gone from hot joints to cold joints. So it is right time to us to shift from braze joints to cold joints because these not only leakages, it is problem created for the environment also. We talk about zero carbon, carbon-free. So this is not will be created unless until there is no leakages. Now our next product is medical gas pipelines, copper pipes. We are the first company to produce this about 29 years back in India. Before that, India used to import tubes. Now any hospitals, anywhere you go, the only Maxflow pipe, including all CPWD projects. We also launching copper pipe for plumbing application. Now please note that plumbing we are taking not very seriously. Or any building areas, architects are important, structural engineers are important, plumbing contractors are important, but not the plumbing. All building failure comes from the leakages. Every building you go, there are leakages for water. It is not only costly affairs, it damages the environment, reconstruction, it creates a lot of pollution, a lot of expenses. So this time has come from shifting your raw material from polymer to copper. We have enough created the cancer. Using polymer in piping and drinking water, we are only promoting cancers. If you agree with not, please tell me, everyone should agree. We are discarding plastic bottles for drinking water, but our pipe water line comes from the plastic bottle only. And plastic molecules are one of the reasons for the cancers. Now please help the society, help the new generation, use copper like world does. Every Western countries, USA, America, Canada, Australia, they use only copper for plumbing application. So time has come, you gradually change like Parliament you have done, like Central Ministry you have done, like many hospitals you have done. So gradually change the plumbing application from polymer to copper. And tell me, we are promoting cancers, how many cancer hospitals you will build? Every here and there, a lot of new projects are coming for cancer. How you get the doctors? You said we are constructing medical colleges. Where are the faculties? Faculties are not available. So please stop promoting cancers, promote health, use copper like Western world does. My next product is copper tubing for copper strips for electric earthing. We also have cable terminals for electrical applications. And our brand name is Hex and manufactured as per the specifications. Use only electrolytic grade copper. And this is all about our products. And our products are all certified, BIS approved. We have approval from British Standard Institutions. We have certification all over the globe. And we also have a certificate from BSI Kite Mark for plumbing application and medical application. That's all for our product. We have our product displays here. We have our factory video for a couple of minutes. Have a look. It's a new plant, latest generation plants, fully automated.
This plant is in Umargaon, south of Gujarat, a new generation plant, integrated facility. We have all entire facility in-house, right from melting, casting, making billets, then hot extrusion, and further cold drawing, and automated, including testing facilities. No human touch is required. Next to this factory shop, we have installed another factory next to this building, but that video is still not ready. So in short, promote copper for plumbing, promote flame-free joints for air conditioning, because it creates problem for the compressors, because the oxide goes to the compressor. Avoid that. It is available in India now. Plumbing also you can use flame-free joints, no oxidation. And wherever you use fittings, please specify, bring into the billing item, as everybody will go for cheaper quality of fittings, and all leakages come from that only. And this is the opinion from the CPWD engineers, one of the engineers in India. We have got recently expert award last week only. We are one of the renowned exporter from India for copper products. And we export all over the globe. That is recognition by the Government of India, Western region. Thank you. Thank you, Mehtaji. It's a wonderful product, and we should, being civil engineers, as he has mentioned, considering the health point of view also, it is high time that we should encourage the copper pipes in our buildings as much as possible. Yeah, now next is caller. Hello everyone, there was a technical glitch earlier, so I am back. My name is Mandar, I am from Kolar. Next please. So Kolar as a brand is present for 150 years. We are one of the oldest brand in this country, and the most important parameter is that we are making in India, we are designing in India, and we are also exporting out of India because of the world-class facility that we have in Jagadia and Bharuch. Kolar as a brand is known, the pillars of strength is innovation, is wellness and design and sustainability. So as
we are moving towards, the future, we also appreciate what CPWD is doing towards the development with respect to sustainability, and we are there to support with respect to sustainable products. Next, please. So as I mentioned that we are made in India and our plant is there in Jagadia. It is one of the most technological advanced plant that we have across any other competition. So as I mentioned that we are made in India and we also supply to European countries, Gulf countries as well. So we are also a part of multiple government projects, not only in Bombay, not only in the west of India, but also across India. Kolar is a part of one of the most prestigious project, which is the Central Vista Parliament House, the new Parliament House that is getting developed, MP flats, majority or almost every AIMS project, IIM project or double IT projects, Kolar is a part of the make list and also is supplying in full force. So Kolar as a brand, we are not only into sanitary ware or metal fittings, we are also into wellness. We are also into shower enclosures or glass partitions. Next, please. Has anybody ever imagined that a WC, एक WC 3.6 liters में full flush कर सकता है? So yes, Kolar is the brand, the #1 brand across the globe with the most innovative product, full flush at 3.6 liters and half flush at 2 liters. So every year there is so we have committed to the environment, to the nature, that by 2035 we would be net zero company, not only in India but across the globe. So, next. So this technology that we have, germ shield और safe shield, ये हमने कोविड के बाद में नहीं लेकर आया है. कोविड के पहले से ही ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थे, जिसके वजह से जो भी germs या बैक्टीरिया वायरस is present on the seat or on the WC, that gets vanished or gets killed. So we have that technology on our seat covers and some high-end products जिसमें पूरे WC के अंदर भी है. हम लोग infuse करते silver nanoparticles, because of which it gets charged, and after getting charged it kills all the bacteria and viruses. Next slide. So Kolar believes a lot in women health and hygiene. So with respect to that, rear wash and front wash, we have some amazing products for women health and hygiene. So yes, Kolar as a brand, we have multiple technologies. So starting with one, in the metal fittings, that is the faucet, we have a technology by the name of Click 50. So in Click 50, you just need to raise the faucet by 50% and you would have the enough amount of water that is required. If you lift it by more 50%, you have the full amount of water that is required. So it is actually leading to 50% of water saving. We also have safe seal technology. So every faucet that we use needs to have this particular technology, because जब भी आप देखो आप पानी जो आ रहा है उसके अंदर lead और nickel का mixing अगर होगा तो it is harmful for the body. So there needs to be a food grade technology coating inside the faucet. So we have that in our products. With respect to Kolar products, so as and when you are developing new projects, तो commercial projects में sensor based technology के लिए आजकल बहुत ज़्यादा demand आ चुका है. So उस related उस मतलब product को cater करने के लिए, उस particular area को cater करने के लिए Kolar के पास में products है जो sensor based है for hand wash, even for WC for flushing purposes as well. Even for shower areas we have digital products. So Kolar is the first brand to bring in colored finishes. So since every project of CPWD is unique, you need new products, you need new technology as well. So Kolar as a brand respects that. And we respect by getting in new technology or new product. So we are the only brand to introduce, or we are the #1 brand to introduce new colors in the market. So PVD is the process that we use. So chrome mein there are 3 layers. In PVD there are 4 layers. PVD is physical vapor deposition. Next. Our products are also chemical resistant and one of the best sanitary wares as well. Glazing का thickness, what we do is 0.7 to 1 mm. Competition does between 0.25 to 0.5. इसलिए जो yellowing होता है competition में, वो हमारे में नहीं होता.
With respect to quality standards, we follow ASME standards as well. Next. And Kohler as a brand, we also have products which are compatible to or I mean, it follows or complies to IGBC leads rating as well. Next. So जैसे मैंने thickness के बारे में बताया था, there are 4 layers of coating. जो faucet का जो heart रहता है, which heart is the cartridge. अगर cartridge खराब हो गया, then it makes no sense. So similarly, the market requirement or the industry requirement is for 2,50,000 cycles. We tested for 10 lakh cycles. For faucets, it is 5 lakh cycles. We tested for 10 lakh cycles, which is almost double. Next. So with respect to the scrub cycle, we do 2,500 times scrubbing, and still the product would not be affected. Next. With respect to water immersion, we test कि salt acidic spray को अगर हम लोग उन्हें Kohler product को submerged condition में रखा, so for almost 48 hours there would be no effect on the product. Next. So as I mentioned, we do 2x with respect to the industry standards. Next. So these are the multiple testing that we do over our products. So when it comes to Kohler requirement, if there is any need with respect to any technical assistance, we have the Kohler customer care center, which answers the phone in 10 seconds maximum. So all our products have been tested at IAM, PMO as well. So as I had mentioned, we are the only product to have like 3.6 liters of water in full flush. So we want that this to be a better planet because we are focusing more towards sustainability. And with dignitaries like you, it would be great for us to be a part of, majority of their projects. Thank you so much. It's okay. Thank you. Next is MSD Controls. They are representing Ovo Betterment. And then Jain food is being prepared. Give us another 10-15 minutes to be ready for the Jain foods we have ordered them. For people from South and East, this being Mumbai, Jain food is something which is mandated in every event of ours. Getting ready. Now MSD Controls. They are representing Ovo Betterment. Thank you. Hello everyone. I hope I am audible. Okay, so my name is Ajay Puranik and I am representing OBO Betterment here today. And मैं presentation शुरू करने से पहले सबसे पहले DK कृष्ण कुमार सर और बाबू सर का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रेंज रिप्रेजेंट करने के लिए. So OBO Betterment is it's a German-based company. We were founded in 1911 by Mr. Franz Betterman in Menden. In 1998, OBO first launched its product, that is SPDs, Surge Protection Devices, and after that in 2008, we incorporated in India. From 2014, we have our own factory in Chennai, Oragadam, and most of our cable management system products are being manufactured there only. From 2017, we have a 100% subsidiary where we have been supplying almost 80% of OBO Betterment product range in India. And we have completed over 15 years in India. So we have been established in on 26 July 2008. And in 2014, we inaugurated our Chennai factory. So we have approximately 40 territory locations across India, and we have 5 regional offices, that is in Chennai, Bangalore, Kolkata, Mumbai and Delhi. And
We have two warehouses across India. One is in Chennai and one is in Bhiwandi. So this is a basic representation of our production capacity in India right now. That is a per annum production capacity. So एक साल में हम लोग approximately 2,000 kilometers of perforated cable tray, 2,200 kilometers of ladder cable tray, 450 kilometers of wire mesh cable tray, 1,500 units of junction boxes, and 120 kilometers of underfloor raceways हमारा production capacity है per year का. So here is a small video of overall OBO product catalog. One of our major product range is lightning protection system, and we provide structural and external lightning protection system both. So this is a representation of how a structural lightning protection system works and how it is laid. So anything and everything that is required in lightning protection system, right from your air terminal to the earth grid, every product and every accessory we have. We also have beam clamps and beam supports. We have cable glands. These are all retrofit accessories. These are our new cable trays, which is called as walkable cable trays. These are aluminium columns. These are on two height ranges. We also have a PVC trunking system. This is for a wall trunking system, we also say. These are underfloor solution, raceways and floor boxes.
one of the USP of our wall trunking system is these are halogen-free trunkings. These are IP-rated floor boxes. We are also present in passive fire protection system. So this is an entire overview of our product range, right from cable management solutions, so be it cables anywhere, underfloor cables हो, perimeter cables हो, आपका over the ceiling cables हो, कहीं भी आपको cables अगर है और उसको manage करना है तो we have a perfect solution for you. And other than that, हमारे पास lightning protection system है, we have passive fire protection system, and we have cable trays which are also fire rated cable trays. So this is an overview of passive fire protection system. So this is the entire range of passive fire protection system. And we are very aggressively promoting this passive fire protection because बहुत सारी जगह passive fire protection को ज़्यादा importance नहीं दी जाती है. ये हमारा recently launched एक product है which is called as quick wire system. So these are the product which basically we can replace with threaded rods. जहाँ पे भी हमें cable trays लगा रहे हैं, अगर हम cable trays को या किसी भी चीज़ को हम support के लिए अगर we are using quick wire, so आपका basically आप threaded rod भी उसमें से आपके BOQ में से हम उसको threaded rod और आपका जो भी support system है उसकी जगह एक सिंपल प्रोडक्ट हमें जो सप्लाई कर सके, दैट इज क्विक वायर. तो वी आर इन स्टॉल नंबर 11. यहाँ से लेफ्ट में जो फर्स्ट काउंटर है दैट इज ओबियो बेटरमेंट काउंटर. सो आप प्लीज़ एक बार विजिट करें बिकॉज हम काफ़ी सारा फिजिकल आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. That was quite technical topic. Next is Resicon, Mumbai Chemicals. Resicon, Mumbai Chemicals, represents Mr. Pankaj Pokarna. Welcome, sir. And then we have arranged YouTube live streaming is going on. So for all people who are here, especially from outstation, who are representatives here, I request you to share the YouTube link to your groups in your place
so more people can see and at least feel the Tech Talks 2024. Thank you. I'm Mr. Pankaj Pokarna from Resicon, Anuvi Chemicals. Good afternoon. Hope everybody is okay, not getting bored. And myself, Pankaj Pokarna from Resicon Construction Chemicals. Technical talks तो हम करेंगे ही. थोड़ा सा आपको मनोरंजन के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ. So that we start with something new, not like a regular thing. We are here for discussing the technical talks. That means we are going to share something with each other. यानी ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है. तो यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी, स्टेज पर खड़ा हुआ आदमी टीचर नहीं है और आप स्टूडेंट नहीं है. तो हम जो कुछ सीखे हैं इसी के ऊपर थोड़ा सा शेर से शुरू करूँगा कि न कुछ हम हंसकर सीखे हैं, न कुछ हम हंसकर सीखे हैं और न कुछ हम रोकर सीखे हैं, और जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं सभी के होकर सीखे हैं. सो इन दिस लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग रोज नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं, एंड वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, we learn from our present, and we want to improve for our future. This is what is the theory on which we work. Basically, I am Pankaj Pokarna, civil engineer, but into construction chemical for last 32 years. And I am the business head of Anuvi Chemicals Limited. Our brand is Resicon Construction Chemicals. Company is 35 years old company. And हमारे को तो यहाँ पे CPWD में ये कहने के लिए फक्र है, फिर एक शेर के साथ, कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो. Since 1998 we are associated with CPWD, and CPWD people are using our product. They are happy with our quality, so we are more happy for that. So मैं अपना presentation चालू करूँगा. Mostly we are into construction chemicals, repairs and waterproofing. तो जनरली हमारा वाटरप्रूफिंग में या कंस्ट्रक्शन केमिकल में हम लोग बात करते हैं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो मेरा सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज है रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस. हाउ डू वी रिड्यूस डिफेक्ट्स? एनी कंस्ट्रक्शन कैन नेवर बी डिफेक्ट फ्री. देयर हैज टू बी सम डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन. सो वी कैन नॉट एलिमिनेट द डिफेक्ट, बट वी कैन मिनिमाइज द डिफेक्ट. एंड इसलिए हम लोग उस सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज किए हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस. एंड कैलकुलेशन केम, इफ वी आर एबल टू रिड्यूस 10% ऑल्सो डिफेक्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, वी आर एबल टू सेव अराउंड 80 to 90% कॉस्ट ऑन रिवर्किंग. दिस इज व्हाट इज द क्लियर मैथमेटिक्स. नाउ आई विल गो विद माई प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट. So Anuvi Chemicals Limited, Resicon brand has 6 brands in it. We are manufacturing chemicals in India. We are supplying in India as well as we are supplying to other countries in the world. So around 10 countries we are supplying in the world. India also we are supplying to most of the paint manufacturing companies and chemical manufacturing companies as basic manufacturers. We are a technical driven company. We have our own R&D, we have our own plant, and we have our own formulations. We do not work on cut, copy, paste formulations. So Resicon is a division of Anuvi Chemicals Limited. So we have strong R&D, we have products for building infrastructure right from foundation till top. We have presence across India and abroad, and internationally we are present. So what is Resicon? So in Resicon, generally when you see so many people will come, they will market their product, they will sell their product, and their duty they find it is completed over there. At Resicon we say, if a client is approving us and taking our product, our duty starts from there. So when we talk about Resicon, there are 3 special words which we want to put as our integrity. That Resicon means we are reliable, because we are in this industry for last long time, and we have regular customers for last couple of years who are buying every time. That means our quality is accepted by them, and so we are reliable. Second is our cost as a reasonable. We provide products at a reasonable cost, and that is why we are well accepted into the market. And third most important thing which people want to run away, we want to take it, and that is responsibility. We say we are responsible for our products, our quality, our technology, whatever is used by our client. And we will stand with our client, and we will not run away from the responsibilities. Next. Next.
So we are already approved, like in CPWD, we are in BARC, NHI, all good organizations, they are using our product since last 20, 25 years on regular basis, which shows our credibility into the market. In private segment also, we are approved with so many builders and institutions like Loza, like Nerolac Paints, like Berger Paints, Kanakia. So many big organizations are getting products from us. So when we talk about building construction, I will also always talk that how we can do a good quality construction right from foundation till top. So when we are talking in the foundation, when we start, so we start with like shuttering. So we have a product which is used for shuttering oil. Then when we are casting the concrete, we have admixture for concrete. And when we are doing curing, so we have curing compound for the curing of the column, beams and all this area where water is scarcity. So we have a range of say steel and beams coating, we have curing compounds, we have bonding agents, we have waterproofing coatings for tanks, terraces, external walls and all sunken areas, swimming pools. We have modified mortars for repairs, polymers for repairing the mortars also. We have admixtures for concrete, we have protection for plinth so that rising dampness doesn't occur. We have also basement waterproofing systems and corrosion resistant coatings. This is a complete range which we are having in our kitty. So, like one product is Resicon Coastal, which is rust preventer. So in your all old structures where there is already rust come, you can remove the rust and do the rust prevention treatment on it, and which is known as Resicon Coastal, and it will not allow the rust to reoccur on the old structure or steel structure which are already existing. So the rust prevention treatment is, it prevents rust from all type of metals, can be easily applied by brush. It is economical, it protects the reinforcement in the underwater where the corrosion can happen due to the salty water, and it is cementitious base, so it has better bonding with the concrete on the reinforcement. Generally this type of coatings are based of epoxy, which are so smooth that they don't act as a bonding coat but debonding coat with the concrete. So we have a corrosion chemical protection product which is cementitious polymer based. Next. So it is like anti-rust coating for the reinforcement. Next. Very easy to apply by brush on the reinforced area. Next. We have also admixture for concrete, and there are a lot of advantages which you know more. So we have admixtures like plasticizers and super plasticizers of each grade. That is, we have ligno base, we have SNF base, and we have polycarboxylate ether PCE base. So admixtures, they reduce the water cement ratio, reduce porosity and shrinkage cracks, improve the workability and strength, provide watertight concrete, minimizes honeycombing in congested reinforcement area, and makes the concrete free flowable, even pumpable. So next. So like admixture also, most of the time people are selling, but which type of admixture should be used? We are not still taught properly. So there are three types of admixture which can be classified for different type of grade of concrete. So if your concrete is say M15 to M20, by that you can use ligno based products. If the concrete grade is going M20 to M30, then you should use SNF type of products. And if the concrete is of higher strength, like M40, M50, M60, then there you require admixture like PCE. This classification is normally not told into the market, and only admixtures are walls with very simple process to use. Self-priming, dilution with 1:1. First you have to prepare the cracks, fill the cracks, apply the first coat of primer like the person is applying over here. After drying of primer 2 to 4 hours, you have to apply undiluted coat of Resicot, first coat, and after the application of first coat, you have to apply second coat. With this video presentation over, I will be thankful to you for giving me time.
Thank you, sir. आप देंगे कौन देंगे? उसको बुलाएंगे क्या? उनको बोलना है ऐसे उनको बुक कर देते हैं ना उसको बुलाएंगे वो पूछ रहा हूँ ठीक है नो इशू बेस्ट विल टेक इट for those who are requested for Jain lunch, it is available right now near the stage. Can you please come here? We'll be able to help you out. Sir Rai Chaudhary, sir, could you please come on for a few minutes, sir? Just a minute. आदि भाई हाँ, he'll come and meet you. Pankaj Bokarna, sir. Our chiefs would like to meet you. Just have 1-to-1 with him. Rai Chaudhary, chief engineers. Like we said, Jain lunch available near the stage. Those who request for please come here. I think Ramesh Munot specifically asked for the lunch. Monday tubes. And for some people who have yet to get their lunch, just 10 more, bear with for 10 more minutes. The lunch is coming on the way. And for those who have finished their lunch and are not at the stalls, please come and join us in the audience. We are having this presentation by Snowstorm Cement. Saurashtra Cement. You ready, sir? Fine. Take it. उसके बाद तो पूछेंगे हाँ वेरी गुड तो उसका Is Schneider ready with the presentation? We can just come up, please. Thank you. Schneider represented by Jyoti Switchgears. Schneider India, represented by Jyoti Switchgears Private Limited. Once again, request for those who have had their lunch and are not at the stalls, please come and join the auditorium, sit in the auditorium here. The next session is by Jyoti Switchgears Limited, Schneider Electric. So, at least the electrical wing can please come into the stalls, come into the stage. Please come. Good afternoon. Good afternoon. Am I audible? Last talk, can somebody confirm? At the back side? आवाज आ रहा है? Okay, good. So I see many of the engineers over here because most of the people are sitting at the back bench side. So typical engineers. And I can understand many of the engineers are outside as usual, right? So good, thank you so much. Let me tell you, this session, what we are going to have is for the specific set of people. Okay? The people who are going to use the electricity in their day in, day out life. So how many people are using electricity?
Electricity, how many people are using? Everybody is using? क्या बात कर रहे हो? सरप्राइजिंग है। तो आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि बहुत बार जब फायर के इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, तो फायर के इंसिडेंट्स में ये नहीं बोला जाता, न्यूज में हम लोग क्या सुनते हैं, ये सुनते हैं क्या कि किसी ने बीड़ी जला के फेंक दिया करके आग लग गया, ऐसा रहता है रीजन? क्या रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फायर का रीजन क्या रहता है? कैन समबडी टेल मी? ओके, everybody is physically and mentally here over here. Okay, so since we all know कि यहाँ पे जो हम लोग डे इन डे आउट जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील कर रहे हैं, इट इज अ गुड सर्वेंट फॉर अ गुड मास्टर, बट इट कैन क्रिएट अ डिजास्टर इफ इट इज हैंडल कैजुअली, करेक्ट? सो अभी हम लोग जो अगले 10-15 मिनट जो है हम लोग इसी ऊपर फोकस करेंगे कि हाउ वी कैन मेक our installation safe and sustainable and power available. Okay, next slide please. Okay, so from the electricity perspective we have the entire solution right from your generation. Just go to the next. Yeah, so immediately after the generation, your transformer, UPS, MV panel, LV panel, and right up to the level of final distribution, MCDB, switches, sockets, and your surge protection device. So entire gamut of the basket is available from Schneider Electric side to make your system safe and reliable. Okay, go to the next. So most of the components in the electrical distribution belongs to the low voltage, so that is the reason we are going to discuss primarily on the low voltage product side over here. Go to the next slide. Now when you are going to invest your money into the switchgear, please understand we are investing only 2 rupees out of 100 rupees project cost into this switchgear. And ये 2 रुपए का जो investment है in your entire 100 rupees of the project investment, it has got a major role to play, is that it has to first protect the remaining 98% of the project cost. Right? It has another responsibility. What is next? Next. To ensure the people's safety. तो आपके लोगों की सेफ्टी जो है, ये जो मैं प्रोडक्ट बात करने वाला हूं उसके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, एंड मोर देन दैट वन थिंग विच इज जनरली मिस्ड इज द प्रोडक्टिविटी. ओके, अगर आपके यहाँ पे पावर सप्लाई फेल हो गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से रुक जाएगी एंड इट विल क्रिएट अ डिजास्टर फ्रॉम द एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? आपको जो प्लांट रनिंग जो है वो आपका अफेक्ट करेगा, एंड हेंस इन्वेस्टिंग इनटू द राइट स्विचगियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, while we are discussing on the investing on the right switchgear, there are plenty of the product we have already seen. There are multiple times we can continue talking on that. But because of the time limitation, we have selected one product which is we have displayed at the outside also. So that product is actually complying to the latest standard which has been changed. Go to the next slide, please. So पहले जो standard था 60439, if you are familiar with the electrical panels point of view, so that is been obsolete now, and now there is a new standard called as a 61439. For the electrical panel, there is only new standard which is a 61439, which is into the picture. And जो national building code है, go to the next. And जो national building code है, उसमें भी ये clearly लिखा गया है कि now we have to follow this standard only, 61439 for the electrical panels. Okay. So if you want more information about it, please reach to us so that we can help you with the detailed information on this particular solution. For immediate purpose, just go. We have our Prisma panel. It is a very beautiful panel. It is displayed outside. You can go through it. You can see it personally. Okay. So this Prisma set panel is a solution which is available up to 4000 ampere rating. Go to the next. With IP54 protection and 65 kiloampere breaking capacity. So entire range is available with Prisma set panels. Now, what we have done further, so innovation is the heart of your electrical system today. So what we have done to make this panel safe, okay, go to the next. We have identified, because the component inside it, you must be familiar with the ACB, MCCB, MCBs जो घर पे लगते हैं, right, protection के लिए, वो तो आपके communication capable है ही. We have made this panel also communication capable. ओके, सो वी हैव मेड इट इन सच अ वे कि जो फायर, अभी आज के दिन में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग रिएक्टिव बेसिस पे काम करते हैं. कुछ गड़बड़ हो गया, फायर हो गई, उसके बाद में हम लोग उसको बुझाने के लिए जा रहे हैं. सो वी हैव इन्वेंटेड अ प्रोडक्ट, इनोवेटेड अ प्रोडक्ट विच विल हेल्प यू टू प्रेडिक्ट द फायर.
Okay, so fire को avoid करने के लिए you can predict this fire, you can predict the abnormalities in the panel with the help of thermal sensors which are wireless in nature. We have this heat tag, which is a product which can predict the fire inside the your panel, and it will help you to avoid the fire kind of incidences. Okay, so this is very safe and important from the panel perspective. Go to the next. This entire solution, right from your breaker, switchgear, panel, component, what we have seen now, are communication capable. So that आज के दिन में जो हम लोग reactive basis पे काम कर रहे हैं, your solution can give you the predictive alarms. Okay, so you don't need to be worried कि मेरा यहाँ पे जो facility है, वहाँ पे आग लग सकता है क्या, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या, unplanned downtime हो सकता है क्या, ये पूरा information जो है, वो आपका जो system है, connected products, ये पूरा आपको softwares के ऊपर information दे सकता है, and that software can give you the message on your mobile also. So your facility can be managed from your fingertips, that is from your mobile. Okay, next. This is the best part from the Schneider Electric side. The products, whatever we are into, are all green premium products. Okay, because we believe that अगर मैं कोई product बेच रहा हूँ, after 30 years, 40 years, 50 years जब उसका end of life होगा, it should not act as a garbage in an environment. Right? The products what Schneider is manufacturing are recyclable, sustainable for the planet. So we are serving not only the customer, but we are serving to the planet as well. Okay? So this is one thing we should emphasize going forward, to whatever product we are buying should be environmental friendly, so that we have a limited earth, we have only one earth. So uske sustainability point of view, we have to think from this perspective also. Okay? So that's it from my side. I have one request to all of you, that we have our partner JSPL who has invested into this particular event, and they have brought a panel, a big size panel, just to showcase it to you, so that you can have the glimpse of whatever we have seen. You can practically experience it on the stall number 29. So I urge you to be there, just visit our stall. Thank you so much. Thank you so much. Next is Saurashtra Cements. Those who are standing outside, please sit so that to be encouraged by your presence. Saurashtra Cements. Once again requested to all our dear friends, those who are standing outside and roaming here and there, of course after their lunch, please come inside. When we started, it was full, and I know people are here only. So please, let the volunteers are requested, please call them inside, please. Okay. So good afternoon, all of you. My name is Amit Molik. I am the Regional Sales Manager of Saurashtra Cement Limited Paint Division, which is Snowsem Paints. So first of all, it gives me great pleasure to have the opportunity over here of presenting our products before you in front of all the delegates and my fellow vendors. So basically, first of all, I would like to thank the PWD for giving us the opportunity. And definitely it will be a great pleasure for me to present before you our range of products. So basically we are from Saurashtra Cement Paint Division, which is Snowsem Paints. So as we all know, a paint plays a very important role in all our lives. Paint, whether it is exterior paints or whether it is interior paints, it has a very pivotal role, because when we talk about exterior paints, it is more about protective coatings, wherein it protects us from harmful weather conditions, harsh weather conditions, rainfall and leakage conditions. When we talk about interior paints, it is basically about having the nature of the human being. Whether we see a very good color paint, a very calm and cool color paint, we feel very good. But when we see a very dark color paint, a very gaudy color paint, we feel very angry and our mood changes. So paint has a very important role. And in my presentation, I will show to you before what products we have and what kind of services we offer.
So first of all, I'd like to request all of you to have the attention towards the screen where I'll play a small AV which will bring towards you the real importance of paint and how paint plays an important role in our life. Pramod, if you are finding any difficulty in playing the video, I can start with the presentation. Screen. It has to come on the screen first. Okay. Maybe you are finding some technical issue with the volume, so we can just have a look at the AV. So as we can see, we are operating since 1959, one of the oldest paint company in India. Our range has exterior emulsions, interior paints, cement paints, primers. Waterproofing products. Our esteemed client list. So we were the first to launch cement paint in the industry to decorate exteriors. Sandex Matte was the first exterior-based emulsion paint. This is our founder, Mr. N.K. Mehta. Our chairman, Sri Mahendra Bhai Mehta. And vice chairman, Mr. Jai Mehta. So this is basically about Mehta Group. Mehta Group is a very big business conglomerate having operations across the globe. In India, we have cement operations in Gujarat, where we have cement by the name of Hathi Cement and Siddhi Cement. Gujarat Siddhi Cement Limited is one of the companies of Mehta Group.
So Pramod, can we move to the presentation? Fine. Okay. So Snowsem Paints is a very familiar name to this industry. It is not a new brand, it is not a new company. It is a brand which is existing since the last more than 60 years, since the late 1950s. And this is basically our history. So basically in the year 2021, that is recently 3 years back, Snowsem Paints was acquired by the Mehta Group, which is Saurashtra Cement Limited. So now it is Saurashtra Cement Limited Paint Division, which is Snowsem Paints. So I'll just give a brief background about the company, about our founders and about our esteemed top management. So basically the group was founded by the late Sri N.K. Mehta, and he was the one who founded the group, and we have business operations across Asia and Africa, and wherein we have a wide range of businesses ranging from sugar, packaging, horticulture, agriculture. We have presence in Uganda, Africa, America, across all the continents. And basically in the Indian region, we have basically Saurashtra Cement Limited, wherein they have cement in the two brands, which is Hathi Cement and Siddhi Cement, which is operated most out of Gujarat. So as I said earlier, we have a wide business interest in across all the sectors. We are present in sugar, we are present in horticulture, agrochemicals, electric chemicals, international trade, sports and entertainment. Where all of you must be aware of the IPL team, which is Kolkata Knight Riders. That is also basically belonging to the Mehta Group only, Saurashtra Cement Limited, and food service products. So new addition to the Mehta Group, as we all see, Mehta Group is a very old business conglomerate. So Snowsem Paints, as I said earlier, was acquired in the year 2021, which is 4 years back. So it is a new addition to the Saurashtra Group family. So about us. So basically, Snowsem is known for remarkable range of products, from interior to exterior waterproofing products. We have special choice for builders, architects, engineers, contractors, and our consumers. It's a trusted brand since last 6 decades. We are present in the industry since last 60 years. And in these 60 years, we have done more remarkable and landmark projects. We are associated with most of the government sites, be it CIDCO, be it MHADA. We have also done sites with CPWD. And Snowsem has been consistently delivering all the products and services with the promise of better quality and better service. So this is about basically our infrastructure. So basically we have 3 plants all across India. We have 1 plant in Nasik in Maharashtra. We have other plant in Gumdipundi in Chennai, Tamil Nadu. And we have the 3rd plant in Godon, Rajasthan. And we have depots all across India, right from north to south, to west to east. We have more than 28 depots all across India, 28 warehouses. And we have basically more than a network of 2,000 dealers. So as I said, we have 3 factories. One is in Sinnar, Nasik, operating for the west region. Other is in GPD, which is Gumdipundi in Tamil Nadu for the south region. And the 3rd one in Godon, Rajasthan for the north region. Eco-friendly products. I can very proudly say that all our products are completely free from harmful chemicals like lead, mercury, chromium, cadmium. It's a completely green product, completely a very eco-friendly company, eco-friendly products. And the VOC level, as per the industry standards, we are the lowest in the industry with less than 5% VOC level across all our products. This is basically the certification from IGBC. We are certified by IGBC for our product range. Certification from various bodies, ISO 9001, 14001. Certification of various products from NTH, which is National Test House, which is a very important parameter. So I'll just take you to the product range, what kind of product range we have in Snowsem. Exterior power paints. Snowsem has been known in the industry since the last 6 decades for exterior paints. There are many buildings, many government buildings, many private buildings which have been painted with Snowsem paints over the last many decades. So I'll just take you through which products we have in the exterior paint category. Unigloss. So Unigloss exterior paint is a very unique paint. It is a multi-surface paint which can be used for all the 4 surfaces, which is interior, exterior, wood and metal. It is elastomeric paint with high sheen and high gloss, and it has a warranty of 11 years. Then comes Pentasia. Pentasia again is a very silicon-based paint. It has water repellent properties, dust repair properties, and it has a warranty of 9 years. Then we come to Snowcrill. Snowcrill again is a 100% acrylic emulsion with silicon base.
It has antifungal, anti-algal properties. It has superior color retention. It has strong UV resistance, and it carries a warranty of 6 years. Next is Santex Matte. Santex Matte is a very premium exterior paint, one of the very oldest range in our paint portfolio. Basically, it has a warranty of 9 years. It is a textured finish paint, which is the first in the industry. And since now also no other paint company has this product, it is a beautiful textured finish paint, which all of you can try definitely. Then comes Trump. Trump is basically a high opacity paint. It is a matte finish product. It has a high coverage, and it also has anti-algal and antifungal properties. It carries a warranty of 4 years. Then Snowsem Plus. Snowsem Plus again is the economy range of product with a 3-year warranty. It has all the antifungal, anti-algal properties, and it has a very good opacity, and it has good hiding. In our economy range, sub-economy range, we have Outweather. Outweather again is a very economy product, suitable value for money product. It has basically a good value for money in terms of it has good coverage, it has good film integrity, it has antifungal property, anti-algal property, and it is a good value for money. Then damp proof. Damp proof we have basically for both the surfaces, vertical and horizontal. For vertical it can be used for exterior walls, and horizontal it can be used for terrace waterproofing. So basically it has scratch bridging ability up to 2 mm. It has antifungal properties. It has a very excellent mechanical compressive strength. It has a strong addition to the masonry surface, and it provides waterproofing properties, and we have warranty of 8 years for our damp-proof product. So in waterproofing, basically we have 2 products. First is a damp-proof product, which can be used for both vertical and horizontal. Damp-proof carries a 8 years warranty, and we have a Slow Care Protect base coat, which is a waterproofing base coat, which is basically emulsion based, and it has an elastomeric property up to 200% allocation, and crack bridging of 3 mm. So this carries a warranty of 10 years. So as I just said, basically these 2 products are very good products for exterior surfaces, because nowadays in basically regions like coastal regions in Mumbai and other Kolhapur and Goa and all, wherein there is a lot of harsh weather conditions. So these products offer great actually value for money also, and also it offers great protection from waterproofing problems. So Slow Care Protect and Damp Proof, both the products. Now we come to our interior range of products. So in interior we have Zenita, we have Celeste, we have Centino. Zenita is again anti-graffiti paint with good finish. Celeste again is the interior paint with good finish, non-yellowing properties. Centino has a good washability, antifungal properties. Next. Primers we have professional primer, economy primer. Cement paint is a very well-known product of Snowsem paint, still now used. We have putty, acrylic putty. We have waterproofing range, BioWash, Hardcrete, Semprover, Impermo, which is a good offering. These are the various features. These are a list of clients. We have prestigious clients who are working with LIC, Indian Oil, ONGC, NTPC, MHADA, Kalpataru, LIC, our list of prestigious clients. This is the list of projects we have done, Birla Mandir and other basically prestigious projects all across India. Okay. Thank you so much. So we have our stall right at the entrance. I urge you basically to have you can come and visit the stall, and we have entire range of product of display over there. Thank you so much. Thank you, sir. The next presenter is Trimble Solutions. So these are basically the 3D BIM based solution. So again, I urge all of you to come into the auditorium. This is something on BIM building information modeling on the structural level. So this is something which CPWD is now embracing very hard, embracing the technology. These are both civil and electrical. Trimble is basically onto the civil portion of it, and quite a few of our engineers already used it. So all those who have finished visiting the stalls, please come into the auditorium.
लाइव चल रहा है ना, लाइव तो चल रहा है ना. One request is there, those who are sitting far behind, please come forward. Please don't leave those vacant seats. Please come forward. It's a humble request. Please. And for those who have not seen the complete stall layout, there is a selfie booth there. So we urge all of you to have a snap there and put in the group. So serve the remainder of time you spent here with us. So that we can visit selfie stall in the break just before the minister comes. Yeah. Next presentation is window text. Next. It will transfer there. USB is there. So very good afternoon to all of you, and thanks for every member of CPWD Association for giving us a chance to present and before this particular audience. And I am Kishla Kumar, and I am working as a technical manager with Trimble Tekla, India. Just a brief about our company, Trimble. Trimble is a US-based MNC company. We have a revenue of approximately 3.7 billion. And we have approximately 11,000 plus employees, and our products are being used in more than 150 countries. So we are a global company, and we have the products which are being utilized on global projects. We work primarily in various sectors. To be specific, we are into geospatial, transportation, agriculture, as well as construction. So we'll be talking more about our construction division here. And in the construction divisions, we also have hardwares like total station scanners, GNS, GPS, etc. Today we'll be talking more about the BIM aspect of a project. So when we talk about BIM, what we talk, we only think about, okay, BIM is a 3D model, right? But when we talk about BIM, we should definitely think about whether it is constructible or not. Whether the 3D model I'm getting, can I use it for construction or not? So whenever you're talking about BIM, definitely think about constructibility. With constructibility comes a constructible process. So let's have a quick look what that constructible process actually means. I have a short video which will summarize what it means. There's a digital transformation underway, and a new way to work is leading it. It's called the constructible process, and it's optimizing the entire design, build, and operate lifecycle. Here's how. Trimble's constructible process focuses on 3 key areas. All phases and trades are connected. Models and workflows are content enabled and
constructible models drives smarter workflows. The first C, connected, is collaboration at its core. It allows information to flow back and forth freely for successful, on-time project completion. Cutting-edge technology enables connectivity across all project phases, platforms, and devices, allowing users to view, share, and access information from anywhere in real time. Picture this. Structural steel member sizes might need to change during the design or pre-construction process. As a result, many quantities, drawings, or CNC files would be affected. With connected workflows, changes happen automatically, so you can update material orders and keep building for on-time delivery. The constructible process goes beyond BIM by building with constructible data. This data can be used for everything from layout with robotic total stations to holographic information in a mixed reality hard hat. What you see is what you build. No more misinterpretation. Whether it's the delivery of material to a job or the number of crew on site, field and office productivity are taken to the next level. Truly connected teams have the freedom to choose whichever platforms they prefer to get the job done, and it all comes together seamlessly. Whatever you can imagine, you can build. Trimble. So that was a short video showing what we mean when we say constructibility. And constructibility is basically not, it's a process wherein various disciplines are involved, and you should have a model that can actually be used for construction at site. Now let's see by some examples. So can anybody say that can we construct using this particular models? So I have a basic model of wall. If I have to construct a wall at site, can I construct using the first one? I guess the answer is no, because we see that there are still various information missing. Now the second image which you see is that we have added some reinforcement into it. But again, can we construct using this as well? Really not, right? Because we also need formwork and various other details. In the third model or the third snap, you'll see that we have various elements like formwork, reinforcement, concrete geometry, and everything that you need for construction. Every kind of detail that you need for construction. So that is what we mean when we say a constructible model. So the answer is yes, you can construct with Trimble Tekla's 3D models. And here are a few examples of constructible 3D models and what does they look like. Here is an example of a steel structure having all the connections detailed out. This is another example. Further, we can see these are some examples from the reinforcement side. You can see all the chair bars and everything are right in place so that you don't miss any information, and all the information is there which can help you to construct. This is for a bridge, for a tank. So practically, Trimble can do both steel and concrete, and these are some of the proofs of those. This is a real-life example of what constructible model actually looks like in Tekla. And if you start to implement it on a project, this is how it looks. So basically, you are creating a model beforehand and actually using it for construction. The benefits are you can utilize it for class check and detect any issues, any number of RFIs which are usually encountered, they are definitely reduced, and you get a project which is smooth and efficient. Now these all buildings on the screen which you can see, these are all, like say, trademark buildings. You might have heard about them, or some of you might have seen them as well. The one thing common in all of these buildings is that they all have utilized Tekla structures for creating 3D models and then executing BIM, implementing BIM and executing the project. So these are some big projects which you can see, and Tekla makes it easy to implement BIM. Again, are you able to utilize the 3D model which you currently have to its full potential? Okay, so you might have been using 3D models for various purposes, but are you able to utilize it to the full? There are many aspects in which we can utilize a 3D model. So you have to think again. So this is one example how 3D models can be used at site. As you can see, we have a 3D model with all the dimensions, everything superimposed so that nobody has to open a drawing at site. You can simply go outside, and the good thing is that these models which you see, they can be opened on your mobile, they can be opened on your tablets, iPads, anything. So you can just go with your mobile or tab on the site and go and construct with these. You don't have to deal with drawings anymore. This is another example of a complex 3D plated structure.
wherein you can see all these dimensions, all these annotations are added in a 3D model to help the foremen at the site to understand, okay, how exactly the structure is going to come alive. Further, these are some examples of the outputs which Tekla gives you. If you want a 2D output still, we can give you bar bending schedule, we can give you in various formats, we can give you quantities in various formats, further drawings. This is another example of how we can use Tekla models. So you can see this is a particular site where we have cranes and everything. So you can play this video, please. So as you can see, we can use Tekla models for constructability review. So how can we place the cranes at the site? Based on the We can move it and then we can place the cranes and see everything is dynamically how the calculated elements will be when I lifted, move, for and we example, can the plan crane all these various location. things And beforehand. when I select the certain So 3D then again, there can be various examples. Further, we can also utilize these models to transfer the data from model to field, making it easier to actually execute at field. So you can take the coordinates from 3D model and put it to the field directly. So this is an example of how people do it. With the total station, people use Tekla structures models and transfer the coordinate to total station, and in turn they forward. And in turn, you can see these total stations are capable of throwing lasers at the site so that they are guided with the respective points. So it is very, very useful in terms of actually implementing at site. So that's what Tekla model helps you to do. Further, you can use the model for monitoring the progress in 3D. So here is an example of that. This is a Tekla 3D model. As you can see, we can open it on tablets even. And then you can do various things here. You can, so somebody at site can click on the elements and they can change the status so that the status of the model is updated real time. And once these status are updated, anybody in the world, or any, let's say the project manager wants to see the status in 3D, he can specifically go open Trimble Connect and he can view the same status in his laptop or in his mobile without actually going to the field. So it's basically monitoring the status of the site sitting at your office. Further, we also have advanced technologies like Trimble Connect AR. Back. Yeah. So we also have Trimble Connect AR technology with which you can actually take the model to the field. Like say you can visualize how the constructed project would look like once it is constructed. So here is an example how it can be done. So you can load the model, so you can see these workers are using the tablet and they are projecting the model onto the field. So these reinforcements are just the model, and then they will work onto this and then they will fit the reinforcement at the site using this kind of technology. So you can actually visualize beforehand the construction is done. This is another example where you can see nothing is there at the site yet, but you can superimpose a real scale model onto the site to visualize, okay, how does the building actually would look like. So these are few examples of how we are capable of using these kind of 3D models at site with the Trimble Connect AR technology, Trimble Connect HoloLens, and it becomes easy to visualize, recheck and validate the construction which has happened at site as well. Further, all I want to say is that when you are implementing BIM, you need to think in what way I should implement BIM that it really makes sense. So you can have a 3D model, but you will never use it, right? But it is good to have a 3D model which you can actually use. So implement BIM in a way where it actually makes sense. Secondly, implement BIM in a way that will actually help you in construction. So if you have implemented BIM, but that is not much helping you in construction, think again and start implementing BIM the different way. And all these things can be done using Tekla 3D models. And just for an introduction about various products which we have in Tekla product portfolio.
So we have various products, as you can see, Tekla Structures, Tekla Structural Designer. So we have a combination of both the products. Products which can help you implement BIM on the project, as well as products which can be used for analysis and design. Something similar to ETABS and STAD. So these are the products on the left hand side, which you can see these come under the 3D constructible modeling and fabrication. And on the right hand side, we have products which can be used for analysis and design of buildings. So basically to apply loads, to check whether the buildings are passing and failing. So all those things can be also done. So that's it from my side, and I think you like the presentation, and our booth is situated just right. If you just exit from the hall, straight ahead. So if you have any questions and you need any kind of assistance in adopting 3D BIM using Tekla, definitely visit us in our booth. We'll be happy to help you. Thank you. Thank you, Kishle Kumar ji. Next is Window Tech. Window Tech. There is one announcement. The Chief Guest, Honorable Minister, will be arriving little earlier than expected. That is around 4 o'clock. So I request all of our dear friends to see that our all delegates, those who are in the stalls and all will be ready before that time. And our the main sponsor, that is a platinum sponsor of Homans Limited, they will also have their presentation just before the minister's arrival. And after this, there will be a short health break and visit to stalls. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today, and a special thank you to Krishna sir and the entire team for this opportunity. My name is Salil Vadhavan, and I'm honored to serve as the business head for the Western region at WindowTex. At WindowTex, we take pride in being pioneers in manufacturing the curtains alongside dealing in a range of essential products like these separators, lifting stations, insulated glass blinds, and other hospital-related items. In line with the NBC code, fire curtains have become indispensable for compartmentation of buildings, ensuring a safe and secure environment for all occupants. Our journey began in 1993 under the visionary leadership of Mr. Vishal Khandelwal, our esteemed Managing Director. WindowTex has had the privilege to contribute to several prestigious projects including Yashobhumi, Hyderabad Airport, Walmart, ITPO Pragati Maidan, Microsoft, KPMG, and Google, among many others. Today I'm excited to showcase 3 videos that will not only highlight our company's capabilities, but also provide insight into the functionality of our flagship product, the fire curtains. Thank you. Can we please start? WindowTex is India's premier manufacturer of smoke and fire curtains. While many remain unfamiliar with these life-saving solutions, chances are you've walked under one countless times. These innovative products are installed seamlessly in your ceiling. In the event of a fire alarm, they descend to safeguard not just structures, but precious lives within. These smoke and fire curtains create a space between the fire and allow one to get to safety by creating an area between the fire curtain and the actual fire. WindowTex is the most innovative company in its category, and we are the pioneers in the fire curtain industry. We have started our journey 20 years back, and then we came into the plumbing and hospital products, and slowly we came into some other related products also. We manufacture the entire part of supply chain ourselves. Every step is meticulously controlled, from fabric and metal work to intricate electronics.
Our skilled team in the factory brings these elements together, ensuring they adhere to the standards set by our engineering experts. Certified by renowned international laboratory, Effectis Turkey, meeting the EN 1634 Part 1 and EN 12101 Part 1 standard. This involves rigorous testing of the fire and smoke curtain, often against the very products we aim to replace, such as fire doors. Nestled in the heart of Faridabad, our state-of-the-art factory stands as a testament to precision and innovation. We take immense pride in holding a green building certificate equipped with cutting-edge sheet metal machinery. We are the forefront of technology. As a pioneering achievement, we also house the world's longest stitching machine, a symbol of our dedication to pushing boundaries. As we deal in life safety products, we have to get it right every single time. And we understand that there is no margin for errors. Our focus extends beyond mere sales. It's about ensuring that the products we offer perform flawlessly, safeguarding lives and properties. Our fire curtains can be installed in godowns, office floors, lift lobbies, internal staircases, basements, open kitchens, convention center, auditorium, exhibition halls, basement car parking, airport terminals, railway and metro station, cinema halls, IT buildings. We are proud of the fact that Windotex is the first Indian manufacturer. Mr. Vishal Khandelwal, our managing director, is building a team of like-minded individuals. Individuals brimming with experience, enthusiasm, that is, making a positive impact through our work. At Windotex, our values center around our valued customer. Windotex has had the honor of serving prestigious clients, including L&T, Shapurji Palanji, Microsoft, Google, ITPO Pragati Maidan. Their trust in us speaks volumes about the reliability and quality we offer. When fire occur in buildings like shopping centers, offices, hotels and educational institutions, the top priority is ensuring people's safety. Among various considerations, it is essential to prevent the spread of fire and smoke throughout the entire building as much as possible. This is achieved through compartmentalization, creating individual smoke and fire zones to protect adjacent areas and establish safe escape routes for rescue. To achieve this, it is crucial to create smoke barriers by sealing existing openings. Windotex fixed smoke curtains represent the simplest type of smoke barriers. They can be installed in various widths and are even suitable for partitioning continuous pipes and conduits. Windotex automatic smoke curtains offer the added advantage of rolling up and concealing within architectural spaces, deploying only in response to a fire alarm. In this context, it is important to address lateral leakage, and guide tracks are available for this purpose. Windotex folded and gathered fire protection curtains are adaptable solutions for sealing spaces with right angles. These flexible systems can be installed along an area entire perimeter or terminate when they meet a wall, eliminating the need for additional structural support in corners. Windotex fire protection curtains for openings and ceilings serve the dual purpose of preventing fire and smoke from spreading to the other floors while maintaining the benefits of atrium design and maximizing natural sunlight. For oversized openings, a two-part version is available. Textile smoke closures are engineered to prevent the dissemination of dangerous gases. They must meet considerably higher standards for pressure and leakage compared to smoke curtains or other sealing closures. The combination of perimeter edge sealing and specialized fabrics enables protection against both fire and smoke simultaneously.
Thank you. We're at stall number 30. We urge everyone to come there for any further questions. Thank you so much. Windotex is India's premier. Thank you. So this Windowtech fire curtain product is something which I think CPW should go ahead. It is already specified in the National Building Code 2016, and it is something which we need to achieve. So this is to take care in the right design part of it, not as an afterthought. It should be a design part of it. That's something which I think both the electrical, the civil, the artist should come together and create it. Thank you. So the health break starts now, and it will be for another 20 minutes. 25 minutes. 3:45 all are supposed to be here, and we will start the last presentation of the tech session. That is by the Horman, and all are requested to have a round in all the 30 stall sponsors and encourage them. Let us have some more knowledge also. And as DK has already mentioned, there is a selfie point when you are going out at the left side of, after 3 stalls, left side there is a selfie point. You may have a beautiful picture of yours there at the selfie point. That will be a memorable event in your life. And please come at 3:45 exactly. And those who will be coming late, they will be missing the front rows, because being this is a long auditorium, even though we have arranged the plasma TV and all at the back side, it is better to occupy the frontal rows, except the sofas which are being provided to the chief guests. Like when the minister comes, along with him also some VIPs will be there. So it will be only the central leaders and the minister and the guest of honor, MLA and chief engineers will be permitted to sit on that, and the rest may please occupy the frontal rows and come and occupy your chairs by 3:40. Thank you. Is there anyone, those who have not taken the lunch amongst the volunteers, those who are working hard? Please complete your lunch, those who have not taken it. सर आप लोग को मिल गया लंच? बाबू सर बाबू सर थोड़ा डीके सर को बुलाओ थोड़ा सा गाएंगे वो गेंद
जाने का था, 2-3 फाकड़ों का था, आपका जाके ले क्या कुछ कम पड़ेगा तो बाद में लेके आगे खा लिया ना भाई एक ही बार में 900 रुपये दीजिए आप भाई। हाँ इसी थाली भर दिया भाई। हाँ जीरा सोडा पी के आएगा कि मैं इतना ज़्यादा हाँ बिरयानी का गैस होने लगा भाई। चाहे तो बिरयानी में जीरा सोडा पी लेता सब लगेगा उधर भी करना पड़े इसलिए इधर करना। मतलब तुम खाना खाने में आ गए और डब्बा यहाँ आ गया। सब्जी नहीं कटा आज इतनी हेलो एक ही प्लेट ले ले हाथ से। इसका कनेक्शन चले ना चले बड़ा ना ठीक है मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना है मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाओ मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना एक राह रुक गई तो और जुड़ गई मैं तो साथ साथ राह मुड़ गई हवा के पैरों पर मेरा आशियाँ
बस चलते जाना। दिल में हाथ थाम के इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर, चलो। अच्छा, ओके ओके एक मिनट। आपको जैन का खाना आया, खाया नहीं? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू रुत जवान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
सबको क्या क्या गुनाह हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूल का दिल भी कुछ बदगुमाने हैं। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरे, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम थैंक यू थैंक यू। कौन सा लेंगे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन सा लेंगे बताओ? ये ऐसे
इधर से पीछे से या पीछे से सर सर थोड़ा लेफ्ट साइड इधर आ जाओ सर इधर आ जाओ Very good.
and the door, all is the same similar fire rating. It's include maybe glass. If you want to use the glass, glass is also 2 hour fire rated. Hardware, if you are using the panic bar, lever handle, all that hardware also is the 2 hour fire rated. Objective of the fire door. What is the objective? Why we are using the fire door? That is only, the main objective is stop the spread of the fire and smoke. That is the objective of the door. As per IS 3614, there is the 3 types of doors. Actually, it's a 2 type of fire door. It's insulated and uninsulated. But last year, 2023, there is an amendment that called is one door inserted, that is insulated door. So now is the 3 type of door. One is insulated, fully insulated fire door, partial insulated fire door, and uninsulated fire door. Fully insulated fire door means 120 minutes integrity and 120 minutes insulation. You can assume that how is the door. 120 minutes fire rating and 120 minutes for the insulation. So, and partial insulated door, that is 120 minutes fire rating and 30 minutes insulation. And uninsulated fire door is only for integrity. It's 120 minutes for integrity. Because a fully fire rated door is not, as per NBC, only requirement is a 30 minutes insulation. So no use in, as per NBC, no use of the fully insulated fire door. So we just clarify how is the partial insulated fire door and what is the uninsulated fire door. When temperature is the fire exposed side, it's maybe 700, 800, but in the first 30 minutes, temperature is not beyond that 140 degree plus ambient temperature. For first 30 minutes, that is the partial insulated fire door. And uninsulated fire door, temperature may be, what about in the fire exposed side? That is same is unexposed side also. Where the use of this fire door? As per NBC, there is 3 types of application of the fire door. One is the staircase, another is the electrical room, service rooms, all the services area. Third one is the shaft doors for unegress door. Staircase. And one more thing is the important, that is all fire door, as per 3614, all fire doors should have smoke shield. Maybe smoke shield, that is the group type or surface type. But that is all fire doors should have a smoke shield. This is the mandatory item. Construction of the shutter, there is the 2 type of doors, we say that. One is insulated and uninsulated. For uninsulated door, we can use honeycomb kraft paper. That is, there is no meaning of the radiation, so we can use honeycomb kraft paper. For insulated door, partial insulated door, we use mineral wool and any proprietary item. If any manufacturer can use that. And the puff of the infill of the puff of any fire door is not allowed in the as per IS 3614. Someone said that no puff we can use puff in infill material. No, as per IS 3614, you cannot use the puff as a infill material of the door. But puff you can use as a fire rated puff. There is a 2 types of puff. One is fire rated and another unfire rated door. Unfire rated puff. Fire rated puff you can use as a grouting of the frame, but not for the shutter. Lures, earlier lures is not allowed in the fire door, as per new IS 3614, you can use the lures also in the fire rated doors, but lures should be 0.135 square meter, not more than 300 by 400 mm. And that lure should have a same fire rating, and that is certified also. That lure should be certified also for use of the fire doors. Vision paint. For fire door, any type of fire door, fully insulated, partial insulated, any type of fire door,
as per IS 3614, there is no use, you cannot use laminated glass, interlayered glass, or any type of double layer glass. You can use only monolithic glass, and size is also prescribed 0.06 square meter for the insulated door and 0.12 square meter for the uninsulated door. Means size is 200 by 300 for the insulated door and 0.12 square meter for the uninsulated door. In case of client wants the higher vision panel, so he can use 15% of the total glass area he can increase, but on the uninsulated door only, not on the insulated door. This is as per the IS 3614. There is another two type of doors, that is latch door and unlatched door. I think 90% persons is not aware about that. What is the latch door, what is the unlatched door? Latch door means any staircase door or any panic bar door or latch door, that is latch door and tested in the latch condition. You can use latch door and a latch test certificate for the latch door, that is the only latch condition. If you are using the latch, you tested the door with latch condition, but you want to use the pull handle and deadlock, that you cannot use that. If you want to use that, you need to again test with the unlatched condition, door tested in the unlatched condition. That is the important point. You at a site, any site, you require the insulated latch door also, unlatched door also. But any supplier, we give the latch door, we accept for the unlatched door also. That is the wrong practice. Door tested, last line, that is door tested in a latch condition cannot be replaced with the unlatched door in actual site condition. Need separate testing for the both latch and unlatched condition. Next. This is the latch and unlatched condition. We just shown the photographs. Just you can imagine what is the latch door, what is the unlatched door. Next. Another important point, where you use two door closure on an exit door, it's required use the door coordinator also. Without door coordinator, you cannot use two door closure on the double door. This is the beauty of this IS 3614. This code is cover all the hardware, frame, shutter, everything. Earlier code is only tell about the frame and shutter, not about the hardware. This code, the amended code, is telling all the hardware, how you use this hardware, where can you use this hardware, and what type of hardware you can use, and what is the fire rating of the hardware. This hinge 100 by 75 by 3 and the D handle, like lever handle, D handle, which is made by SS304. There is no fire rating certificate is required. Otherwise, all the fire door hardware, it's a required minimum fire door rating. It's the same rating of the door, it's required the fire rating hardware also. All the fire doors should have safe closing with the door closure, except the non-egress door. Use of electrified hardware can use as long as the fail-safe mode. You can use all the electrified hardware on the fire door, but it should have a fail-safe mode. Any double door, it's a 450 mm in width, it's required the panic bar. Sometimes we are not using the panic bar, only one shutter we are using the panic bar, but as per the IS code, it's minimum, if a double door is 1500 or 1800 width, so both shutters is required panic bar, not a single shutter. Smoke seal, as I told, smoke seal is mandatory. All for eye viewer, any main entrance door, eye viewer, you can use 60 minutes fire rating. And all hardware should have a unique fire rating level.
And these hardware like tower bolt, slide arm, elbow, padlock, it's not used on the fire door. It's clearly said that all these hardware are you cannot use on the fire door. But many of the building you can see that all the door with the L drop. Next. Here another most important point in IS 3614, they put on the responsibility on the door manufacturer. Earlier, no responsibility of the door manufacturer. You can make any door and supply on the door on site and go off. But here is the responsibility of the door manufacturer. As per IS 3614, he ascertained all the hardware as per the fire rating of the door. It's a similar fire rating of the door. And after the completing of the door, of the site, he gives the one letter, compliance letter to the client. All the doors as per the certified, as per the certificate. This is the certificate. This is the size of the door, and this is the quantity, and this is the invoice number, and give the letter to the client. All the fire door which is made by GI or SS, in case of steel, it's both have a own property, so both type of door need separate testing. If you have a test report in a GI galvanized steel fire door, if you want the SS, that certificate cannot use as a stainless steel door. And maximum size of the door is prescribed is the 7.2 square meter. Total maximum is the size is 7.2 square meter. Next. This is the testing clause. Earlier is no limit for the any. You can see the test report, 2005 test report, 2010 test report. Manufacturer had submit that site. But as per IS 3614, there is the validity for the test report. That is only 5 years. And this is also required if you change any modification in the door, any size in the door, any construction of the door, any profile in the door, you need to another test. Then you can supply the door. And change of the vision panel also. If you want to change the vision panel size, it's required another testing. Marking and labeling. Earlier, simple, anyone supply the door and go out. Now is the mandatory, all the fire doors should have a label. And that label is the metal label fixed on the frame shutter and showing the door manufacturer name, address, serial order number, what is the type of door, insulated, uninsulated. It's a classification, 60-minute fire rating, 120 minutes fire rating, or serial number and year of the manufacturer and certificate number. All is mentioned on the that plate. This is the important point. Another. We have a fire-rated rolling shutter also, where is the size is 7.2 square meter. Earlier I shown 7.2 is the maximum for the fire door. If area is the 7.2 square meter more than that, then you can use rolling shutter, fire-rated rolling shutter. We have a rolling shutter for 120 minutes and 240 minutes also. Next. We have another product, multi-purpose. You can use all the doors as any application. Next. We have a scientific door, clean room door for pharmaceutical, hospitals and everything. Another. We have a glazed fire door also. Swing door, sliding door, all is fire rated, 2 hours fire rated and certified. It's tested in latch and unlatch both conditions. It's not a single latch condition, this is tested in both latch and unlatch condition. Next. Next. This is the sliding door, fire rated. Another. We have all over India installation team. We have a complete assembly for installation and AMC for the doors and all the hardware, all the products. Next. Some of the products showcase where we use this. We can, you just draw the line, we can make the door as per your requirement, as per your
your requirement, your size, as per your drawing design. You just see that. We can play with the colors. Yeah. Go. These are the full height doors. Yes. These are the some projects we have done. Mumbai Airport. Yeah. Go. Any question on 3614? If you want any question on the 3614. No? Thanks. Minister is reaching within few minutes here, so all are requested to come inside and occupy the seat. Once again, please, last call. చూడండి పెడితే చూపెట్టు పబ్లిక్ రికార్డింగ్ చేస్తుంది చాలా
मैं चार्जिंग भी लेके जावाना और इंटरनेट चालूंदा जैक ఉందా जैक ड्राइव आडियो डायरेक्ट నడుస్తుందా బ్యాటరీ పవర్ బంద్ అయింది చాలు ఉంది చాలు సింబల్ చూపెడితే లేదు బ్యాటరీ ఇది చాలైందా అది వచ్చిండు అది వచ్చిండు Good afternoon, everybody. We are honored to welcome Sri Ramdas Ji Athawale, Union Minister for Social Awareness and Just Empowerment. Welcome, sir.
request Sri Athavale ji, Shishpal ji, Kamble ji, Charan Babu sir, Mukesh Sharma ji. Lighting of the lamp is going on. From the Athavale, please have your seat. Satish Kumar Agarwal sir. Agarwal sir, please come to the dais sir. Shri Agarwal sir is representing the office of CPWD. Shishpal sir. Mukesh Kumar Sharma. Charan Babu sir. Saranan sir. Saranan. Anu Kumar Chakrabarti sir from Calcutta. Bhaskar sir, Southern region sir. Susata Das sir. Sajwan ji from Chandigarh. Smashing Minaji and Suresh Srinugorla. बैठिए सर, सब बैठिए सर। नो जो साहब का कुर्सी है, चुप जा रहे हैं। उधर से कुर्सी बाजू में करो ना। बैठिए, ठीक है। एक आदमी इधर से फोटो लेंगे। ठीक है। Thank you all. I now request Sri Babu Ovi, our Secretary for the Western Region, to give his welcome speech. Our most respected and honorable Chief Guest, Minister Ramdas Ji Athavale has arrived. This is one of the greatest occasions in the lives of CPWD engineers. दलितों का शहंशाह, सभी लोग जरा खड़ा होकर के इनको स्वागत कर लीजिए। खाली हमारे देश का नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का पिछड़े हुए लोगों का शहंशाह जैसा उनको संरक्षण देने वाला जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये हमारे बीच में अभी आया, हम लोगों का ये सौभाग्य है। हम इनका इंतजार कर रहे थे। जैसा अविनाश कामले जी हमारा मित्र, आप लोग जानते हैं, उनका भी खास मित्र है, और उनका द्वारा जब मिनिस्टर को जब भी हम लोग अप्रोच किया है, बहुत ही जल्दी उनका जो है हमारा जो भी प्रयास के लिए मैटर से उठाया था वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके हिसाब से उनका आगे बढ़ाया। तो मेरा करते हुए यही है आज इनके सामने और इनको सबको स्वागत करने का है। रामदास अठावले जी आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र का नहीं, इंडिया का नहीं है, सारे देश में, मेरे ख्याल में सारे देश में घूमे। अभी रिसेंटली हमने देखा था दलाई लामा के साथ बैठे हुए थे, ऐसा जापान में भी गए थे, हर देश में घूम के आते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर में खास करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते और जितने भी जो दबा हुआ जो जनता है उनको उद्धारण करने के लिए शहंशाह जैसा वो काम कर रहा है। 25-35 साल पहले से मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, सेंट्रल में भी काफी बार मिनिस्टर, एमपी करके उन्होंने काम किया और इनका कोई पहचान देने का आप लोगों को किसी का वो जरूरत है ही नहीं है। वो सिद्धार्थ कॉलेज में से एमएलए मतलब लॉ पढ़ करके फिर ट्रेड यूनियन में आया, रिपब्लिकन पार्टी में डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो पढ़ाई, उनका जो है पॉलिसीज को, उनका तत्व को सब फॉलो करके जैसे एक ट्रू बुद्धिस्ट के हिसाब से उन्होंने देश भर कर घूम के जितने भी जहां भी कभी भी कोई पिछड़े हुआ लोगों के लिए अगर कोई तकलीफ होता है उनको उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे बढ़े। तभी तो नरेंद्र मोदी जी ने आज सोशल जस्टिस का, सामूहिक नीति के लिए उसको संभालने का मिनिस्टर पद देते हुए अभी हमारा भी ये जो इंजीनियर्स का खेत है सब CPWD में जो जूनियर इंजीनियर से निकल के छोटे लेवल से आया हुआ जूनियर इंजीनियर से ये इंजीनियर्स का वो आगे का पदोन्नति, ये स्केल, इस तरीके का काफी प्रॉब्लम। हम भी डिपार्टमेंट के अंदर 35-40 साल काम करने के बाद भी एक प्रमोशन के सिवा कुछ नहीं मिलता और स्केल भी नहीं मिलता, ऐसा काफी हमारा प्रॉब्लम है। मिनिस्टर साहब हमारे कुछ प्रॉब्लम को पहले सुना हुआ है, इन्होंने आगे भी वादा किया है हमारा इश्यूज को सॉल्व करेंगे बोल के। तो इनका सानिध्य में हम जब CPWD का ये जो प्रोग्राम करते हैं हमको बहुत खुशी है। आज इधर का एमएलए साहब में कैप्टन तमिल सेल्वम जी आने वाले थे, उनका तबीयत तमिलनाडु में कल जाके आया, उसका तबीयत बहुत खराब है बोल के उन्होंने बोला है अगर शायद टाइम मिलेगा तो आके जाऊंगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो साहब को CPWD का ये जितने भी 85% जो गेजेटेड इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करते हुए CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन का सभी मेंबर की तरफ से सर आपको इस मंच में स्वागत करते हैं सर। और साथ में आए हुए हमारा अविनाश मित्तल कामले जी, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और डिपार्टमेंट का वेस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करके फणिभूषण सिंह जी ने बोला है और उनको रिप्रेजेंट करके सतीश कुमार अग्रवाल जी भी इधर मौजूद है, CPWD डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करके आया। वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर CPWD के काफी इधर आज मौजूद है, इधर पसंद है। और दूसरा ऑल ओवर इंडिया से, दिल्ली से हमारा सेंट्रल का लीडर्स आया हुआ है, शिषपाल सिंह, मुकेश शर्मा जी, चरण बाबू जी और सारे, और चेन्नई से हमारे शरवणन जी आए हुए, उनके नेतृत्व में लीडर्स आए हुए, कलकत्ते से अनु कुमार चक्रवर्ती का लोग है, और वेस्टर्न रीजन का हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र स्टेट से हर ब्रांच यूनिट से हमारा सारे असिस्टेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हमारे जो मेंबर है वो सारे और रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स इधर प्रेजेंट है। सबको मैं CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन का द्वारा और सबको जो भी आज इधर सामने है वो सबको, और जो टेकटॉक्स में जो प्रेजेंट कर रहे हैं सारे कंपनियों को और उनका रिप्रेजेंटेटिव को सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और साहब को जाने का जल्दी 2-3 प्रोग्राम उसके बाद अटेंड करना है, इसलिए कम समय में आपको स्वागत, एक बार फिर से स्वागत करता हूं और साहब को बोलता हूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। So we will be honoring the chief guest Yatamle sir with a shawl and bouquet
the memento. एसोसिएशन की तरफ से एक छोटी सी बैंड साहब को दे रहे हैं। साहब जो है अम्बेडकर साहब का पॉलिसीज को फॉलो करते हुए उनका जीवित को फॉलो करने के हिसाब से Thank you, sir. Request Ishpal Ji, General Secretary for Association, to speak. सभी को नमस्कार। इस स्पेशल ओकेजन में और इस सौभाग्य की स्थिति में मैं CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर ऑनरेबल श्री रामदास जी आठवाले, ऑनरेबल मिनिस्टर का स्वागत करता हूं और उन्होंने जो समय निकाला हमारे लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस शुभ अवसर पर और इस इम्पोर्टेंट ओकेजन पर उनका ये आगमन हमारे लिए शुभ संकेत देता है और हमारा जो केडर है असिस्टेंट इंजीनियर का और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो डिपार्टमेंटल प्रमोटी हैं उन सब का और बहुत सारे जो अन्य केडर के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी बैठी हुई हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑल ओवर इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आए हुए हैं, उन सब के लिए भी ये सौभाग्य की स्थिति है। और इस अवसर पर हम यही बोल सकते हैं कि आने वाले समय में उनका जो साथ है हमारे इस केडर के लिए बना रहेगा और जो पीछे भी उन्होंने इस केडर के लिए बहुत सारी सिफारिश की है, बहुत सारी सहायता की है, उनका जो करियर है वो तकरीबन ये सोचिए कि 5 डिकेड का है। वो एक राजनीतिज्ञ ही नहीं है बल्कि एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं और ऐसी स्थिति में हमारी जो एसोसिएशन है उनका जो साथ हमको मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली स्थिति है। दोस्तों, आज उनका ये आगमन हमारे लिए हमारी जो ग्रीवांसीज हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, उनमें भी जरूर कुछ न कुछ उत्प्रेरक का कार्य करेगा और इस मुंबई की धरती में जो मुंबई की धरती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की धरती रही है। भारत की आजादी से लेकर और आज तक और आजादी से पहले भी ये जो शिवाजी की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, ये धरती कुछ न कुछ नया क्रियान्वयन करता है और आज का ये जो कार्यक्रम है जिसका जो लीड रोल में हमारे ओवी बाबू जी, डी कृष्ण कुमार जी, रंगाराव जी, शशिकांत मौर्य जी और पूरी टीम इस काम में लगी हुई है और ये जो अरेंजमेंट देखकर सबको अच्छा लगता है और बहुत ही आनंद की और प्राउड की फीलिंग आती है। दोस्तों, हम अपने संगठन को मजबूत रखें, यूनिटी दें और अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने काम को ठीक से करते रहें, अपनी ड्यूटीज को ठीक से निर्वहन करें और इसके साथ साथ अपने राइट के लिए बिल्कुल झुके नहीं और उन राइट्स के लिए अपनी बातों को बोलने में कभी हिचकिचाहट महसूस न करें और हमें अपने केडर को, अपने डिपार्टमेंट को और अपने देश को आगे लेकर चलना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर मैं हमारे
आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अविनाश कांबले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। My dear friends and sisters, first I remember our great leader, Dr. Babasaheb Ambedkar. All of you are my dear. All of you are my dear because you are engineers. I am not any pure. I am also here. I am also here because all you are engineers. In Central PWD is completing 170 years. And all the engineers association is also there. There are about 800. All engineers are also all over India. And engineers are here, therefore we are staying in our house. In Delhi, my bungalow is 11 Safdarjung Road. Last 8 years, I am a social justice and empowerment MOS in Narendra Modi's government. My bungalow is 11 Safdarjung opposite race course near PM House. And many times all engineers met me. Any problem we call them. When I was a member of parliament 3 times in Lok Sabha, 1990, 1999, 2004, 3 times I was in Lok Sabha. And at that time I was staying in 8A Lodi Street, opposite Khan Market. And therefore CPWD department is also close to me, close to member of parliament, close to all the ministers. And many colonies are there because of you. Many government buildings are also there because of you. In the state, PWD department is there, and central PWD department also your department. Your department means my department. And therefore, all of you are also here from all over India. Many important personalities are also present here. Mr. Babu Varghese, another, I think, Engineer Shishpal Singh, Engineer Ranga Rao, Engineer D. Krishna Kumar, Avinash Kamble. India was number 10 in all over the world. But in this 10 years, Narendra Modi is 10 years, we are now number 5. And now election will announce after 5-6 days. And definitely, because of your support, because of the people's support, definitely Narendra Modi became 3rd time the Prime Minister of India. And Narendra Modi is also a very popular person. Narendra Modi is also a very popular leader. So last time there was one survey in international survey,
And in that survey, near about 76% people supported Narendra Modi's name. And therefore, Narendra Modi is also very active Prime Minister, very strong Prime Minister. Some people are saying that there is no parivar to Narendra Modi. But Narendra Modi announced that. The 140 crore Janta is my parivar. And he is also working for all. They may be from Hindu community, Muslim community, Buddhist community, Christian community, Sikh community, Jain community. Any community, all the communities are one of the part of our vision. And therefore, I am also the MOS in Narendra Modi's government last 8 years. And after election, definitely Narendra Modi will become the Prime Minister and I will become the Minister in his cabinet. And therefore, I am not going to take your more time, but which problems you have, definitely you come to me. Our Avinash Kamble is also our coordinator. He is also a Buddhist leader. And he is also engineer. His wife is also engineer. And all of you are also present here. And this your very important gathering here. All the engineers are also present here. And you are also celebrating 117th year. And this year you are celebrating in Mumbai. Therefore I am very happy. You invited me here and you have given me the invitation letter some days back. And I decided to come to attend this your program. Therefore I am not going to take your more time. But definitely which problems you are having, definitely from our government, definitely we will help you. And your association is a very strong association. All the communities, engineers are also one of the member of your engineers association. And therefore, thank you very much. You invited me here. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai CPWD. All the representatives of JE Association, SCST Association and OB Staff Association, those who are present, the leaders, leaders may please come forward. Just Western region leaders also, Engineers Association. Moraji, Karimullah, Chandra. रंगरा सर इधर इधर मैडम यहाँ लोग ड्रायव्हर आणि परत ते रायडर काय कंबर तिकडे त्याला पण समजत नाही धारावीकडे तर तिकडून काढली तुमच्या इकडनं काढली स्टेशनच्या इकडनं मग तुम्हाला बोललो ना स्टेशनच्या इकडनं तुमच्या इकडं तिकडं आप आगे चलो वो कंटिन्यू चल भी जाओ
काम कंटिन्यू करो काम निकल रहे वो हाँ दे दो फोटो ले लो थैंक यू सर हो गया अभी कौन है वो हाँ बात करते उसके बारे में Sir, the CPWD Engineers Association very much blessed today because of the presence of our Honorable Minister. So we are very much thankful to you, sir, highly indebted for your all kinds of support. So we will be continuing the general body meeting further after Honorable Minister's departure. दादा आ गया है क्या आया हाँ आया अभी आया वो आया नहीं फोटो के लिए नहीं आया नहीं आया सर अग्रवाल सर प्लीज कम थोड़ा सा बैठिए सर नहीं सर प्लीज to the guest of honor sir it's an honor for you to be here sir you are a guest of honor sir please sir हटा दो कागज में निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं ये रहने दो ना वो निकालता नहीं है ना मीटिंग होने के बाद Thank you all for your patience and your support. नहीं वहाँ भी साइड We will restart the program shortly. Volunteers can remove the chair. Remove the chair. जनरल बॉडी मीटिंग है तो उनका नाम भी हटाओ सबसे सेंटर ये दो रीजन के दो बैठो काम शुरू करो सर रीजनल सेक्रेटरी तीनों के सामने बैठाओ आप दोनों बैठेंगे आप लोग ना अब सबको अपना जनरल बॉडी के साथ बैठा ऑडियंस बने रीजन ऑफिस वेयर और सेंटर पे बैठो हम नीचे चलते सर We have got two special invitees
from the eastern region of our country. Deepesh Pradhanji, Datta Sahab, please come on to the dais, sir. Your invited special guests, please. Tapan sir, thank you for coming. आप आपका ब्लेसिंग आप प्रेयर कर रहे हो ना हमारे मन में Pushpal sir. We will be honoring the chief guest of honor, Sri Agarwal sir. Shagwa sir, the SDG sir is out of station, so Agarwal sir is here, represent the department as a whole. Sure. Those who are standing outside, those who have gone outside along with the minister are requested to please come inside. All our friends, those who are outside, please come inside, please. तो बुला लो ना, तो मिनिस्टर के साथ बाहर जो निकले थे उनको बाहर बुला लो, अंदर बुला लो. सेंटर में किसको? हाँ वही आप ही लोगे I request Babu sir to don a shawl to Shri Agarwal sir. And a small memento in token of our love and appreciation. नहीं ना कैसे I now request the guest of honor to give his speech. Thank you. आपको जल्दी जाना है तो आशीर्वाद दे करके जाएंगे. नमस्कार, धन्यवाद मिस्टर बाबू, Mr. Charan Babu, Mr. Mukesh Sharma, all leaders, my colleagues, friends. मैं तहे दिल से माननीय मंत्री साहब जिन्होंने अपने अति व्यस्त समय से कुछ समय हमारे लिए भी निकाला और आशीर्वाद दिया, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा फंक्शन किया है CPWD के लिए और एसोसिएशन के लिए हम शुभकामनाएं हैं मेरी कि इनकी सभी लगभग मांगे पूरी हो, पदोन्नति हो, सब जल्दी से जल्दी हमें पार्टी दे और जो भी ग्रीवेंसेज है प्रशासन द्वारा सुना जाए और एक तरह भाईचारा बना रहे डिपार्टमेंट में, हम एक अच्छा काम करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, क्या हुआ मंडल साहब? बैठेंगे सर। अब आपसे थैंक यू बाबू। सर मैं साथ में आप बढ़िया मैं आने के बाद फिर हाँ जल्दी होगा। So we are thankful to Shri Agarwal sir for being with us right from morning. From morning 10:30 he was here and he's been here till the start of our GBM. We thank him for that, and like he said, he's eager to cooperate with us in achievement of our genuine demands and grievances. Sri Avinash Kambleji has been a great friend of our association, and he has been the past leader of CPWD SC/ST Association and that of the CPWD Engineering Draftsmen Association. We now would like Sri Charan Babu sir, our Chief Advisor, to honor Sri Kamble. So Kamble sir, please come on, guys. मौका दे दो पहले। Thank you, sir. Thank you. Ganges, ये सब जो सिस्टर ने एक एक ना We now request the representative of CPWD JE Association to come on the dais. CPWD JE Association. Is there JE? CPWD JE Association, please come on the dais.
थैंक यू। ये नहीं था ना, मेमेंटो नहीं था ना। We'll honor them first with the bouquet. Krishpal ji and Mukesh Sharma sir. चलेगा सर। May I request Jay to speak a few words? Who is saying? कौन आ रहा है? हाँ, Mr. Pawan Jay will speak a few words. सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंट्रल टीम से आए हुए लीडर बाबू चरण साहब, शिशुपाल साहब, बाबू वर्गीस साहब और यहाँ पे सभी उपस्थित जो भी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन के अपने ए साहब लोग हैं और यहाँ पे उपस्थित एक्सियन और यहाँ पे उपस्थित जूनियर्स इंजीनियर्स और भी जो भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए बाबू साहब को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से हमारे बाबू साहब के संरक्षण में हमने काम भी किया हुआ है और जहाँ तक इन लोगों ने एसोसिएशन के माध्यम से हमारे इस कैडर को आगे ले जाने में जो भी भूमिका निभाई है वो अविस्मरणीय है और अतुलनीय है। इनके मार्गदर्शन में हम रह के बहुत कुछ सीखे हैं और इनके मार्गदर्शन में रह के हमें अभी बहुत कुछ करना है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you. I request CPWD Engineering Drawing Staff Association. योगेश मिस्त्री जी अनगम में Sri Yogesh Mistry and Madhvi from Engineering Drawing Staff Association. हाँ, योगेश प्लीज स्पीक ए फ्यू वर्ड। हेलो, मैं ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन से मैं हूँ और आज के मौके पे, आज जो टेक टॉक्स के मौके पे आप लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए और बाबू साहब ने सभी एसोसिएशन वाले और जो भी यानी वेस्टर्न रीजन, नॉट इवन वेस्टर्न रीजन लेकिन ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे चरण बाबू साहब जो सेंट्रल ऑफिस से आए हैं और दूसरे उनके जो डेलीगेट्स आए हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे एसोसिएशन की तरफ से बॉम्बे में आए वो सभी लोग जानते हैं कि अभी तो डिपार्टमेंट में बहुत कड़ी से सख्ती से काम करना पड़ता है और सबको अपने हक के लिए बहुत ही लड़ना पड़ता है। तो जो आपके भी सेंट्रल ऑफिस जो है और यहाँ पे जो बाबू साहब है, शिशपाल जी है, वो काफ़ी एक्टिव है। उनसे काफ़ी जैसे जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन से अभी जिन्होंने बताया अभी कि इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सच बात है वो उनके पास अच्छा नॉलेज है और वो हमारे हक के लिए बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं और आगे सबको लेके जा सकते हैं। और ये आज के मौके पे उन्होंने आज ऑनरेबल हमारे रामदास आठवले जी को भी बुलाया, वो अपना वक्त निकाल के आए, तो यानी इतना अच्छा उनका सपोर्ट भी है हमारे सीपीडब्ल्यूडी के एसोसिएशंस को।
तो और हमारे जो कामले जी है उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की उनको यहाँ लाने के लिए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे एसोसिएशन की तरफ से। और मैं ये ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस मौके पे हमें आमंत्रित करके हमारा सम्मान किया। थैंक यू। May I request Engineer Todkar and Engineer More, Joint Secretaries of Western Region, to occupy the dais. तेजदेश गौर जी प्लीज आप भी आइए। Now, as all of you know, one of the key pillars of this organization for many years, right from the Junior Engineers Association, Engineer Tapan Kumar Mandal, he is a very dedicated, honest and sincere leader of this organization, very silent leader, very dedicated. In the last 1 month he was having little health issues, he was hospitalized and he was monitoring many of the progress of this function from home, and he was longing to be here with us for a few moments, and taking the permission of the doctor, he is here. We are very happy in his presence. I will request Engineer Tapan Kumar Mandalji, our close friend, closest to our chest, to say a few words, and then he can take. Respected हमारा सेंट्रल प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, ओल्ड जनरल सेक्रेटरी साहब एंड आवर एडवाइजर, फिर ईस्टर्न रीजन से आया हुआ अनुप चक्रवर्ती साहब, राजतेश जी, सेंट्रल लीडर अग्रवाल जी, फिर हमारा वो ईस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन से आया हुआ सर्वनंद साहब, अदर्स डेलीगेट्स, मीना साहब सेंट्रल लीडर, प्रधान साहब, दत्ता साहब, और डायस में मेरा सब कलीग और ऑफिस बियारर ओबी बाबू साहब, साथ में हमारा एनर्जेटिक जो कन्वेनर है जिसका वजह से इतना शानदार प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है, हमारा डीके सर, और साथ में मेरा ये शशिकांत मोरे जी, फिर तोरकर जी, रंगराव जी, मिस्टर गांगुली, कुंडू, फिर करीमुल्ला जी, all are giving very much effort to success this program, and आदर्श बाहर से जो डेलीगेट्स आया है, मेरा सामने बैठा है, मेरा पुराना ये दिखाई दे रहा है, विश्वकर्मा साहब, धन्यवाद सर, बहुत दूर से आया है। पीतम साहब, सॉरी आपको कम्युनिकेशन नहीं कर पाया था, आपका शायद पर्सनल कुछ लॉस भी हुआ है सुना है। बाकी आदर्श जितना भी मेंबर है, डेलीगेट्स है, हाँ सामने सब दिखाई दे रहा है, ऑल आर मेरा फ्रेंड है, बहुत दिन का पुराना ये है। हम संगठन को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा है। हमारा वेस्टर्न रीजन में अच्छा डायनामिक लीडर मिल गया, उसका अंदर जो ये हो रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं खाली बोला था जो मेरे को प्रोग्राम करना है केंद्रीय सदन का आजू बाजू में पैंडल बना के करना है, लेकिन इतना सुंदर तरीका से कर दिया है, इतना मतलब फर्स्ट क्लास वैसे, इसके लिए बार बार बधाई देने का पात्र है हमारा ओबी बाबू सर, डीके सर, उसका टोटल टीम जितना भी है, सबको मैं धन्यवाद और शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, Tapan. Thank you, ma'am, for taking care of him and bringing him here. We now request
The Group B CPWD OS All India Association representatives to come on a dais. Like to honor them with a bouquet. वो bouquet लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है हाँ बाद में ये पहले अलग अलग करेंगे ना वाली पद कौन है बाबू सर चंद बाबू सर Thank you, ma'am. Thank you, sir. All are requested to share the link of the live also to our sister organization and all our friends also. Babu sir, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Nice. We now invite the representative of नारायण बात करने दो ना आइए सर इतना दूर से आया हेलो आदरणीय चंद बाबू सर शिशुपाल सर बाबू सर और यहाँ उपस्थित सभी एसोसिएशंस के लीडर्स एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आप सभी इतने दूर से आए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबू सर को जो उन्होंने मुझे मौका दिया मंच में 2 शब्द बात करने के लिए तो शुरू से ही जो है हम इनके साथ में जुड़े हुए हैं हमारा एसोसिएशन जो है ग्रुप बी CPWD ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन ऑल इंडिया इनके साथ शुरू से ही जब से मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना करीब 7-8 साल से मैं तो देख रहा हूँ एंड इसके पहले से ही इनके साथ में जुड़े हुए हैं एंड काफ़ी सारे अचीवमेंट्स इन्होंने किया है जो लिस्टिंग करने जाए तो समय कम बढ़ जाए समय ही नहीं इतना सारे अचीवमेंट्स हैं इनके पास एंड हाल ही में शिशुपाल सर भी जनरल सेक्रेटरी बन के गए हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई इसी तरह से मैं बेस्ट विशेस दूंगा कि और भी अच्छी तरह से सभी एसोसिएशंस एकत्र होकर के आने वाले समय में बहुत और भी अचीव करें ऐसी मेरी शुभकामनाएं थैंक यू Thank you, Narayan ji. We now invite the CPWD SC Association representatives to please come on a dais. Mr. Todkar ji, please hand over. CPWD SC Association representatives, please. Bouquet. అరే నేను చెప్పాను వాళ్ళు పెద్దగా చెప్పాను
उस तरफ जाओ या इस तरफ आएंगे। थोड़ा आगे बढ़ गई तब ना रुको ना, वो है ना। अरे बाप रे, ये भी तो ये हो रहा है। अरे सर जी नमस्कार। अरे मैडम यस सर बुके ना बुके दे दिया ना। किरण स्पीक a few words. Good evening all. Respected Central Leader Shishupal sir, Charan Babu sir, हमारे रीजनल लीडर्स डीके सर, ओवी बाबू सर, सभी दूर दूर से आए सभी एसोसिएशन के साथियों, हमारी SC/ST एसोसिएशन जब से बनी तब से ये एसोसिएशन के साथ है, साथ तोड़ने का तो बात ही नहीं है। तब से हमारी एसोसिएशन हमारे इनके साथ हाथ पे हाथ मिला के चल रही है, आगे भी चलेंगी। और आज तो हमारे जो मंत्री जी है, जो हमारे लीडर है, उनको यहाँ पे बुलाकर उस पे तो चिक्का मोतब कर दिया कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं 2009 में ज्वाइन किया, तब एसोसिएशन का जो था वो भी मैं आज देख रहा हूँ। वो जो ओही बाबू साहब वहां पे जो थे आज भी वही है, शिशुपाल सर जो उस टाइम थे आज भी वही है। मतलब इतना जो एनर्जी है, शायद हम जो अभी नए लीडर बन रहे हैं उनमें है या उनसे आएगा पता नहीं है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है पता नहीं। सर मैं सर को भी देख रहा था, अभी हम सोच रहे थे कि 4-5 साल में तो बहुत सारे लीडर हमारे रिटायर्ड हो जाएंगे, तो एसोसिएशन का लीडरशिप कहाँ से बनेगा। अब मैं वही सोच ही रहा था तो साहब ने 2 हमारे आदमी को बुला लिया कि मोरे साहब और तोड़कर साहब आप डाइस पे आ जाइए। मतलब उनका विजन इतना क्लियर है और लीडर बनाने में भी पीछे नहीं है। सेकंड लीडरशिप मोरे जी के और तोड़कर जी, गांगुली जी के चेहरे में ये बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर अभी ये लीडरशिप बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस आता नहीं जल्दी, तो थोड़ा कान मंत्र सर जो हम जैसे नए लोग हैं उनको देके जाइए और हमेशा गाइडेंस हमारे को करते रहिए। मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ पे दिया सर ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू किरण। CPWD मजदूर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीज। मजदूर यूनियन CPWD कोई नहीं आएगा। CPWD पेंशनर्स फोरम से मिस्टर जायसवाल स्टिल हियर। पेंशनर्स फोरम, CPWD पेंशनर्स फोरम, Charan Babu sir is not in that group from Bombay. Jaiswal sir was here. ठीक है, we'll continue.
We have invited people for this Tech Talks 2024 Mumbai from all the regions. The southern region representatives, including Shibli, please come on dais. Shibli, sorry. Shivan, come on dais. And southern region, Ayukuti sir. Sir, sir. We have to honor them for their presence here. Memento. Southern region, sir. All three are here. Simeon. Simeon. We'll be honoring Eastern region now. So, Minto Kundu, Arindam Ganguly, our imports from East Bengal. Minto Kundu, Abhijit Da, Abhijit Chatterjee ji, Minto Kundu. Please come up, sir. We'll be felicitating the Eastern region. वाला क्या सर? सर फोटो के लिए आ सकते हैं सर प्लीज. दत्ता जी एंड हाँ दीपेश बाबू. सर फोटो Thank you, sir. We'll be honoring the retired employees now. Shri Tumir Guha sir, Guha ji, Timir Guha, A electrical retired. Acha, he's not here. Shri Sikdar sir, Sikdar ji, यही सिविल रिटायर्ड वो भी नहीं है. सिद्धर भी चलेगा, सिद्धर भी नहीं है, गुहा भी नहीं है, चलेगा. हाँ चलेगा. ओके. सो now as part of our friend. So these are the two people who were here in the morning, who were supposed to come and receive the memento. They are not there. Other than this, mementos are there ready. They'll be shipped to their place of residence.
Shri Asim Sarkar, AE Electrical, Shri Mani Anbalagan, AE Civil, Shri Babulal Sutar, AE Civil, Shri Subesh Bhivapurkar, Shri Sriram Sirotia, Shri VP Singh, Shri S.A. Nikam, he is not even in India, he is in Ireland right now. Prakasham Jagdane, Shri S.K. Misraji. These all people are retired from Western region the past 1 year after the last GBM. So it's a practice and convention to honor those people who are retired in the last GBM. So these people will, the memento will be sent to their place of residence. We request the leaders who have come from the respective places to collect them on their behalf and deliver it to their homes and send us a photo. Thanks. That is the proof they have been delivered, sir. We now, for our Tech Talks 24, apart from honoring the present leaders, like you all know, the Western region has been a cradle for all the great leaders of our association, starting with more than half the people here on the dais. So in keeping in terms with that convention and the honor, so we would like to felicitate Shri Devrata Dattaji, a special invitee from Kolkata, who was instrumental in the Western region when he was active here. So we request Devrata Datta to come on to the front of the dais, sir. Dattaji, honor with a shawl. I request all the office bearers, including Arindam Ganguly, all the office bearers present here to please come on the dais while giving this award of honor to our special guests, special invitees. Arindam Ganguly, Bote, Ranjit Bote is here. Ranjit Bote, where is Ranjit Bote? Please come. All office bearers, and I am telling you should not sit there. Please come. You know? नहीं सब आने दो ना सब जो कोई पीछे बैठा हुआ आ जाओ अरे क्या बात है यार और रंगाराव जी करीमुल्ला रंगाराव Chairman Action Committee, M. Rangarao sir, Mintu Kundu, हरिदंगुल है वहाँ पे तैयार. Shri Rangarao ji, Chairman Action Committee, he is in action somewhere else. Thank you, Datta sir. As a token of appreciation for service rendered to you to the association. बुके नहीं है. We now request Pradhan Dipesh Babu to please come on the front. Committee, please stay on the stage. Come in. आइए सर. सर आइए. मिंटू आ जाओ. अरे यार आप सामने आ जाओ.
Dipesh would like to speak a few words. Ajay sir. Thanks to Western Region office bearers and मेरे को थोड़ा भावुक हो रहा हूँ क्योंकि 89 फरवरी में मैं बॉम्बे में आज जेई ज्वाइन किया था। फरवरी 28 सेकेंड हाफ में मैं उड़ीसा से आया हूँ। सेकेंड हाफ में ओभी बाबू मेरे को मुलाकात हुआ, ओभी बाबू एंड देवदत्त दत्ता जी। उस दिन से ओभी बाबू जी का लीडरशिप में हम लोग काफी एक्टिविटी में लगे हुए थे। इट वॉज ए पिक टाइम। उस टाइम हमारा जेई एसोसिएशन बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम हम लोग इससे कुछ भी स्टेप लिए थे विद द लीडरशिप ऑफ द ओभी बाबू, दत्ता जी, और दिल्ली में हमारा मित्रा ब्रदर्स एमके मित्रा जी एंड पीके मित्रा जी के साथ। अभी वो चीज याद आता है कि रात को 12 बजे एक बड़ा ऑफिसर का ट्रांसफर ऑर्डर बॉम्बे से दिल्ली होता है। ये छोटी बात नहीं है। उस जमाने में रात को 12 बजे चीफ को घेराव करके हम लोग सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक 12 बजे डीजीपी दिल्ली में बैठे थे और यहां से ट्रांसफर ऑर्डर निकालना पड़ा उनको। ये ओभी बाबू जी और उस टाइम हमारा रंगाराव जी थे, दत्ता जी थे, इनका लीडरशिप में है। ऐसे आज भी मैं देख रहा हूँ ओभी बाबू का वही एनर्जी है। आई एम गोइंग टू रिटायर ऑन जुलाई 200 ईयर, बट बाबू जी को देख रहा हूँ वही 35 साल हो गया, कोई कमी नहीं है उनसे। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी आज स्पेशल इन्वाइटेड। थैंक यू वेस्टर्न रीजन लीडरशिप। थैंक यू अगेन। थैंक यू दीपेश जी। दत्ता जी, आपका भी स्पीच बाकी है। आदरणीय चौहान बाबू साहब, मुकेश शर्मा साहब, शेषपाल जी, बाबू साहब, डीके साहब, ईस्टर्न रीजन लीडरशिप, सदर्न रीजन लीडरशिप, और ऑल डेलीगेट्स फ्रॉम वेस्टर्न रीजन्स, सबको मेरा नमस्कार। मेरा भी पुराना बात याद आ रहा है। मेरा भी मुंबई में फर्स्ट, उस टाइम में बॉम्बे था, फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था बॉम्बे सेंट्रल डिवीज़न 1 में। जनवरी 89 में ज्वाइन किया था, 6 जनवरी। तो उसका 2 दिन बाद से एसोसिएशन एक्टिविटी शुरू किया था। मैं पहले स्टूडेंट यूनियन करके, क्लब संगठन करके, मैं स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन किया है। ऐसा नहीं है मैं लिफ्ट और एस्केलेटर में उठ के संगठन किया है। तो उसी टाइम में जेएम स्वरूप एक एसी था, आप लोग नया है पता नहीं है, मैं इसलिए 2 मिनट टाइम लेंगे। उस टाइम में मनोरम साहब सेक्रेटरी था, शिषपाल जी उस टाइम में ज्वाइन नहीं किया था। बाबू साहब का सब डिवीजन में मैं ज्वाइन किया था। बाबू साहब और रामाराव साहब था, चौहान बाबू साहब का फ्रेंड, वो काफ़ी एक्टिव था। तो हम लोग रात 8-10 बजे तक हर रोज़ टाइपिंग, उस टाइम में कंप्यूटर नहीं था, टाइपिंग जाके कोई बाज़ार में जाके टाइप, लेटर टाइप, ये सब करते थे। तो मेरा एक जूनियर तो बोला था तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो कुछ दिन भी तुम टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन हम सुना नहीं है। हम लोग फाइट किया है, कोशिश किया है, ये भी हुआ था। वो दिन भी याद आ रहा है, न्यू सीजीओ का कैंटीन में जो एक ही पोस्ट में चुना हुआ था, जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट में, तो मैं वो चुनाव जीत के आया था। तो इसलिए बोला मैं स्टेप बाय स्टेप उठा है, ऑर्गेनाइजेशन जो किया है। और अभी जो 8 साल 7 साल में प्रमोशन रहा है उसमें भी हम लोग का योगदान है। जब जेईएस उनका ईस्टर्न रीजन में मैं जीएस था, रीजनल सेक्रेटरी था, सॉरी, बाबू साहब इधर था, शिषपाल साहब था, उधर राजेंद्र साहब था साउथ में, और गिरीश कुमार साहब
हम लोग काफ़ी संघर्ष किया 2006 से 2010 तक। पांडे साहब था जनरल सेक्रेटरी, उसका बाद हम लोग वो अचीव किया 80-20। उसका बाद ही आज का आपका सामने जो सब नौजवान बैठा है, जो हमारा जो नया जो यही सब लोग बैठा है, वही 7 साल 8 साल से प्रमोशन हम लोग को फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग जो ये किया था, एजुटेशन किया था, वो एजेंडा में सक्सेस करके हम लोग निकाला था। तो मैं लास्ट में और बात नहीं बढ़ाना चाह रहा है। वेस्टर्न रीजन का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा है। मेरे को याद किया है 24 फरवरी मेरा पास फ़ोन आया बाबू साहब का, जो स्पेशल इन्वाइट ही किया है तुमको। हम बोला अरे मेरा तो कोई कैपेसिटी नहीं है, कैसे आप कर दिया? बोले नहीं आना है। फिर 25 मॉर्निंग में डीके साहब का फ़ोन आया। मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाह रहा है। और आपका हॉस्पिटैलिटी, लॉजिंग, फूडिंग सब अच्छा है, एक मिसाल बन गया इधर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू दादाजी। बाद में करेंगे, अभी करेंगे बाद में। हाँ हाँ we will be now felicitating our General Secretary and the central team. So request the leaders to come to the front, central team. सीनू ऊपर है ना? हाँ, सीनू जी, मीना साहब, मीना जी, मैथिंग मीना जी सामने आ जाए सर। राजेश साहब थोड़ा। All the Western Region office bearers, please come on as. हम भी और नहीं ऐसा कुछ नहीं। वेस्टर्न में चल रहा है एक नाश्ता पीछे देना। अच्छा नहीं बंद है ये तो नहीं बोलने वाला, मुझे बोलना पड़ेगा। प्रोफाइल पर सेट ही ले। अच्छा काट भी सकते हो आप। अच्छा प्रोफाइल काट दो, ब्रिजेश को काट दो, ब्रिजेश को काट दो। अरे क्या काट रहा है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बोला ठीक है। ललित जी है, ललित बोलेगा? संजय नहीं बोलेगा, दोनों ललित जी लिख दिया। कोई भी बोल सकते हैं। तो है
Thank you. We will continue with the GBM. This will be addressed by the branches of Western region. So the branches in alphabetical order are Ahmedabad, Antop, Bhopal, Churchgate, Goa, Gwalior, Indore, Nagpur, Navi Mumbai, Pune, Raipur, Surat and Vadodara. I request all the representatives to be ready so that we can finish off at the earliest. Start with Mr. Ahmedabad team to be commanded as Ahmedabad. Shri Damodar Bhoge sir, representing Ahmedabad. Antopil branch, your branch, your team be ready. अपन वगैरह वहाँ से सपन बनना वो भी एसडी जो हो गया ना कहाँ तो टीएल की के लिए इंस्पेक्शन है वहाँ पे ओहो कोई नहीं कैंसिल किया ना This is for to Bhoge sir on behalf of to Ahmedabad branch. फोटो निकालो जाओ Respected Babu sir, respected Shishpal sir, respected Charan Babu sir, respected डी कुमार जी, ये देखते हुए बहुत आनंद आ रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये अरेंजमेंट हो गया है। मेरे ख्याल से 2004 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था बसेड़िया साहब से, जो है छोटा सा कार्यक्रम निर्माण सदन में होता था। चरण बाबू साहब को बुलाए थे हम लोग, जो है इतना बड़ा अरेंजमेंट ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था कि ये डीके साहब आने के बाद जो है ये बहुत बड़ा हो गया है कार्यक्रम, जो है इतना सारा स्पॉन्सर्स को बुलाया और ये अरेंजमेंट किया। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you sir. The Antapil branch EC to come on. सबको बाहर से अंदर बुलाओ। I request the volunteers to please call all our members into the auditorium. Registration desk में जो हो, please ensure that all members come into the auditorium. The GVM is going on here. All members. All members, please come into the auditorium. The GBM is in progress. Your presence is required here. करीमुल्ला कहाँ है? आप बुक को सर्कट के सर वो साइन में निकल नहीं GBM. Bhopal branch, Sagar Potara and team. Come on, Sagar.
Next is the Churchgate branch, Pandian sir and team. के जो प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन था। इतना बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम हमने यहाँ पे अरेंज किया है सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से। इसके लिए मैं सारे लीडर्स जो हैं WR के और जो एक एक व्यक्ति, जितेश कड़ू, मिंटू, अरिंदम, इन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और यहाँ बुलाने के लिए सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सागर। एंटॉपल ब्रांच हजुर, चर्चगेट ब्रांच हेड ऑफिस है वही है, आ जाओ। अरे आए नहीं, बसेर साहब भी बैठे हैं, बसेर साहब भी नहीं आए। बसेर सर साहब नहीं आ रही। एक मिनट Lalit will speak on behalf of Churchgate branch. आदरणीय सेंट्रल टीम जनरल सेक्रेटरी शिषपाल सर, प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा सर, चरण बाबू सर, रीजनल सेक्रेटरी ओबी बाबू सर और प्रेसिडेंट डी कृष्ण कुमार सर, मैं चर्चगेट ब्रांच की तरफ से आप सभी सेंट्रल टीम का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं सदर्न टीम का भी स्वागत करता हूं, ईस्टर्न टीम का भी स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा एजेंडा है, जो टेक टॉक्स का एजेंडा है, उसमें जो भी पॉइंट्स है उसको आज सेंट्रल टीम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो भी ग्रीवांसेस है वो सही से होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ललित। Is Antopil team ready? Antopil team तैयार है ना? Come on. हम भी तो Antopil का ही हैं। All Antopil branch team. In the past couple of months, we have had 3 branches here in Mumbai, Churchgate, Antopil and Navi Mumbai. This is all Antopil members, please come on the dais. Antopil बचे आप ही लेंगे। रंजित पूछ रहा मेरे को, आप एंटरप्राइज कैसे आए? मैं बोला एक्सचेंज रेट बोल रहे। अच्छा बात
इधर दो अरे थोड़ा देर बाद फोन कीजिए ना। गुड इवनिंग सर, मैं N2 ब्रांच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी। तो मैं सेंट्रल टीम का सेक्रेटरी शिशपाल जी, प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा जी, हमारा सेक्रेटरी है वेस्टर्न रीजन का ओबी बाबू सर, प्रेसिडेंट DK सर, ऑल सीनियर मेंबर है, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अभी जो हमारा जो इवेंट हो रहा है इसके लिए जो सुबह से हमारा जितना लोग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये इसमें हमारा साथ दे रहा है। और आगे जो इश्यूज है तो इश्यूज के लिए हम लोग ब्रांच से छोटा छोटा इशू हम लोग रीजन को बताते हैं, उसका भी हम लोग आगे बात करेंगे। हमारा लीडर से बताया जो क्या क्या हमारा इशू है उसके लिए भी चर्चा होगा। तो ये जो चिंता है जो हमारा लीडर्स का जो आगे हम लोगों को एसोसिएशन को कैसे आगे बढ़ाना है, जैसे हम लोगों को ऊपर जो दायित्व दिया गया है तो हम लोग सोच रहे कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये हम लोग बहुत धन्यवाद है सर, हम लोगों को मौका दे रहे हैं। तो आगे हम लोग इसके लिए और भी इसका काम करना चाहेंगे। और कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जब हम 2020 में जेई से ही प्रमोशन होके मुंबई में आया, कोरोना काल में बहुत ही टफ टाइम था उसी टाइम, जिस टाइम में कोई लोग महाराष्ट्र आना नहीं चाह रहे थे। इसी एक टाइम में जिस टाइम में हम लोग आया और उसी टाइम शिशपाल सर, बाबू सर हम लोगों को इतना हुआ जैसा गाइड किया और ऐसा हम लोगों को कभी फेल होने नहीं दिया। हम लोग घर का बाहर आया और उसी टाइम से अभी हम लोगों को आगे हर स्टेज में हम लोगों को गाइड करते गए जो कैसे हमको आगे एसोसिएशन के लिए काम करना है। तो हम उनका इंस्पिरेशन में और भी आगे काम करने की कोशिश करेंगे। और सबको हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं जो सारा लोग है। और एक इशू है हमारा, हम लोग वो भी बात कर रहे जो इधर गेस्ट हाउस का मुंबई में रहने का जगह का बहुत इशू है। तो गेस्ट हाउस का हम लोग ब्रांच से भी किया था जो गेस्ट हाउस करे, तो उसके लिए भी प्रपोजल है। तो हम लोग एक छोटा इशू से चालू किया है, तो अभी इसका भी सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और आगे का जितना इशू है वो तो जनरल इशू है, सबके लिए है। तो वो आगे हमारा जो सेंट्रल लीडर है उन लोग ये सब देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। Thank you, Mintu. Next is Goa branch. Blessing Matthews and Lawrence are here. चले गए? Okay. Gwalior branch, Mohan Kushawa and team. Gwalior team. One-man team. इंडोर से KL लोधी सर एंड टीम। नेक्स्ट इज नागपुर टीम, बी रेडी सिलेकर सर। नेक्स्ट इज नागपुर, नोविस इंडोर। लोधी सर एंड टीम, वन मैन आर्मी सर। सर
चलो लोधी सर थोड़ा बात करना है। Respected central leaders, आदरणीय शिषपाल साहब, आदरणीय मुकेश शर्मा साहब, चरण बाबू साहब, रीजनल लीडर फ्रॉम वेस्टर्न रीजन श्री ओबी बाबू साहब, श्री डी कृष्ण कुमार साहब, रीजनल लीडर फ्रॉम साउथ एंड रीजनल लीडर फ्रॉम ईस्ट एंड ब्रांच से आए हुए हमारे सभी साथियों, मैं सभी को इंदौर ब्रांच की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। यहाँ जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सारी व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं रीजनल लीडर्स का स्पेशली सब पूरी ओबी बाबू साहब एंड की टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर से सुलेखा सर टीम। Next is Navi Mumbai team. Ranjit Bote, please get team ready. Is the team ready, Navi Mumbai? सुलेखर जी बात करेंगे थोड़ी देर। मंच पर उपस्थित सभी सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सभी कॉमरेड्स को मैं एमसीसी लेकर नागपुर ब्रांच की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेस्टर्न रीजन के तत्वाधान में आज इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उन सभी को बधाई दी जाती है। विगत 2 वर्ष से मैं यहाँ वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित था और टेक्निकल स्टॉल्स और प्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस वर्ष इतने बड़े पैमाने पर पूरे दिन भर के लिए टिकटॉक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो वास्तव में सराहनीय है। इस आयोजन करने से उपस्थित सभी कॉमरेड्स को टेक्निकल संबंधी जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू सर। नई मुंबई रंजित बोटे सर और टीम। आए मैडम। अभी तक जो ऊपर आया है पहला लेडी, वेलकम मैम। We have got a lot of volunteers for our job here and frankly speaking most of them came on request, तो सभी को हम बुलाया आ जाओ तो आया। एक तो था हमारा यही मेंबर, तो खुद ही वॉलंटियर किया कि मैं कुछ काम करूं क्या, तो रंगोली डालने का एक आइडिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेटअप में इट वॉज नॉट फिजिबल। नेक्स्ट टाइम उसका भी प्रोविजन करेंगे हम। छोटा है, सॉरी मैं देखा नहीं, और कहीं घूम रहा होगा मैं। ठीक है, सो थैंक यू मैम फॉर योर इनिशिएटिव। वी रिक्वेस्ट दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, दिस सॉर्ट ऑफ मेंबर्स हियर। दिस व्हाट मेक्स एसोसिएशन द एसोसिएशन इट इज। थैंक यू।
रंजित बोटे जी वहीं पर। हेलो, आज इस सुंदर प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सेंट्रल लीडर्स, प्रेसिडेंट साहब शर्मा सर, हमारे बिलव्ड जीएस सर, शिषपाल साहब, रीजनल कमेटी मेंबर्स और हमारे प्रेसिडेंट साहब बाबू सर, सेक्रेटरी साहब बाबू सर, प्रेसिडेंट कृष्ण कुमार सर और हमारे बीच उपस्थित सारे जूनियर इंजीनियर्स एंड असिस्टेंट इंजीनियर्स, आल्सो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सबका मैं स्वागत करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे और इस शानदार प्रोग्राम का आयोजन करने में जो भी हमारे साथी दिन रात मेहनत कर रहे थे उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक्चुअली अभी रीजनल टीम में भी कार्यरत हूं, साथ में मैं नवी मुंबई ब्रांच को भी रिप्रेजेंट करता हूं। कॉरिडोर में थोड़ा मौका मिला हमारे जीएस साहब से बात करने का, अभी थोड़े पराये हो गए, दूर चले गए हैं, पहले तो इजीली अवेलेबल रहते थे मुंबई में। तो सर मैं वादा करता हूं मैं नाराज नहीं हूं एसोसिएशन से, आपने जो पाथ हमें दिया है उसी पाथ पे हम आगे चलेंगे और नाराज होकर अपनों से थोड़ी हम पराये हो सकते हैं। और आप सर जो विशेष मुद्दे लेके जो जेन्युइन बर्निंग इश्यूज हैं वो दिल्ली में उठा रहे हैं, उसके लिए वेस्टर्न रीजन से पूरा सहयोग रहेगा सर, आप आगे बढ़िए। धन्यवाद। Thank you, Rajit. Those were inspiring words. Now request the Pune branch, Sanjay Bebrala and team to come on the dais. One man army. Thank you, sir. Next is Raipur team by Vishwakarma and Co. बड़ी थोड़ा बात करें, ठीक है। नेक्स्ट इज रायपुर टीम लेड बाय विश्वकर्मा जी, अगेन प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न रीजन। विश्वकर्मा जी बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार मुंबई। आदरणीय शिषपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली से, आदरणीय मुकेश जी हमारे प्रेसिडेंट दिल्ली से, रीजनल बॉडी में सेक्रेटरी हमारे ओवी बाबू, प्रेसिडेंट डीके साहब, ये जो वृहद पैमाने पर आयोजन हुआ है, मतलब हम सभी बहुत खुश हैं। और ये सही है कि हम लोगों ने 20 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की थी और बॉम्बे वेस्टर्न रीजन में हम इनवाइट करते थे अपने सेंटर लीडर को नए साल के उपलक्ष्य में, उस बहाने से एक टूर हुआ करता था। अब तो हमारे खुद के लीडर सेंट्रल में हैं, बहुत क्लोज हैं, और रियली इस शुरुआत को इस मुकाम तक पहुंचाने में जो मेहनत लगी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।
पूरी मुंबई की टीम को। और ये टीम ऐसे ही यहीं देखने मिलती है, एक एक आदमी को जो जो काम सौंपा गया है, मैं उधर चेयर पर बैठ के भी देख रहा था, वो अपना काम बड़े सुचारू रूप से कर रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन इस तरह की टीम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर 2025। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. So, to just continue on what Vishwakarma ji said, 2023 में अभी है, हम लोग 24 में है, 22 में हमने थोड़ा स्मॉल स्केल में किया था, दादा सेट ऑफ केंद्रीय साधन। 22 में जो किया था, एंड we, like you know, we all depend on our sponsors and partners to sort of share the expenditure on this. So last year we had contributions from different people. The single largest contribution was by Vishwakarma ji, and that was, should I say, nearly, I'm not going to figures, it was quite a substantial amount, and that's what. So the success of this is depending not only on the Mumbai here, it depends on people from all over the western region, and in this present case, our head office se bhi we got a couple of sponsors. We thank Mr. Mukesh and his team from that, Shishpal ji. So that is something which we are proud of, that people from all over the India are able to contribute. And when I say all over India, for example, the Chennai discussion tech innovations, if I am right. So there was Rosenberger was there. So when they called us, they talked to us a couple of, I think 3 weeks back ago. They told that they missed us in Chennai. We invited them to Mumbai, and they are here right now. So from Kochi, two were supposed to come, but then they had another exhibition at the same time, so they couldn't make it. So this sort of cooperation is what is required to make our association strong, both financially and as a united front. Thank you all. So next we come to Surat branch led by Agarwal and team. Agarwal sir is here. Good. Next is Vadodara team. H.N. Prasad and team, please be ready. पहले सूरत वाला आएगा, बाद में बड़ौदा है। बॉम्बे से जो पहले नज़दीक सूरत है सर, उसके बाद बड़ौदा आएगा। इसके अग्रवाल जी, again he has been a part of Mumbai. Surat and Vadodara. Yeah, Surat Tapasme Rangarao also as Action Committee Chairman. Request Agarwal ji to speak a few words. Who will be speaking from Surat branch? Agarwal sir, senior most leader, senior most leader and part of Bombay. Respected Shishpal Saab, Sharan Babu Jab, Mukesh Sharma ji, और all Agarwal ji, all other central leaders and regional leaders, Oi Babu ji, D.K. Kumar ji, और बाकी all other central leaders, thank you. और जो प्रोग्राम किया, बहुत ही सुसज्जित तरीके से प्रोग्राम किया। इतना बढ़िया प्रोग्राम
जैसे अभी एक्चुअली जब प्रभाकर जी हमारे डीजी थे उस समय काफ़ी एसोसिएशन को डैमेज हुआ था, उसके बाद कोरोना आ गया और उसके बाद जिस तेज़ी से हम लोगों ने वो किया है प्रोग्राम्स को, जो कोरोना के बाद ही इस तरह के प्रोग्राम होने चालू हुए। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सूरत टीम की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. From Baroda team, represented by H.N. Prasad, sir. हरी भाई Prasad, sir, take a few words, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. डैश पर उपस्थित माननीय सेंट्रल लीडर श्री शिषपाल जी, मुकेश शर्मा जी, हमारे एक्स लीडर श्री चरण बाबू सर एवं रीजनल लीडर ओपी बाबू सर एवं डी.के. कृष्णा साहब एवं अन्य रीजन से आए हुए सभी लीडर्स को हम बड़ोदरा ब्रांच की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ साथ अपने रीजनल लीडर को हम धन्यवाद करते हैं कि हमें खास करके इनवाइट किया गया इस बड़े से आयोजन में भाग लेने के लिए और हमें मौका दिया है कि हम चलो यहाँ उन्होंने डैश पर हमें स्वागत किया। साथ साथ हम इस बात की काफ़ी सराहना करते हैं, खास करके जैसे रीजनल लीडर हमारे, जैसे कि पहले गुजरात में क्या था कि केवल अहमदाबाद में ही ब्रांच थी, तो हम लोग जो बड़ौदा और या सूरत जो छोटे जो थे वो कटे कटे फील करते थे। तो इस बात की हम काफ़ी सराहना करते हैं। उन्होंने में अभी बड़ौदा में ब्रांच खोला और सूरत में ब्रांच खोला, जिससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। इसके साथ साथ ही हम सभी सेंट्रल लीडर से भी ये आग्रह करते हैं कि जितने भी डिमांड उन्होंने लिखा है, उन्हें बनाया गया है, उसके प्रस्तुत करें और हमें सभी सदस्यों से भी आग्रह करते हैं कि ये केवल लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमें हर सदस्यों की जिम्मेदारी है कि इनको सहायता करें, इनके जो भी कार्रवाई करते हैं या जो भी डिमांड रखते हैं उसमें हम सभी की भागीदारी, क्योंकि सारे जो भी होंगे ये सभी हमारे यही बंधुओं या हमारे जो एक्शन है उनके लिए। इसमें सबसे जो बर्निंग इशू मुझे लगता है कि हमारी जो पे फिक्सेशन है ना वो हमारी सही होनी चाहिए। बाकी अगर पे फिक्सेशन हो गए तो हमारी आधी जो समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, Prasad, sir. That is from the branches of Western region. So we still have the detailed present agenda by Shri Babu sir, addressed by the special invitees and the regions. Before that, we'll have a short break where we request you to visit the stalls once again and take a health break. Thank you. We'll assemble 15 minutes back. That is by 6:40. By 7 o'clock, we'll start the subsequent session. Thank you. 15 मिनट के बाद, ठीक 15 मिनट के बाद हम लोग स्टॉल विजिट के दौरान इधर आएंगे। जो भी मंच में बैठे थे वो सारे वही कुर्सियों में वापस बैठ देंगे और बाकी ऑडियंस में जो है थोड़ा आगे आ सकता है वैकेंट कुर्सियां होने से, और थोड़ा 15 मिनट्स ब्रेक। मेहनत कर जा। अरे भाई ये कैमरा इसके भी फुटेज मिलेगा ना अपने को।
फिर ढूंढना पड़ेगा। बन गया ना।
एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने जैसे कह रही थी तुम मुझे बाल बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी कि इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू वेरी मच। एक गीत पेश करें, एक गीत पेश करें रेखा मैडम।
मिलेगा सर जल्दी किया फटाफट हाँ ये ऐड है तेना हेलो हेलो आवाज नहीं हेलो आवाज नहीं हे सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं ये दिल से करार करते नहीं ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल से करार करके लगती हो चांद का एक टुकड़ा हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको भरे तुमसा नहीं है कोई प्यारा सनम सोचेंगे तुम्हें प्यार करके ये दिल से करार करके तुमको देखेगी नजर जिस दिन तुमको देखेगी नजर जाने पे होगा क्या असर रखेंगे तुमको थैंक यू Thank you for the entertainment. I request all to members to assemble back in the
auditorium. We will continue with general body meeting. And people on the dais, Mr. Ishpal Singh ji, Sir Mukesh Sharma ji, Charan Babu garu, Saranand sir, Ishpal Singh sir, central team, Anubda, Mukesh Sharma ji, Mukesh Sharma, President, Charan Babu sir, Chief Advisor, Rajesh Kumar Agarwal sir, let us all reassemble on the dais. We will continue with the GBM. Deepesh da. इतना प्यार से पूछता है। Mukesh Sharma ji, President sir. All members are requested to reassemble in the auditorium. We will continue with GBM. Volunteers are requested to please send the members into the auditorium. Volunteers, please ensure all members come into the auditorium. We are continuing with the GBM. उसको वहीं से करेंगे, डिस्टेंस से करेंगे, शिक्षा नहीं कर बाद Request members to reassemble in the auditorium. राजू दकोड़े साहब, आपका जेईस का टीम 70 लोग जो है ना है, 7 लोग दिख रहा है. जेईस, could you please ensure your friends are here? There are hardly 10 or 20 of you. Rest of 70, rest of 50. मुकेश शर्मा सर, आपका इंतजार है. रजिस्ट्रेशन हो गया होपफुली. जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जरा करवा दो. अज्यूम दैट जिसको ऊपर जो लैंड या टांग रहा है वो सब रजिस्ट्रेशन किया होगा, क्योंकि जो गिफ्ट एक पेंडिंग है वो रजिस्ट्रेशन वालों को मिलेगा.
गिफ्ट मिलेगा खाना खाने के बाद। अच्छे से खाना खाओ तो लिफ्ट उठाने के लिए आपका पास शक्ति आएगा। थैंक यू सर। Please reassemble into the auditorium. We are starting with GBM. We will continue with, not starting, we will re-continue with GBM. I now request Shri Babu Ovi, Regional Secretary, Western Region, to place the agenda before the GBM. Thank you. Thank you, DK. Respected President of Western Region, DK, our most respected Mukesh Sharma ji, Central President, our dearest and more respected Engineer Charan Babu ji, who is the Chief Advisor, the Western Region's hero and now All India hero, who is leading the CPWD Engineers Association, Engineer Shishpal Singh, our General Secretary, Engineer Saravanan Ayyakutti, our dearest friend and Southern Region Secretary, Anukumar Chakrabarti ji, Chakrabarti, Regional Secretary, Eastern Region, Rajesh Kumar Agarwal ji, Srinu Gorla, and Prasanta Das, or Rajadesh Ghosh, Bhaskar ji, our special invitees, Engineer Dibesh Pradhan, D. Datta, Sneha Singh Meena ji, or Mahavir Singh Sajwansh on dais, and all my dear friends, leaders of sister organizations. I am now seeing our friend from Baroda, Surat, Narayanan Chinnan, who is leading the staff association, and all other sister organization leaders, particularly our close to chest organization, CPWD Junior Engineer Association, Mazdoor Union, EDSA leaders, and all other sister organizations, SC/ST Association, wherein almost all the leaders are from CPWD Engineers Association. And my dear friends from Delhi, Kolkata, Chennai, as well as all our branches from Chhattisgarh state, from Madhya Pradesh state, Gujarat state, Maharashtra state. Now we have added 5 branches. Three branches were newly added to Western region, and 4 regions election already conducted. Now that is in Maharashtra and Gujarat. Almost we have completed our journey, and now pending is Madhya Pradesh and Chhattisgarh. For a long time our friends are calling. I am very happy to see that our friends from Chhattisgarh, Bhilai, Raipur, Bhopal, Indore, Nagpur, Nasik, Goa, Ahmedabad, Baroda, Surat, all are here. This is a good sign. And this year, the CPWD Engineers Association Western Region has taken a mission. It has taken as a mission that the organization has to be developed at the grassroots level. For that, we are activating all branches and units. We are trying to
go to each and every places and reactivating and choosing very good, vibrant leaders. Those who are, all of the engineers in CPWD are all capable, but the thing is that some of their leadership qualities are underutilized, or either they are not being utilized properly. So we are finding the CPWD Engineers Association is a service organization, and our service to the cadre is very much required. As day by day, the administration is becoming a top-heavy one, and more pressures are percolating to the grassroots level. So there needs a unity, because in general it is a practice that the administration is not much bothered about the service issues, cadre issues of the assistant engineers or their promoted executive engineers. We are having several problems. So for that, if any of the issues are to be addressed, that requires the strengthening of the organization at grassroots level. So wherever I went these last 2, 3, 4 years, one thing I used to repeat, many of my friends on dais are aware, that our dear Charan Babuji's contribution to this organization is that for the last 2 decades, he made this organization alive. Whereas throughout the country, when many of the service cadres, where they were having vibrant organizations, the organization almost in a sine die condition or almost exit stage. So his contribution to make this organization alive, that is greatest. That is why wherever we go, we hear the name of Charan Babuji. His contribution to this organization, his sacrifice to this organization is unparalleled. That is why, as per the decision of Goa Apex, we have still with us Charan Babuji as our chief advisor. And I am very happy that today at Central we are having a very dedicated team, tirelessly working for the cadre under the leadership of Engineer Shishpal Singh. And it was the proposal of Engineer Charan Babuji that after his departure from this cadre, Shishpal Singh is the only person capable to lead this organization, and it was proven also. And Shishpalji was already equipped with more than 3 decades of associational activities, not only in Western region in various capacities as JEs and Engineers Association, but also as the All India leader in CPWD Junior Engineers Association. When he was the leader in JE Association, the greatest victory, greatest achievement was there of the third cadre review, through which, and 80-20 also. Through which, now today in front of me, there are junior engineers, those who are sitting here can dream that after 4, 5, 6 years, they can become assistant engineers. The greatest service or greatest achievement of this cadre, for your information, when I joined in through 84 examination in 86, I took over charge from a junior engineer who had completed 28 years of service. When I also got promotion, it was more than quarter century. So now that period has gone, and now you are able to see limelight in your, some ray of light in your future for the first promotion. But after getting the first promotion, still we are having a stumbling block. The assistant engineers are having the greatest issue of the lowest pay scale of a gazetted officer under Government of India, and which is only equivalent to the inspectors of income tax or central excise, whereas inspectors and probationary officers like posts were equivalent to junior engineers only. So these post scales, our scales were rather advanced in a retrograde direction only. So scales were reduced, the promotional avenues are also very bleak. So we are having immense issues. For these issues to be addressed, the association has to be developed at the grassroots level. There are few agenda points. These points are not new, but we are
reasserting these issues as an agenda of this general body of Western region. I'm just placing, I'm not going into detail because each one of you are aware about the gravity of the situation. I will just read out the brief only, and our General Secretary is there to speak about a lot about these issues and his path in the direction of all this and the latest position about these demands also, but still to support the central office and also as our key issues. I will just read out the main agenda which was resolved in our regional executive level meetings, because we are having a practice of having every month at least one executive committee meeting in Western region, and in those executive meetings, whatever resolved, that is being placed in front of you for your adoption. That is minimum initial pay scale with a grade pay of 5400 PB2 equivalent for assistant engineer. At the moment, 4600 is the grade pay, which is very low, and 54 PB2 minimum what we are asking, at least that much we are supposed to get, because PB3 5400 is the scale of a group pay recruited. So along all these pay commissions and the courts repeatedly, even Apex Court also repeatedly told that even though you are doing the same duty and responsibility, you cannot have the parity with the group pay, because that category is totally different. So that is why, as we are doing the similar duties and having the same responsibilities, we are asking the grade pay of PB2 and the care review proposals. For your kind information, as it is already on record, there was always an attempt to go single-handedly by the administration for a group pay cadre review. And always they faced a lot of hurdles. Last time also it happened. DOPT has suggested that whenever you are making any proposals for group pay separately, it is not acceptable. That has to be a holistic one, because your cadre is not in isolation. In STS cadre, the assistant engineers are coming 2/3, so almost the 2/3 of the group A services are being drawn from the group B engineer. So holistic view has to be there. Now it is learned that with the effort of our central leadership and all, otherwise also as a part of the justifiable observation from the DOPT, the proposal by the group A without taking us into the consideration of CPWD Engineers Association and the cadres, now it is turned down and it is lying, and we had submitted our proposals recently about our cadres, the future, which will ensure us with 2 minimum promotions in our life. We are not asking any sky. Group A officers are normally having at least 4 promotions in life. We are also citizens of this country. We are also engineers of this department. We are also having the right to existence. So we are just asking for give at least 2 promotions in our life. And at an average, we are having 35 plus years experience. In 35 years, if you cannot give, now the MSCP is in existence, which has taken away all our benefits of SCP, so at least you give us 2 promotions. That is our demand, to ensure 2 promotions, and in such a way you make some cadre review proposal. That is our second demand. Third one is, there is a long-standing one, proper fixation of pay scale as on 1/1/2006, when the scale was upgraded from 6,500 to 7,450 and the 6th CPC. And there was clear-cut orders, and there were many court judgments in our department, and some finance ministries and others observations and audit observation. The fixed given pay also withdrawn, and many people are facing the recovery also. There is court case, and this issue is also, the latest position will be explained by our General Secretary. This is our demand. And one most important
this point was raised during when our General Secretary was also, Charan Babuji was in center, he also tried his level best during his period. Now he is having more time, I think, and he will be in a better position to guide the present organization. And vibrant leaders like Sharmaji. Sharmaji is a very efficient leader. We are seeing him for the future in Central PWD, Engineers Association in the forthcoming years, after we all are now becoming all people going to retire in the other couple of years, many of us. So Sharmaji and DK like leaders are there. You have seen now DK का कमाल क्या है आप देखते हैं, वैसे leaders हमारे सामने हैं. और having left out service of, now I remember 4 years back, Charan Babuji has declared from the stage of Nirman Sadan, Shishpalji has to be the leader. We requested him, don't take any promotion to a superintending engineer in your home state, continue. And he told, no, after me, now Shishpal will take over and that will be my effort. Now I give a proposal now here to the central office and all the regional offices. Now you are seeing a silent leader and one of the best gem of a personality who can take up any kind of an activity in the forthcoming years for the central, that is DK, Engineer DK. So there are leaders, not only DK, there are many leaders elsewhere also. One person is just clapping there, Sharon and Ayakuti, I am seeing next to Piazzi. Next to Charan Babu means next to Shishpal Singh Lake. So, and there are leaders. We are not having a dearth of leaders. There are very good leaders in front of us. You see one silent person is sitting there, Mr. Bhaskarji. Such a great leader. He is a very big trade union leader, taking classes for throughout the year. He is spending for the service organization. There are many leaders amongst us. So I am not worried about the future of at least CPWD Engineers Association in Delhi. But those who are having capacity, they should give their level best every day. Now we are also in the western region, even though we are sitting every day, there will not be any purpose. But Delhi, Shishpal, this hand is to be strengthened. All efficient people should contribute to their level best and come forward. And this agenda, the next agenda I am coming, pending issue like that is again bunching relation, modification of transfer posting issue, that is a burning issue. I am telling you, I am requesting Shishpalji, we want this your help, esteemed help for this thing, because we try our level best. Even though there were some clear-cut guidelines after Prabhakar Singh, some guidelines were diluted, and now the policies are being picked and chosen by the administration in their favor, and sometimes even very genuine demands are not being materialized only because in the name of 3 years service, 3 years period in station also. Earlier it was 10 years, now in 3 years period for Mumbai like place it is very difficult. Now Shishpalji has taken up the matter. I was told there is some advancement in that, and that also is a burning issue in western region. There are genuine cases still pending. Some of my members were asking me why you have not taken a meeting from the SDG. For your kind information, in the last 4 years, at least 5 meetings were held with SDG, 2 meetings were in very detail with a list of the people, those who are affected and whose cases were not addressed. Last week, twice meetings were there, not specifically with each cases, because the specific cases were already given, with the list was given. Last time he has assured whatever pending cases are there which could not be addressed in the last rotational transfer and hard case committee, that will be definitely looked into. That is my word. He repeatedly told us again and again, if we are going, it is not very good. Now last week again we tried, we wanted, our people are demanding the same thing. So he said it is, I am aware about this and I will try my level, but this is a word from the ADG Vanibhushan Singh sir. Today he could not come. He had some private official matters. Otherwise he was supposed to come. He was kind enough to send his representative here. But these are all because some good officers are there, some favorable things are happening. Otherwise, if the policy is favorable, then we should not be worried about. So
favorable policy is required. Now, Nirman Sadan, we are fortunate that Mukesh Sharma ji is there sitting. Very fortunate because I think there is no week in which I have not contacted Mukesh Sharma ji for some or other matters related to the Nirman Bhavan issue. So he is spontaneous in his action. So I am happy that in future these issues also will be taken up by him. And that is a common issue, you know, that at both promotions, majority of us are, even today after retirement of Charan Babuji, almost serving as executive engineer in 2 decades, still he says advocism is not regularized, I think. It is very unfortunate. If a group officer is becoming an executive engineer in 4 years, in advance only their service serving 20 years also as an executive engineer, still they are now in ad hoc. No regularization happening. It is because of some court cases that is intentionally being taken up by some of the vested interested people. So we should find now there were several instances of favorable decisions from UPSC, DOPT and all other statutory officers, but it was not Sagar Singh Photare ji has also mentioned it. He was representing, and earlier in Apex also, it was an unofficial thing. We have taken him as the representative of the central zone. Now when I discussed with the Shishpal ji, let it come from your regional general body. So today in this general body I am proposing that there will be a central zone under Western region. This will be the first step, and this will be comprising Chhattisgarh as well as Madhya Pradesh people and headquartered in Bhopal. And they will have branches throughout Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So this is the proposal. This proposal also, I request the adoption of all you esteemed members here. And these are the major points for which we expect persuasion from our central leadership, and with this showcasing of the strength of the Western region. With this showcasing of the program, in presence of all these leaders, we are only showing, sir, that we are with you. सब लोग मिलके बोलिए, हम सब शिशपाल जी आगे बढ़िए, हम सब एक है, हम आपके साथ हैं। मुकेश शर्मा जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। So, dear friends, if you are finding this program as a successful one, it is not because of engineer DK or engineer Babu or engineer Rangarao, or it is because of you all. Because your presence, that has only brought success to here. Many of us are there. You might have seen one of the happiest person today on the success of this program was engineer Tapan Kumar Mantal. He was here. I could see his face. You might have also noticed, in spite of having such a severe illness, after taking permission from doctor, he came here. So he was very much longing to be here. There are many people here. Those who are physically challenged also, those who are having health problems. I salute all of you, those who have come and attended and made this a grand success. And this would not have been possible without the help of all the star honors here. We are calling them as partners, not just sponsors. They were partners to this event. And this would not have been possible without the help of all the star honors here. We are calling them as partners, not just sponsors. They were partners to this event. And they were partners to this event.
I asked each and every stall today, are you happy? Yes, sir, we are definitely happy. I said, then we are also happy. So their contribution, because for everything there is a financial matter is also involved. So not just for finance. So they are much happier. Whatever they have spent, it is nothing for, yes, it is whatever they have received is more than what they have spent. That is the feeling. And as just a token of love, we have also given some. I am sorry that I could not, or we could not, the central, this leadership could not give more time to the stall, but they were telling that such important presence of the engineers only we never get. Even if we spend lakhs of rupees in a 5-star hotel, we get hardly 50 engineers, but here they are getting. You know, for your kind information, we had arrangement of 350 lunch only. But there was a requirement of 550 lunch here, and I think none of you missed in that, even though there was little delay because there were some calculation, some changes and all, but somehow Rangarao has managed the show, and I am very happy that all very dynamic leaders are here with us. So thankful to each one of you. I am very much thankful to, it is not that I am honoring, we are honoring Divesh Pradhan or Detta here. Rather, they are honoring us. Detta's presence, Divesh Pradhan's presence, in couple of days notice they are here. So their love towards Western region brought them here physically. They worked here. I remember 1989, 90, 91 years. They were star barriers here. Vibrant, very active in Junior Engineers Association. They were the pillars here. So such people are required. And afterwards they left. We have seen. You see, this program is by a Western region. But Bhubaneswar is just a branch. Majority of us, now it is on. It was a branch, I said. When it was a branch, only few months back, they arranged a program, marvelous. There was no such branch could do it. So such kind of leadership is sitting. And his heritage is also like that. He is a grandson of an ex-chief minister sitting here. And Datta, a great leader, many years he led the Junior Engineers Association as Engineers Association also. So I am not here to, if I want to say about each and every person, I can say many things. Sajwan is a great leader from Chandigarh. You see, now Chandigarh is very active behind the central leadership for all kind of support. So salute to each one of you, central leadership, branches, son, all my dear friends, all sister organizations. If I left anybody's name, please forgive. Thank you. And I place this in front of you for your adoption. I hope you will accept it unanimously. Is there any doubt? We can raise the question, no problem. Whether it is acceptable, adoptable. Okay, unanimously adopted in this general body, and it is based on this adoption expectation. A memorandum was handed over to Minister, and he said that he will be taking his whatever level he can do, he will be doing it. His close person had also given me promise. Shispalji had 2-3 meetings recently with him. He was very sympathetic, empathetic to this organization. Let us hope for the best. He knows, because his career was started as a trade union leader. So he knows our issues. So that is why we brought him here. We are normally not interested in bringing to political leaders, or we are not having any allegiance to any politics. So with this, let me conclude. Sorry that I have taken little more time than given to me by DK. So, okay, thank you. CPWD Engineers Association Zindabad. CPWD Engineers Association Zindabad. हमारी एकता जिंदाबाद. जोर से बोलो, प्यार से बोलो. हम सब एक है. हम सब एक है. Thank you. When we called retired leaders for our felicitation, Sikdar Sahab was not available. He just reached, I think, Bombay at 6 p.m. and he kindly made it here. Sikdar Sahab, please come on and dais, sir.
while Sikdarji is coming, is our very close friend. Many of the retired officers could not make it. I just missed one thing. My very dear officers are sitting in front of us from the administration, and we are very happy to the Western Region administration. He will also, Ajit Kumar sir will convey this message. I am definitely sure about it, that we are happy that the administration was represented here properly. We are very much thankful to CPWD administration in Western Region. उसका नाम क्या बोला? As DK has already mentioned, there were 12 retired officers of this year. We are very painful to give this because they are all gems in our organization, gems in the department. When they are leaving our cadre or department, it is really painful, but we are all wishing them. And this is a practice which we are following every year for the last 20 years continuously. Whoever is retiring, we give them this as our respect like this. And those who could not make up, around 11 people could not come today, even some issue, health issue and all. So we will be sending their our token of love to them personally. I now invite, it's an honor to invite Shajit Kumar sir onto dais to accept felicitation from our side. Please, sir. Shajit Kumar, SC. Shishpal ji aa rahe hain. Request Sridhar sir to please come on to that. Sridhar sir, please sir. I request the southern region to speak a few words.
प्रणव कुमार Sir, Saranand sir, your inspiring words. Respected President of the Central Committee, Sri Mukesh Kumar ji, Sri Shishpal ji, General Secretary of our Central Committee, and all other Central Committee office bearers, and Sri DK sir, President of Western Region, Sri O.V. Babu ji, Secretary of Western Region, and all other office bearers of Western Region, and the regional offices bearers of Eastern Region led by Sri Anup Kumar ji and team, and the entire members of the Western Region gathered here. Very good evening to all. On behalf of Southern Region, we have three office bearers, myself, Regional Secretary, and Mr. A. Bhaskar, Vice President, and Mr. Simeon Jaira, Joint Secretary. We have represented the members of all Southern Region of Engineers Association here to convey our best wishes during the occasion of this annual general body meeting of the Western Region. So, जैसे हम आए थे इधर मुंबई में, हमको ऐसे फील ही नहीं हुआ है हम कहीं मुंबई में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहे थे हमको चेन्नई में ही, हमारा मदरलैंड में ही बैठे हुए हैं. वन ऑफ द रीज़न बीइंग, पिछले जो जीबी में भी हमने बताया था, हमारा चेन्नई में रीजनल ऑफिस बेयर्स का जितने भी ऑफिस बेयर्स रहे हुए हैं वो सब शुरुआत का नौकरी बॉम्बे से ही ज़्यादा किए हुए हैं, वेस्टर्न रीजन से. नॉट ओनली दैट अलोन, नॉट द ओनली रीज़न, जो शिशपाल जी हैं वो कहीं पर भी रहे हैं, वो हमको ऐसे ही फील होता है हमारा मदरलैंड में हम बैठे हुए हैं. वो ऐसा ही कि डिफरेंट पर्सनालिटी है. जब जेई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा था, उन्होंने साउथ का खानर का एक जेई को बाय पर्सन जानते हैं, और उसी टाइम ही उन्होंने बहुत सोच समझ कर बहुत लोगों को नर्चर एसोसिएशन के लिए नर्चर करना शुरू कर दिया. कभी किसी से हमको आज की डेट में 10 मिनट 15 मिनट भी बात करने के लिए टाइम देना बहुत मुश्किल होती है. ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ कर 1 घंटा 2 घंटा रोज बात करते हैं. काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं सदर्न रीजन में. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर. दिस अदर दैन टू हमारा अजीत कुमार साहब हैं, वो काफ़ी चेन्नई में थे, अभी मुंबई में भी है, और आपका एसडीजी अभी आज की डेट में हमारा सदर्न रीजन का भी एसडीजी है. सबसे पहले तो शाम को अपने इडली वड़ा खिला लिया, उसके बाद तो हमको लग रहा है हम चेन्नई में ही. थैंक यू वेरी मच फॉर, एंड डीके सर, वंडरफुल अरेंजमेंट्स for this tech talks. As you rightly pointed out in the morning session, we also endorse, we request the Central Committee, let us make the tech talk as our brand name for wherever it takes place, whether it is southern, east or west. Let us try to take it to the next level in the upcoming days also. Slowly, in each and every this technical session, we are one step going upwards. Hope the same sense will prevail in the upcoming days also. और आज तो वेस्टर्न रीजन बाबू सर और डीके सर, शिशपाल सिंह जी बहुत एनर्जेटिक तो है, सब जानते हैं. बाकी सारे लीडर को भी आज आप लोगों ने टच चेक कर दिया कितना एनर्जी है करके. उठने नहीं दिया सीट से, सबको खिलाकर वहीं पर ही बैठा दिया, पूरा जान दे दिया. सो इट इज़ अ वंडरफुल मेमोरेबल इवेंट सर. हम आपको बाबू साहब को जो बोले थे, हम आपको वादा करते हैं, ठीक है, जितना हो सकती है उतना with the same sincerity and spirit, we will try to take over the association, and we will try to keep alive the association in the upcoming days also. As you rightly pointed out, there are many people who are ready to and willing to work for the common cause here. So as a leader, they don't want to come forward, but there are many people, good hearts here to sacrifice their time and energy for the association. So with this word, I once again congratulate the entire Western region for having arranged such a massive function for the 3rd year it seems. So आप सबके लिए एक ही रिक्वेस्ट है,
शहर में एक ही जंगल में एक ही शहर होना चाहिए. So I request all the Western region people try to see that there should be only one share in Western region. वो CPWD Engineers Association ही होना चाहिए. और बाबू सर and team very nicely arranged this program. Particularly one thing, very admired thing is not only Engineers Association. You have geared up the CPWD Junior Engineers Association, other sister concerns, and they are all get the full spirit, and they are still sitting till the end of the function. It is a very great event. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much. Thank you, Saranand sir. Like he said, the secret was that to keep them sitting, you gain not weight, you gain knowledge and then some weight. Doesn't matter. You can always take a jog or running tomorrow. Point was to keep you engaged here, have a look at the presentations and have a look at the stalls. So hopefully that has been what the response took from the stall owners. Is that the feedback is fantastic, and we thank you all of you sincerely for the same. Now request Shanukda from the Eastern region to speak a few words, sir. इसके बाद चरण बाबू सर बात करेगा, फिर शिशपाल जी बात करेगा. Respected central leadership, respected Advisory Committee of Central Body, respected Western Regional Leadership, respected Western Regional members, and all brother and sisters, हम लोग का कैडर का सबको मेरा सैल्यूट, मेरे को ये मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर बोलने के लिए, इसलिए मैं आप लोग को सबको सैल्यूट करता हूं. मामला है जो ये जो जीबीएम चल रहा है, ये अपने आप को ही खुद डिस्क्राइब कर रहा है. इसको लेकर क्या बोलूं. और साथ में ये भी पता है आप लोग बेचैनी से वेट कर रहे हैं सेंट्रल बॉडी का बात सुनने के लिए. हमको स्पेयर करना इस टाइम में रियली आप लोग के लिए दिक्कत होगा. फिर भी ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं अपना बात. प्रॉब्लम यही होता है, चीफ एडवाइजर अभी भी जब सामने बैठे रहता है हाथ भी कांपता है, गला भी कांपने लगता है. आपका जो एजेंडा है शायद 5677 एजेंडा है, उसमें ईस्टर्न रीजन का हिसाब से मेरा पास तो नंबर 1 एजेंडा है. एजेंडा नंबर 4, रिलीज ऑफ पेंडिंग सैलरी पेमेंट्स टू 6 AEs ऑफ वेस्टर्न रीजन एंड रेगुलेशन ऑफ देयर सर्विस पीरियड. कोई भी बंदा हो एसोसिएशन का, चाहे सेंट्रल से हो चाहे रीजन से हो, जो एसोसिएशन का रिकॉग्निशन के लिए कुछ करता है, एसोसिएशन को आइडेंटिटी के लिए कुछ करता है, तो उनका डिमांड पहले होना चाहिए. उसका साथ कोई इंसाफी नहीं होना चाहिए. इसलिए ईस्टर्न रीजन के हिसाब से ये मेरा नंबर 1 एजेंडा है. नेक्स्ट में आ जाता हूं. एक ही है मोरल लेस ऑल एजेंडा आज का दिन में सब जुडिशियल है. एक एजेंडा है जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का ऊपर, जिसमें मेरा सेंट्रल लीडरशिप हार्टिली कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई एक टाइम में कोई एक डायरेक्टरेट ने एक सेंसिटिव पोस्टिंग का गाइडलाइन को ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग पॉलिसी का अंदर गोल मिल दिया. ये सही नहीं है. इसका तो अपोज होना चाहिए एंड इसको रिपेयर भी होना चाहिए. जैसे डिपार्टमेंट आपने देखा होगा जो धीरे धीरे रिस्ट्रक्चरिंग का पहले वाला जगह में धीरे धीरे आ रहा है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आना चाहिए. मिनिमम इनिशियल पे स्केल ग्रेड पे ₹5400 PV2. हाँ, एकदम सही है.
हम लोग का डिमांड शायद पहले कुछ था, अभी कुछ चेंजेस आ रहा है, हो ही सकता है। चेंज ऑलवेज एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये डिमांड से आगे और चिंतन होगा। डिमांड को चिंतन करने का टाइम प्रीवियस कुछ एपेक्स का डिसीजन, हाई लेवल कमेटी का डिसीजन, ऑर्डर 2012 का जो डेवलपमेंट है, एंड अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन हो, हमारा कैडर में कोई वर्टिकल स्प्लिट नहीं आना चाहिए। बस ये सब पॉइंट सोच के इसको आगे बढ़ाना है, नथिंग एल्स। कैडर रिव्यू ग्रुप भी है, वो तो चल ही रहा है। उसमें लास्ट टाइम हम लोग को सर कौन सा था लास्ट कोची जीबीएम से कुछ पेपर मिला था, तो मैंने आज ही सेंट्रल लीडरशिप को भी रिक्वेस्ट किया। उसमें कुछ डाउट्स हम लोग को है, जो और कुछ डिटेल हम लोग को चाहता हूं, जो कैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट को बढ़ाया गया और क्या क्या किया गया, क्योंकि सिचुएशन बहुत चेंज है। 7-8 साल में जेई से एई बन रहा है, जितना जेई आ रहा है उसका बहुत छोड़ के चला जा रहा है। एडहॉक 2 प्रमोशन शायद कुछ ही बंदा को मिलता है जो रेगुलर एग्जाम से आया है। बहुत दोस्त, बहुत सीनियर्स एडहॉक में ही रिटायर्ड हो गया, जिसका सेकंड प्रमोशन का कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दिया। तो ये सब पॉइंट को जरूर हमें कॉन्फिडेंट हूं जो सेंट्रल लीडरशिप जरूर कैडर रिव्यू का प्रपोजल में ये सब को जरूर इनकॉर्पोरेट करेगा। एंड एक इशू है बंचिंग, भयानक इशू है। हमारा एक का बाद एक दोस्त रिटायर कर रहा है। ये 29 फरवरी एक दोस्त रिटायर किया जो एसोसिएशन में बहुत ही डेडिकेटेड था। वेस्टर्न रीजन खास करके तो उनको बहुत ही पहचानता है। अनंत कुमार राय उनका नाम है। इतना दिन पे एंड अकाउंट्स ऑफिस बोलता था रीफिक्सेशन करके भेजो, डायरेक्ट रिकवरी अवार्ड को यूज नहीं करता था। कोर्ट का वर्डिक्ट है रिकवरी नहीं किया जाएगा। इवन देन आज का दिन में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस सीधा लेटर इशू कर रहा है जो उसको रिकवरी करो रिटर्न। तो ये मैं सेंट्रल लीडरशिप को बोलूंगा इस तरफ थोड़ा ध्यान देने के लिए। कोई मैटर अगर सब जुडिशियल हो तो कोई भी डिपार्टमेंट कैसे ऐसा लेटर इशू कर सकता है। बाकी फॉर्मेशन ऑफ जोन ऑफ महाराष्ट्र, मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन, बनिए, एसोसिएशन को और मजबूत कीजिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, एसोसिएशन कोशिश करता है, लड़ता भी है, लेकिन ये लड़ाई के लिए वो 4 लीडर काफी नहीं है। काफी है आप लोग का साथ। अगर वो साथ आ जाए और बाई हार्ट आ जाए वो साथ, तो उम्मीद रखता हूं हमारा लीडर्स जरूर सक्सेस होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। थैंक यू दादा। मैंने दत्ता जी को बुलाने के पहले बताया कि चरण बाबू साहब और शिषपाल जी का भी पेंडिंग है। इसका मतलब खाली 2 है, और भी लोग हैं। तो अभी चरण बाबू साहब बुला रहा हूँ, प्लीज गिव ए स्पीच, गिव ए शॉर्ट स्पीच सर। यू आर नॉट यूज्ड टू गिविंग लॉन्ग शॉर्ट स्पीचेस, वी रिक्वेस्ट यू। थैंक यू डीके। हाँ, मंच पर आसीन हमारे सारे कोलीग्स, है तो सारे छोटे भाई, इवन दत्ता जी भी अभी रिसेंटली रिटायर हुए, मेरे से छोटे ही है, और भाइयों और बहनों और अफसर साथियों,
हमारे बारे में बहुत कुछ बताया गया, आपको वैसे भी सब जानते, आप सब लोग जानते ही हैं। मेरी नौकरी मुंबई में ही शुरू हुई है 84 में। SSW ऑफिस CGO NXC बिल्डिंग 17th फ्लोर में बैठता था और वहीं से वानखेड़े स्टेडियम का क्रिकेट मैचेस देखते थे वो फिन्स के बीच में से। और उस समय लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होता था, रेडियो बगल में रख के कमेंट्री सुनते थे और देखते थे गावस्कर खेल रहा, कौन खेल रहा है। ऐसे मस्ती करते करते नौकरी शुरू किया। जब यहां से नागपुर गए 86 में, 87 में जब स्ट्राइक हुआ, हम सब लोगों ने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया, सारे जूनियर इंजीनियर्स, और 20 दिन के बाद हमारी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई क्योंकि हम लोग क्वासी परमानेंट नहीं हुए थे। हमारे कुछ साथी तो हो गए, 3 साल में क्वासी परमानेंसी होती है, 2 साल में कंफर्मेशन होता है प्रोबेशन क्लियरेंस के बाद। किसी कारणवश एज यूजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस, जो डीपीसी बैठना चाहिए क्यूपी के लिए, वो नहीं बैठा। हम लोग टेम्पररी रह गए और बहुत सारे लोगों को टर्मिनेशन नोटिस आ गया और सर्विस बुक में लाल इंक से लिख दिया गया, इन सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड। साथियों, सिर्फ 3 साल का नौकरी था उस समय हमारा, और डर नाम का कोई चीज मन में आया ही नहीं कि ऐसा कैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है एक अक्षर लिखने से, एक आर्डर से निकल जाएगा। हम खूब लड़ते रहे 20 दिन के बाद भी। 37 दिन के बाद वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ विद द कंडीशन कि जितने लोगों को सस्पेंड, वो डिसमिस किया है या टर्मिनेट किया है, वो सबको रीइंस्टेट किया जाएगा। वो सर्विस का 3रा साल था और सर्विस जब 3 साल और रह गया है तो वही सिचुएशन फिर आया मेरे साथ। वो प्रभाकर सिंह नाम का एक गणमान्य व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में बैकडोर से डीजी बन गया, दूसरा पोस्ट क्रिएट करा के, और वो दूसरा पोस्ट जो है पहला पोस्ट बन गया। अरेबियन ऊंट की कहानी सुनते हैं ना आप, वो मुंह रखने के लिए जगह दे देता टेंट में, तो धीरे धीरे टेंट को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। उसने पहले मुंह रखा, 1 महीने के बाद फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन ले लिया, फिर 6 महीना और एक्सटेंशन ले लिया और पूरा टेंट को तहस नहस कर दिया। सीपीडब्ल्यूडी विभाग को उसने जितना डैमेज किया है पिछले 150 सालों में, हम लोगों ने जो बिल्डअप करके आए रेपुटेशन, और वो बोलता ये था कि ये पाताल में है, मैंने इसको उठा लिया। 150 साल में विभाग ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया प्रभाकर सिंह ने 18 महीने में किया। वो क्या किया 18 महीने में हम सबको पता है, और उसी का खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी हो, जिसको सेंसिटिव पोस्टिंग का टेन्योर के साथ जोड़ दिया गया है, स्टेशन टेन्योर को। किसी भी विभाग में आप देखे नहीं होंगे, इनकम टैक्स में जाइए, पोस्टल में जाइए, टेलीकॉम में जाइए या सेंट्रल एक्साइज में जाइए, मैंने सारा बहुत कुछ वो मेरे पास रखी भी है वहां फाइलों में, एसोसिएशन में। क्लास वाइज सिटीज का, क्लास सिटी का पॉपुलेशन वाइज ABC, अभी XYZ मान लीजिए, जो भी HRA का मिलता है, तो मेट्रो सिटीज में वहां पे 12 साल मिनिमम होता है। फिर नेक्स्ट सेकंड मेट्रो सिटीज जो होते हैं, अहमदाबाद जैसा हो गया, नागपुर जैसा, हैदराबाद जैसा, उसमें 8 साल और उसके बाद 4 साल, 12, 8, 4, वो फेज्ड मैनर में टेन्योर्स होते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर्स का, जूनियर इंजीनियर्स का टेन्योर्स मुंबई और दिल्ली में शुरू से ही 10 साल था, बाकी सब बड़े स्टेशनों में 6 साल था, एक्सटेंडेबल बाय 2 ईयर्स। और लोग आराम से एक बार दिल्ली जाए, मुंबई आते तो 10 साल के लिए बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब सिचुएशन है कि 3 साल के बाद आप बस्ता बांध के तैयार रहिए। मिलिट्री में भी इतना नहीं होता, 3-3 साल में ट्रांसफर होते हैं मिलिट्री में भी, लेकिन उसको क्या मिलता है, सामान बांधने के लिए बंदे आ जाते हैं, एक ट्रक मिल जाता है, वहां जाने के बाद वहां पे दूसरे जगह पे अकोमोडेशन तैयार मिलता है, फैसिलिटीज तो साथ में देते हैं। लेकिन हमारा सीपीडब्ल्यूडी का आज ये हाल है, असिस्टेंट इंजीनियर का पता नहीं क्या बहुत बड़ा तोप है, इसको हर 3 साल में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो विभाग जो है बट्टा बैठ जाएगा। हमारा जो सर्विस है, आप जानते हैं कि नौकरी वहां जाएंगे साइट पे, कोई भी नया फील्ड पोस्टिंग होके आप ट्रांसफर होके आएंगे, 6 महीने तो आपको समझने में लग जाता है, ड्राइंग्स क्या है, पोजीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन क्या है, कहां तक बिल्स पहुंचा है, क्या करना है आगे, मैंने प्लानिंग करना है। और 2 साल आप काम करेंगे, फिर 2.5 साल के बाद आपका ट्रांसफर के लिए तैयारी करना, रेडीनेस लिस्ट में नाम आ जाएगा। इफेक्टिवली 2 साल आप एक कोई भी प्रोजेक्ट में रहेंगे तो क्या आप सीखेंगे, क्या उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे।
समझते समझते ही आप लोगों का टेन्यूर खत्म हो जाता है। ये सबका फायदा किसको होता है? ठेकेदार को होता है, क्योंकि कोई रेगुलर ऑफिसर ना होने से उसका पकड़ जो है इस काम से ढीली हो जाती है। आजकल वैसे भी ईपीसी मोड में हम लोगों का पकड़ वैसे ही खत्म हो गया। जूनियर इंजीनियर लुप्त हो जाने की वजह से असिस्टेंट इंजीनियर काम ज्यादा नहीं, अपना लिमिट से ज्यादा नहीं झेल पाता, इसलिए काम तो वैसे भी ठेकेदार के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। और एक ये जो प्रभाकर सिंह है, जब एसडीजी रहा है एनआर में, न्यू दिल्ली में, इसने एक महान आइडिया लाया, कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस। 2-2 साल 3-3 साल का इकट्ठा पूरा डिवीजन का मिला के एक टेंडर लगा दो। मुझे साहब लोग बैठे हैं, मुझे बोलते हुए कोई भी झिझक नहीं है। ऑफिसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक तो ठीक रहता है, उसके बाद एससी बनने के बाद एक्शन का पोस्ट को बड़ी चिंता करता है। वो चेकबुक चली जाती है ना, बहुत तकलीफ होती है लोगों को। वो चीफ इंजीनियर बन जाए, एडीजी बन जाए, एसडीजी बन जाए, लेकिन टेंडर अवार्ड वही करेगा। उसका बस चले तो चेकबुक भी अपने पास साथ में लेके चलेगा। ठीक है, बाप की बपोती है किसी का। एक नोडल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया, हर एक विभाग में सिस्टम है। ये टेंडर कॉल करने का सिर्फ 2 ही लोगों को पावर है, असिस्टेंट इंजीनियर को बहुत सीमित पावर है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फुल पावर से, चाहे वो 1000 करोड़ का टेंडर हो, कॉल करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। ये क्लास 1 को पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत होता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 10-11 साल 12 साल काम करने के बावजूद उस पोस्ट का मोह नहीं छोड़ते वो। और आप लोग बहुत मात्रा में एडहॉक ही सही, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के आ रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है। अब आज इस डिपार्टमेंट का दुर्गति का यही कारण है। 20-20 साल आपको एडहॉक में रख के आपका करियर प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर इन्होंने ऐसा हथियार डाल दिया। अपना तो प्रमोशन निर्माण भवन से कर लेते हैं, एक बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के बाद सीनियर लिस्ट में आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनका रास्ता जो है हाईवे पकड़ लेता है और हम लोगों को गलियों से बैकडोर से एंट्री करते 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 20-20 साल लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, चाहे वो पे स्केल हो, चाहे एमएससीपी हो, चाहे पे फिक्सेशन हो, एक छोटी सी चीज पे फिक्सेशन, हमारा विभाग तो ऐसा सोचता है कि जो भी ऊपर से आया, डीओपीटी से या मिनिस्ट्री से कुछ भी आ गया या एक पीओ से आ गया, तुरंत रिकवरी कर दो और एक सर्कुलर निकाल दो, भाई ये गलत हो गया, सबको वापस ले लो। काटने के लिए तो 1 मिनट नहीं लगाता, देने के लिए 1-1 साल लगा लेता है। कोई ऑर्डर आपके हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आ जाए आपका फेवर में, उसको इंप्लीमेंट करने में कितने साल लगा देते हैं और लगाते लगाते उसको उस ऑर्डर का महत्व ही खत्म करा देते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, डाइवर्सन के केस जीते हैं, उसका रेगुलराइजेशन केस जीते हैं, हाई कोर्ट से भी हमारा क्लियर कट ऑर्डर है, लेकिन उसका हाल क्या कर दिया अब आज देख रहे हैं आप। अब ये जो रेडीनेस लिस्ट निकाला, वो एसीसी का लिस्ट निकाला, उसमें बहुत सारे साथी, सीनियर साथी का नाम ही हटा दिया क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं किया। अब वो 100 केसेस उसमें क्रिएट होंगे, हमें आपस में लड़ाते लड़ाते वो मजे लेते हैं। तो साथियों, इस संगठन का बाबू साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमने बहुत कुछ अचीव नहीं किया होगा। 2/3 कोटा तो हमने लिया है 96 में। ये कभी किसी और विभाग में क्लास 1 का 1/3 और प्रोमोटिव का 2/3 कोटा नहीं है जो आज का दिन हमारे विभाग में है। वो अलग बात है कि हमें रेगुलर नहीं मिल रहा, लेकिन कोटा है। चाहे हम लोगों ने एसीपी लिया, उसको एमएसीपी ने खराब कर दिया, वो अलग बात है। 37 डेज का स्ट्राइक करने के बाद लेवल 1 लेवल 2 को खत्म करा के हमने ग्रेडेड स्केल्स लिया, 5 साल के बाद और 15 साल के बाद एक एग्रीमेंट लिया। ये तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, इन स्ट्रगल के दौरान हम लोगों ने कुछ पाया। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये विभाग के अंदर सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन हमेशा नंबर 1 रहा है और आगे रहेगा। ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप अपने मन से देखिए या कोई भी ऑफिसर से पूछिए, रिटायर्ड डीजीओ से पूछिए या करंट सीनियर ऑफिसर से पूछिए, इस विभाग में कौन सा संगठन है जो वाइब्रेंट है, सोच समझने वाले लोगों का है, सोचने वाले दिमाग वाले लोगों का है और मेहनत करने वाले लोगों का है। ये खासियत है हमारे संगठन का। साथियों, ये आपको बहुत गर्व होना चाहिए इस पे। छोटे से लेके बड़े लेवल तक, सेंट्रल लेवल तक जो भी ऑफिस बेरर है, एक्टिव मेंबर रहा है, वो अपना काम भी बखूबी निभाता है, साइट में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है और इसके बाद एसोसिएशन में जाके अपना समस्याओं का समाधान के लिए लड़ाई लड़ता है। ये मैंने बड़े बड़े ऑफिसरों को बोलते हुए सुना है कि ये संगठन के लोग बहुत पॉजिटिव है, अपना काम भी करते हैं और अपनी लड़ाई भी लड़ते हैं और कहीं भी हम डरे नहीं।
और आगे हमको छोटे भाइयों को, अभी जूनियर इंजीनियर्स भी यही हैं, कुछ साथी यहाँ फ्यूचर के लिए तैयार है, तो उनको सबको मेरे एक ही राय है, एज ए चीफ एडवाइजर जो भी नाम बताइए, क्योंकि 20 साल इस संगठन को हमने एज ए जनरल सेक्रेटरी दिया, टोटल करीब 30 इयर्स जब से मैं दिल्ली आया था 94 में, तब से इस संगठन के साथ जुड़ा हूं। डिफरेंट कैपेसिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 बार रहा हूं, फिर चेयरमैन एक्शन कमेटी रहा हूं, एक बार पीके मित्रा के खिलाफ लड़के हार भी गया हूं 2001 में। लेकिन साथियों, ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारा एसोसिएशन की खासियत है, ये और कोई संगठन में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस होता है, हर आदमी हमारे साथ लड़ने के लिए, हर एक, अभी पिछले बार ही आपने देखा 2023 में जो हमारे साथ ऑफिस बेरर है हमारे खिलाफ ही लड़े, पैनल के खिलाफ लड़े, लेकिन लड़ने दिया हमने। लड़ो भाई, खड़ो, अपनी ताकत भी पहचानो, लोगों के पास जाओ, अपना एजेंडा लेके पहुंचो और लोगों को कन्विंस करो, इलेक्शन जीतो। आज भी हम वही कह रहे, दूसरा संगठन पिछले 10 साल से लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है, हम 5400 दिलवा देंगे PB3 का, AWE से बराबर का स्केल दिलवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, पिछले 2017 से चल रहा है केस। मैं कहता हूं किस विभाग में आज तक ग्रुप बी को ग्रुप ए का स्केल डायरेक्टली मिला? कोई भी विभाग में, कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी पोस्ट के लिए 5400 PB3 का स्केल, AWE का जो क्लास 1 का एंट्री स्केल है वो ग्रुप बी को नहीं मिला। 4800 मैक्सिमम मिला है, 4 साल के बाद 5400 या PB2 में या PB3 में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिया है। और हम चाहते हैं कि दैट इज द ओनली रियलिस्टिक स्केल जो ग्रुप बी असिस्टेंट इंजीनियर को मिलना चाहिए, और ताकि हम लोगों का और AWE का बीच में जो अंतर है स्केल्स का वो काफी कम हो जाए, और 4 साल के बाद हम लोग AWE के बराबर हो। वो नेचुरली भी आप देखेंगे, RR भी देखेंगे, AWE 4 साल में एक्शन बनता है तो हम लोग 8 साल में बनते हैं नॉर्मली, तो 4 साल का अंतर वहां पे भी है, तो ये ठीक है। तो एक रियलिस्टिक डिमांड रख के उसको आगे बढ़ाना हमारा ये एसोसिएशन का खासियत है। और जब बात रखते हैं, मेरे को बड़ा गर्व है, ये जो कमिटी यहाँ बैठी है जिसको हमने पिछले बार पूरा समर्थन करके सपोर्ट करके जिताया, और मेरा तो सपना था कि शिषपाल सिंह जी को मैं 6-7 साल पहले ले जाना चाह रहा था। अगर ये आगे होते 6-7 साल पहले, शायद मेरे से ज्यादा अचीवमेंट कर लिए होते, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के बाद 17 साल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रहा और 20 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, तो उसमें और असिस्टेंट इंजीनियर का जो मन में जो भूख होती है कुछ करने की, कैडर के लिए कुछ अचीवमेंट करने की और एम्बिशंस की, वो थोड़ा सा एज के साथ साथ कम हो जाता है और पोस्ट के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आप हर एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितने बने हैं सब मेरे बात से सहमत करेंगे। लेकिन आज जो टीम है, चाहे वो शिषपाल जी हो, चाहे मुकेश शर्मा हो, चाहे हमारे तोमर जी हो जो आज नहीं आ पाए अपने बेटे के शादी की वजह से, और हमारे दोनों यंग ज्वाइंट सेक्रेटरीज मीना जी और श्रीनू जी, और हमारे वेटरन राजेश जी तो है ही जो खजांची है, ये जो टीम है ये बहुत ही बढ़िया, सशक्त और कर्मठता से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जो जो एजेंडा हमसे छूट गई है, या हमारे बीच में 3 साल जो वो रावण की वजह से खराब हो गया, लास्ट 3 साल, जिसका मैं कह रहा था शुरुआत का 3 साल में मैं डिसमिस हो गया, लास्ट का 3 साल पहले डिसमिस होते होते बच गया। सस्पेंड तो कर लिया था, चार्जशीट भी बन गया था, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट, लेकिन वो भगवान हमारे साथ है क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, इसलिए हम लोग बच गए। और तनख्वाह अभी तक नहीं मिला, लेकिन उसकी भी प्रयास चल रहा है और बहुत जल्दी मिलने की उम्मीद है, वो 12-13 महीने सस्पेंशन पीरियड का। तो साथियों, मिलके लड़िए। ऐसा हुजूम अगर वेस्टर्न रीजन के अंदर मिल जाती है, एक जनरल बॉडी में पूरे वेस्टर्न रीजन से चारों कोने से लोग आ जाते हैं, और ऐसे जो कार्यकर्ता यहाँ पे काम करते हैं, जो टीम है, यंग टीम लेड बाय ओवी बाबूजी, मुझे लगता है ओवी बाबूजी यहाँ से फाइनल टेन्यूर में है, शायद अगला टेन्यूर तो आपका भी, इसलिए पकड़ा रहे दूसरे को कि मैं इनको पकड़ाऊंगा उनको पकड़ाऊंगा। जो भी हम लोग यहाँ देख रहे सुबह से या उससे पहले से भी मुझे पता है कि यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हक और उसका जिम्मेवारी लेके उसको निभाने का कैपेसिटी रखने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता है, उनको पहचानना है, उनको आगे निकालना है और इस एसोसिएशन को सर्वदा आगे बढ़ाते रहना है।
मेरे को पूरी उम्मीद है ये एसोसिएशन वाइब्रेंट रहेगी, एक नंबर ही रहेगी इस विभाग में, और इस विभाग को भी चलाना भी हमारा काम है, इस एसोसिएशन को बचा के इस कैडर को बचाना काम हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मुकेश शर्मा जी, आपका टर्न एज प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद टीके जी। सबसे पहले तो मैं मेरा CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन का परिवार, इस जो स्टेज पे बैठा है और जो नीचे बैठा है, सबको नमस्कार। पहली बार मुझे मुंबई में अपनी बात रखने का मौका एज प्रेसिडेंट मिल रहा है। दोस्तों, आज दिल गार्डन गार्डन कहते हैं ना, बाग बाग हो गया। नई टीम, नए लोग, नए यंग तुर्क्स जो सामने आ रहे हैं, जो नई नई कमान संभाल रहे हैं, जो ओबी बाबूजी ने शुरू किया है नए लोगों को जोड़ने का अभियान। और मुझे लगता है कि हमारे और अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, जैसा अभी मेरे से पहले मेरे बड़े भाई चरण बाबूजी ने बताया, एसोसिएशन आज उस मुकाम पर है कि अब हमें दोबारा से जो लड़ाई 87 में पहला जैसा जिक्र बार बार करते हैं, जैसा इन लोगों को मौका मिला और शायद कुछ लोगों को मिला, हम लोग तो सिर्फ सुना ही है, लेकिन इन लोगों ने फाइट की और उसका सारा फायदा नए लोगों को मिला। क्योंकि जो जेईस का प्रमोशन एई का था वो तो 28 साल 25 साल, जो बाकी लोग हैं उनको 22 साल 24 साल में मिला, लेकिन उसका एक्चुअल फायदा जो इनकी लड़ाई का है वो अब आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। इसी तरह से जो लड़ाई अब हमारे कैडर को इस टाइम लड़नी है, उसका फायदा हमें मिले ना मिले उसको नहीं सोचना है, हमें सोचना है हमारे कैडर का फायदा कैसे होगा। और उस कैडर के फायदे में एक सबसे बड़ी लड़ाई है रेगुलाइजेशन। उस रेगुलाइजेशन की वजह से हमारा कैडर कम से कम 20 साल पीछे है। जो हमारे साथियों को सारे फायदे के साथ सब कुछ मिलना चाहिए था, डिपार्टमेंट ने वो अधिकार और वो पद कभी दिए नहीं, हमेशा उससे हमें वंचित रखा है, हमें आपस में लड़ा के रखा है। अभी भी बड़ी मुश्किल के साथ से पूरी कोशिश करके हम लोगों ने कोशिश की है और 2012 तक की डीपीसी AE2E रेगुलर जो यूपीएससी में होनी थी वो हो चुकी है, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों की। इससे आगे की तैयारी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा ACC मांगी है, लेकिन इसमें भी जानबूझ के डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ खेल करता है। जैसा भाई साहब ने बताया अभी, कुछ नाम छूट जाना, ये हो जाना, वो चाहता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ लड़के आपस में कोई ना कोई कोर्ट में जाए और इसको फिर 10-15 साल के लिए लटका दें। लेकिन दोस्तों, हमारा वादा है, पूरी कोशिश रहेगी कि हम डिपार्टमेंट को अपनी चाल में कामयाब ना होने दें और इस डीपीसी को जब तक हम पूरे के पूरे कैडर को जो एडॉक है उनको अप टू डेट नहीं करेंगे, हम चैन से बैठेंगे नहीं। आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। जिसका भी ACC का मैटर है, जिसे मांगा है उसको तुरंत पहुंचाएं और जो साथी जिनके नाम छूट रहे हैं अपना लेटर लिख के डिपार्टमेंट को जरूर दे, जिससे हम उसको आगे परसू कर सकें। ये बात तो हो गई रेगुलाइजेशन की। दूसरा, एक स्टेशन टेन्योर की बात हो रही है। साथियों, स्टेशन टेन्योर को चेंज करने की कोशिश हम करा रहे हैं, बहुत परसू भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें और भी अभी आवश्यक है। उसमें क्या है, जैसे एक अभी आपने देखा होगा, एक रीस्ट्रक्चरिंग में कुछ बदलाव के लिए एक डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई है। उसमें मैं और शिशपाल जी अभी मिले थे ADG साहब से। उन्होंने कहा था कि अपने जो भी प्रपोजल्स हैं वो आप हमें दीजिए, उसके बेस पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का विचार डिपार्टमेंट सोच रहा है। तो मैं बात करना चाहता हूँ, इतने बढ़िया इंतजाम इन लोगों ने किया है और अब मुझे लग रहा है कि हम वाकई में इंजीनियर्स बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छा इवेंट हम मैनेज करते हैं और इसी मैनेजमेंट को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों, एसोसिएशन कभी किसी के लिए कुछ नहीं करती। आप एसोसिएशन के लिए क्या करते हो, कभी इस बात को सोचना, क्योंकि एसोसिएशन मुकेश शर्मा शिशपाल नहीं है। एसोसिएशन हर एक वो मेंबर है जो सामने बैठा है। जिस दिन अपने हक के लिए अपने अफसर से लड़ना सीख जाएगा, एसोसिएशन सब कुछ पार कर लेगी। मेरी सबसे उम्मीद है कि सब अपने हक के लिए खड़े होंगे और अपने अफसर के सामने बोलेंगे कि तूने मेरे लिए क्या किया। मुझे ऑर्डर देने से पहले बता कि मेरे कैडर के लिए तूने क्या किया है। मेरे लिए जो केस MACP का होना था उसका जवाब तूने मांगा, मेरे से रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट तब मांगूंगा, पहले DG ऑफिस से पूछ मेरा MACP केस का क्या हुआ। जिस दिन मेरा मेंबर है अपने SC से और चीफ से पूछना शुरू कर देगा,
एसोसिएशन अपने आप वो मुकाम पालेगी और वो सब हमें मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you, Mukesh sir. So that's what we require. Each and every member should ask what you could do for the association. Then the association will be strong, very strong. I now request the General Secretary, Shishpal Singh, to address the gathering. Welcome, sir. सभी दोस्तों को नमस्कार एक बार फिर। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री PR चरण बाबूजी गारू, our most respected personality of our association, and a special guide for us, special inspiration for us. हमारी टीम में हमारे प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर YK तोमर जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो आ नहीं पाए आज, जॉइंट सेक्रेटरी समय और दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथी श्रीनु जी और फंड की पावर रखने वाले श्री राजेश कुमार जी। यहाँ पर उपस्थित ईस्टर्न रीजन से पूरी टीम रिप्रेजेंटेड बाय श्री अनूप चक्रवर्ती जी और उनके प्रेसिडेंट सुसंता दास जी। सदर्न रीजन से represented by their dynamic regional secretary Sri Sarvanand ji Ayakutti और उनकी टीम। हमारे मित्र भुवनेश्वर से प्रधान जी और हमारे रिटायर्ड नेता और बहुत ही एक्टिव श्री दत्ता जी, जिनका सफर भी वेस्टर्न रीजन से ही स्टार्ट हुआ था। हमारे साथी सेंट्रल टीम की तरफ से आए हुए श्री MS साजवान जी, वेस्टर्न रीजन की पूरी टीम लेड बाय इंजीनियर OB बाबू जी, माय फ्रेंड एंड गाइड, इंजीनियर D कृष्ण कुमार जी, यंग शशिकांत मौर्य जी, और अभी थोड़े दिन पहले चर्च गेट में यूनिट बनाई, ब्रांच बनाई, गांगुली जी का उनका चार्ज दिया और दूसरे साथियों को। एंड टॉप हिल में भी ब्रांच बनी। और यंग ब्रिगेड थोड़ा आगे आना शुरू हो गया है। और ये जो प्रोग्राम है, इसकी जो जिम्मेवारी है वो सबको दिखाई देती है कि एक एक मेंबर ने अपनी कर्मठता दिखाई, मेहनत की और अपनी जिम्मेवारी को समझा, तभी ये प्रोग्राम इतना भव्य, सुंदर और इतना अच्छा रहा कि सभी लोग अप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ये भी सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इससे आगे अच्छा करने के लिए और क्या करना पड़ेगा।
दोस्तों, हमारे बीच में श्री अजीत कुमार जी हैं, सुपरटेंडिंग इंजीनियर। मैं उनका भी आदर से नमन करता हूं। उनका साथ लगातार हमारे मेंबर्स को मिलता रहा है। बहुत सारे ऐसी शख्सियत रहती हैं जो केडर्स को बहुत प्यार करती हैं, उनमें से अजीत कुमार जी भी एक हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स उनको बोलते हैं कि आपको क्या मिलता है, तो वो बोलते हैं मेरे को सुकून मिलता है जब मैं सबकी हेल्प करता हूं। तो हमारे बीच में एक और सीनियर ऑफिसर हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। प्रणव पांडे जी हैं, आर्किटेक्ट, जो दिल्ली से आए थे, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं। हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो प्यार लगातार हम लोगों को मिलता रहा वेस्टर्न रीजन में, ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशंस, ग्रुप बी ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन, हमारे नारायण जी तो सूरत से यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो बहुत दिल में ताकत मिलती है कि सब लोग हमारे साथ हैं। आज मजदूर यूनियन का इतना रिप्रेजेंटेशन दिखा नहीं, लेकिन मजदूर यूनियन का भी साथ हमारे इंजीनियर एसोसिएशन को वेस्टर्न रीजन में लगातार मिला है। दोस्तों, संगठन, एसोसिएशन उस साथ का ही नतीजा है जब हम मिलकर आगे चलते हैं। हमारे दोस्त इंदौर से यहाँ पहुंचे, भोपाल से आए, रायपुर से हैं, ग्वालियर से हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, नागपुर, पुणे, और यूं कहें तो पूरा वेस्टर्न रीजन यहां पर है। और साथ में अगर ये जोड़ दें कि पूरा हिंदुस्तान ही इधर है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे यंग मित्र भी यहां बैठे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी थोड़े दिन पहले प्रमोट हुए और असिस्टेंट ईयर ज्वाइन किए। बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ईयर भी हैं जो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए प्रमोशन होकर, वो भी यहां हैं। दोस्तों, समय चलता रहता है और अगर हम समय के साथ ना चलें तो समय हमको माफ नहीं करता। और यही बात डिपार्टमेंट के लिए भी है, यही बात एसोसिएशन के लिए भी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं उस नाम को भी बोलना चाहता हूं कि जो संगठन में यहां लगातार सर्विस दी, संजय बसेड़िया जी, वेंकट नरसैया जी और सामने बैठे हुए विजय विश्वकर्मा जी, जिनका कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा और संगठन आगे चलता रहा, बढ़ता रहा और बैटन एक हाथ से दूसरे हाथ में चलती गई। इसी तरीके से हमारे चरण बाबू जी की बैटन हम लोगों को दी, ये बोला जाए तो हमको सीट दे दी गई। दोस्तों, सीट लेने से ही काम नहीं होता है। उनका जो ऑरा है डिपार्टमेंट में काम करने का रहा है, और जिन्होंने इस संगठन के लिए, इस केडर के लिए, इवन क्लास 1 केडर को भी गाइड किया है। यूं सोचे तो सीपीडब्ल्यूडी को गाइड किया है। बहुत सारे दोस्तों को याद होगा कि एक समय आया था बीच में, बहुत दिन पहले नहीं, कि प्राइवेटाइजेशन की हवा चल पड़ी थी और उस प्राइवेटाइजेशन की हवा में किसको आगे किया था? वो चरण बाबूजी ही थे।
उसमें जो टॉप लेवल की सीपीडब्ल्यूडी की पोस्टें हैं जिन पर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने यही बोला था कि आप चरण सर आप ही लीड कर सकते हैं इस मोर्चे को, आप ही सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, आप ही मंत्री से बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं बोलता, लेकिन ये जरूर है कि ये उसी स्थिति में थे जैसे कभी उस सुपर पावर ने इस धरती को बचाया था। लेकिन समय चेंज हुआ और वही लोग जो सीट पर बैठे उसके बाद इस कोशिश में लग गए कि इनका कितना नुकसान कर दिया जाए। वो इनका नुकसान नहीं, संगठन का नुकसान कैसे किया जाए। दोस्तों, यहां भी कुछ ऑफिसर हैं जिनको दिल से लगता है कि संगठन का नुकसान होना चाहिए, इनकी एकता नहीं होनी चाहिए, इनमें यूनिटी नहीं होनी चाहिए, और उसको तोड़ने के लिए जो कोशिश हो सकती है, मेंबर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना, लीडरशिप को बदनाम करना, बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम संगठित हैं, हमारे अंदर यूनिटी है, हमको अपनी दिशा विजन क्लियर है, तो उन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन आगे ही बढ़ता जाता है। हमारे संगठन की इतनी गहराइयां हैं कि कितनी भी कोशिश कर ली, ये संगठन उससे ज्यादा और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारी बहुत सारी समस्याएं, जब हम काम करते हैं बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक एमएससीपी को देख लीजिए, सबको ये लगता है कि एमएससीपी एक ऑर्डर हो गया और हमको 10, 20, 30 साल में कोई ना कोई स्केल गवर्नमेंट दे रही है। हालांकि ये वो स्केल है जो हमको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट में जो हायर लेवल में बैठा है या हायर लेवल की पोजीशन में बैठा हुआ है या हायर ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, जब देने की बारी आती है तो उसके अंदर भी परेशानियां चालू हो जाती हैं। एमएससीपी के केस में, एमएससीपी के जितने केसेस दिल्ली पहुंचते हैं अभी, और रीजनल लेवल में उसको स्क्रूटनी करके दिल्ली भेज दिया जाता है, उसके बाद भी दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर भी परेशानियां पैदा कर देते हैं। तो पहले तो 50% केस वापस आ जाते थे, अभी कुछ लोग चेंज हुए हैं, स्टाफ चेंज हुआ है और थोड़े सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हुए हैं। ऐसी उम्मीद है कि जो हमारे जो नॉर्मल डेली के केसेस हैं उनमें कोई ज्यादा बाधा हमको नहीं मिलेगी, और ये एसोसिएशन से एश्योर कर सकता हूं कि जो भी केस दिल्ली में जाता है रूल के हिसाब से, जैसे एमएसीपी है या विजिलेंस क्लियरेंस है या एसीसी है, वो सब केसेस में उतनी परेशानी अभी नहीं है। बहुत सारे दोस्त हमारे दिल्ली कनेक्टेड भी हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं फिर हमको बात करने की भी परेशानी हो जाती है। उतने कनेक्टेड मत हो जाइए, थोड़ा काम हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। ज्यादा कनेक्शन दूसरे लोगों को नुकसान करता है, क्योंकि वो ये फिर पूछता है कि वो तो मेरे से कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड नहीं हुआ तो इसका काम क्यों हो जाए। तो वो जो कनेक्शन है थोड़ा बैलेंस करके रखिए, ताकि वहां जो काम जाता है उसको खराब ना करें, बैलेंस करें सब लोग। दोस्तों, आज जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के प्रमोशन आप देख रहे हैं, और प्रमोशन अभी बहुत सुखद स्थिति में है। हम लोग 10 साल के नीचे असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट हो जाते हैं। एक सपना हम लोग लेकर चलते थे कि प्रमोशन ये कम से कम 15 साल के नीचे आ जाए। आज हमको लगता होगा, जो हमारे दोस्त प्रमोट हो रहे होंगे, कि भाई वैकेंसी निकलती है और हम प्रमोट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, वैकेंसी भी निकलती है, आप प्रमोट भी हो जाते हैं, लेकिन वैकेंसी निकलती कहां से है, ये कैसे पैदा हुई, ये सीरीज बनी कैसे। तो ये सुखद अनुभव जो आज है, इसकी पास्ट में जाने की जरूरत है। और पास्ट में इसलिए जाने की जरूरत है कि ये जो 28 साल और 29 साल में प्रमोशन होता था,
वो अभी 10 साल के नीचे आ गया है। इसके लिए जरूर किसी ने कुछ ना कुछ काम किया होगा, और काम कब किया होगा? जब परेशानियां पैदा हुई होंगी, जब दिखाई देता था कि 28 साल में कोई प्रमोशन नहीं है। उस टाइम ये बोला जाता था कि आप हमको प्रमोशन करो, अगर अंडमान जाना है तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर प्रमोशन 10 साल के नीचे हो रहा है तो उसको स्पॉटिंगली लेते हुए आगे की तैयारी करनी है, आगे के बारे में सोचना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आगे जो 28 साल पहले जेई में लगाते थे, वो ऐसा स्थिति ना हो जाए कि हमको 28 साल अभी एई में लगाने पड़े। अगर 28 साल एई में लगाने पड़ गए तो वो स्थिति कैसी होगी? काम करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि जेई में काम करने का दिल नहीं करता था उस टाइम में। जिन लोगों के 28 साल 27 साल हो जाते थे, फिर भी जूनियर तो जूनियर है, और घर में जो जूनियर होता है वो काम करता ही है, और उसमें जो सीनियर होता है वो जूनियर से काम कराते ही रहता है। एज फैक्टर नहीं है उसमें। तो दोस्तों, हमको आज जरूरत इस बात की है कि हम ये ध्यान दें कि अगले 28 साल में जो प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, और इस केडर को किस तरीके से हमको डाइल्यूट होने से बचाना है। आज असिस्टेंट इंजीनियर हम बन गए। असिस्टेंट इंजीनियर बनने के बाद हमको पता लग रहा है कि जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेज की हैं, वही ड्यूटीज हमको देने वाले हैं। प्रमोशन 10 साल से पहले होने से सिर्फ इतना हो जाता है कि फिक्सेशन में अभी बेनिफिट है। अगर 10 साल क्रॉस हो जाता तो फिक्सेशन का भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। जैसे मैं कोची में बोल रहा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो प्रमोट आज हमारे दोस्त हो रहे हैं, और 30 साल के बाद हो रहे हैं या 28 साल के बाद हो रहे हैं, तो उनको पेमेंट में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ट्रांसफर भी हार्ड एरिया में हो जाए, उसके बाद लगता है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर ठीक था। हमारे कुछ दोस्त लोग तो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, अभी अकाउंट एग्जाम कई लोगों का गलती से पास नहीं हुआ और वो रेगुलराइज कर दिया अभी पीछे। वो ये बोल रहे थे कि मैं अगर रेगुलराइज नहीं होता तो वही ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये सब बातें बोलकर मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि प्रमोशन नहीं होना चाहिए। प्रमोशन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, और मेरा ये सपना है कि मेरा जो भाई है वो जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करता है, वो असिस्टेंट इंजीनियर बने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, एससीबी बने, और चांस लगे तो चीफ इंजीनियर भी बने। इस डिपार्टमेंट में ये संभावनाएं हैं हमारे लिए। उन संभावनाओं को सही रूप देने के लिए संगठन की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, और उसमें काम करने की जरूरत है, लगातार उसके पीछे लगने की जरूरत है। अगर हम ये सोचते हैं, कई बार ये हो जाता है कि मैं काफी लोगों को जानता हूं, हो सकता है किसी दिल्ली में तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कोई एमपी को जानता है, कोई मंत्री को जानता है, और कोई किसी डायरेक्टर को जानता है, पता नहीं किस किस को जानते हैं, और ऐसा अहम हो जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब बात प्रमोशन की आती है, जब बात केडर की आती है, तो कुछ नहीं कर सकता, एक लाइन नहीं लिखवा सकता। उसका नतीजा क्या है कि वो फिर अपने लिए काम करना चालू कर देता है, और इस तरीके से काम करता है कि भाई मेरी गाड़ी आगे जानी चाहिए, बाकी की गाड़ी तो पीछे रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हमको सबको साथ में लेकर चलना है, सबके बारे में ही सोचना है। हमारी समस्याएं हो सकता है कि असिस्टेंट इंजीनियर बनने के बाद अलग अलग हो जाएं। जूनियर इंजीनियर में हमारी समस्याएं अलग नहीं थी, हमारी तो प्रमोशन एक टारगेट था, वो प्रमोशन हमको मिल रहा है। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर में हमारी दिशाएं अलग हो जाती हैं, एज बढ़ने लगती है, बच्चे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे थॉट चेंज हो जाते हैं, और कई बार हम लोग इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको फिर भी अपने संगठन को, अपने आप को इकट्ठा करके रखने की जरूरत है, एक दूसरे के हेल्प की जरूरत है। दोस्तों, कभी आपने यूनिटी एक शब्द है, उसके बारे में कभी ध्यान से
उसका अवलोकन करके देखा है? कभी आपने अपने डिवीजन के 4 एईज को या 5 एई को साथ में मिलकर इकट्ठापन देखने की कोशिश की है? कभी आपने देखा है कि अगर उसको कोई काम मिल गया है, दूसरे को काम नहीं मिला है, उसको बैलेंस करना है, कभी उस इकट्ठेपन को जानने की कोशिश की है? संगठन वहीं से स्टार्ट होता है, एसोसिएशन वहीं से मजबूत होती है। अगर हम अपनी यूनिट को ही मजबूत कर लें तो संगठन मजबूत होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, सबको पता है कि असिस्टेंट ईयर का स्केल क्या है। हम लोग 46 अंडर में हैं। भले ही एसीपी से कुछ मिले या डीपीसी से कुछ मिले, जो भी मिले, लेकिन हम एज ए असिस्टेंट ईयर 46 अंडर में हैं, PB2 में हैं। और ये स्केल इस केडर के लिए, इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। जब पिछले पे कमीशन ने अवार्ड दिया था तो उस टाइम में HLC रिपोर्ट, HLC कमेटी कंस्टिट्यूट की मिनिस्ट्री ने, और ये माना गया कि ये जो 46 अंडर का स्केल है, ये इस केडर के लिए ठीक से दिया नहीं गया, इसका स्केल ज्यादा होना चाहिए। कई बार हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कई बार सोचते हैं, जैसे साहब ने बताया, चरण बाबू साहब ने, कि हम ये सोचते हैं कि हमको क्यों नहीं ऊपर वाला स्केल मिल जाए। अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हमको कोई चीज इस तरीके से लैडर पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि जो संभव हो और हम डिजर्व भी करते रहें, हिस्टोरिकली वो हमारे साथ जुड़ी भी हो। आज हम बात करते हैं 5400 PB3 की, और आज नहीं, ये पिछले 20 साल से या पिछले 14 साल से कम ये मानिए कि हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम कैट में हार गए, हाई कोर्ट में कुछ नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो बचा हुआ था HLC का, उसको भी दांव पर लगा दिया। भाई साहब, अगर दांव पर लगाना ही था तो अपना उस केस को लगा लेते, HLC को क्यों दांव पर लगा दिया? मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, कम से कम उसके बारे में कोई बातचीत तो हो सकती थी। उसका रिप्लाई भी कोर्ट में सबमिट हो गया। अभी पिछली बार मंत्री जी से मिले थे तो उसमें यही रिक्वेस्ट की कि HLC की रिपोर्ट के बारे में जो मिनिस्ट्री ने ये रिजेक्ट कर दी है, इसको रिव्यू कम से कम होना चाहिए, कुछ रास्ता निकलना चाहिए। अगर हम 5400 PB3 में ही लटके रहे, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। 5400 PB3 लेवल 11 से थोड़ा हटकर चलना पड़ेगा। तो लेवल 10 जो 5400 PB3 है, उसके लिए थोड़ा आगे सोचने की जरूरत है। और पिछला जो केडर व्यू का प्रपोजल हम लोगों ने प्रिलिमिनरी सबमिट किया है, उसमें हमने जो सेकंड पॉइंट नीचे नोटिंग में दिया है कि हमको 5400 PB2 का कम से कम मिनिमम स्केल दिया जाए। HLC रिपोर्ट में भी जो डिसीजन है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। मैं उस बात से एग्री नहीं करता कि HLC रिपोर्ट ने 5400 PB3 का स्केल रिकमेंड किया है। वहां भी 5400 PB2 का भी जिक्र है नीचे। तो मेरा ये सोचना है कि हम 5400 PB2 जो उसका मिनिमम है, उस लाइन में बात करें, और जो एफओ का उसमें नोटिंग था उसको भी अवॉइड करके चलें, और जो हिस्टोरिकली जो क्लास 2 को दूसरे डिपार्टमेंट्स में दे रहा है 4800 और 5400 4 साल में, कम से कम उस दिशा में कोई कदम हो। और हमको जो आज शर्ट डालने की भी पोजीशन नहीं है, तो कम से कम एक शर्ट हमको मिले, ताकि हमारा स्केल 4600 से कम उठकर कम से कम ऊपर जाने की स्थिति में इंप्रूवमेंट में जाए। तो इस दिशा में जो प्रिलिमिनरी सबमिशन है उसमें हम लोगों ने बात किया। दिल्ली का जो जनरल बॉडी मीटिंग था उसमें भी हम लोगों ने 5400 PB2 का रेजोल्यूशन मंच से लिया, और जहां भी अभी आगे जा रहे हैं उसमें
इस दिशा में 5400 PB2 का हम रेजोल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आज आप सभी दोस्तों से, सभी जो प्रेजेंट हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो 5400 मिनिमम 5400 PB2 लेवल 9 का जो स्केल है उसका एक अनुमोदन आपसे चाहता हूं, ताकि हम उसमें जो भी सबमिशन कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहें और डिस्कशन का एक पार्ट बने। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हाथ खड़ा करके उस 5400 PB2 के लिए जो जिस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपका समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और केडर रिव्यू की जो स्थिति है, केडर रिव्यू आप सबको पता है कि 2012 में आया और केडर रिव्यू में उस टाइम में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें बढ़ी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्टें बढ़ी और स्टैग्नेशन लेवल 5-6 साल लगातार नीचे आया। अभी जो ग्रुप ए का केडर रिव्यू डिपार्टमेंट ने सबमिट किया था, छुप छुपा कर किया था, ऐसे तो 18 से ही चल रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने डिपार्टमेंट को लिखा कि ये गलत है कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट, हमारी पोस्टें आप कम कर रहे हैं। आज तक जितने पिछले केडर रिव्यू हुए उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जितनी पोस्टें भी क्रिएट हुई वो या तो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, माने नीचे वाले केडर को ही सरेंडर करके वो पोस्टें क्रिएट हुई थी। 96 से पहले आप सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 50-50 एक डिवीजन था। 50% हमारे लिए पोस्टें थी, 50% ग्रुप ए डायरेक्ट के लिए थी। उसके बाद 66% और 1/3 और 2/3 का आया। 17/10/2012 में जो आरआर चेंज हुआ उसमें कुछ इस तरीके से हो गया कि जो 2/3 कोटा है वो जो पहले 1/3 डिप्लोमा और 1/3 डिग्री के लिए था वो 2/3 कोटा डिग्री के लिए ही सम्मोहित कर दिया गया। और जब 2/3 कोटा डिग्री के लिए सम्मोहित कर दिया गया तो डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर आता है उसके लिए, उस प्रमोशन के लिए कोई स्थान बचा नहीं। हालांकि एई से फर्स्ट प्रमोशन है क्लास 1 का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। 1954 का जो रूल था उसमें असिस्टेंट इंजीनियर यूपीएससी से ग्रुप बी आते थे, उनके लिए प्रमोशन का वो रास्ता था। उसी एग्जाम को एलडीसी कन्वर्ट करके हमारे लिए वो रास्ता बना। और ये मानिए कि हम वही असिस्टेंट इंजीनियर हैं जो यूपीएससी से आते थे, आज डिपार्टमेंटल एलडीसी से आते हैं। तो आज 20% कोटा है। वी आर ऑक्यूपाइंग सेम सीट विच वाज अवेलेबल थ्रू यूपीएससी। जब हमारे लिए वो प्रमोशन के लिए एक रास्ता पहले से बना हुआ था तो उस रास्ते को बंद करने की स्थिति बनती नहीं है। दैट शुड हैव बीन ए यूनिफॉर्म मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। लेकिन 17/10/2012 के बाद फुल डिग्री होल्डर और नथिंग फॉर डिप्लोमा होल्डर। या तो डिपार्टमेंट ये सोचना चाहिए साथ में कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आगे चलकर परेशान तो करेगा, लोगों के अंदर डिप्रेशन की भावना पैदा करेगा। इक्विलिटी से हटकर एक डिसीजन है। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी था कि डिपार्टमेंट फिर यही सोच लेता कि कम से कम इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर की उसको यूनिफॉर्मली डिग्री कर देता। और डिग्री कर देता तो उनको पता है कि इनका स्टार्टिंग स्केल 4600 होना है, वो करना नहीं है। आज बड़े प्यार से ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर ये बोलता है नहीं जूनियर इंजीनियर के बगैर डिपार्टमेंट चलेगा ही नहीं। अरे हम कब बोल रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर के बगैर डिपार्टमेंट को चलाना है। हम ये बोल रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर का इनिशियल अगर आप डिग्री करते हैं तो उस केस में ये जो आपने ऊपर डिग्री कर दी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज जो 5% भी और या 10% भी जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा आता है और वो असिस्टेंट इंजीनियर बनता है और बाद में उसकी एलिजिबिलिटी उस पोस्ट के लिए नहीं है और वो आराम से साइड में बैठकर वो करेगा और 5% कोटा जो डिपार्टमेंटल प्रमोटी आते हैं वो भी उसी कैटेगरी में लगेंगे। तो ये स्थिति जरूर आएगी कि एक जो कॉर्नर है वो परेशान रहेगा और डिप्रेसिव स्टेट में रहेगा। अगर वो परेशान रहेगा तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, अपनी
दुर्दशा को सुनाएगा, तो ये सोचिए कि कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। मैं आज वो लैप्स की नीति दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो रास्ता अलग है। डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है, और डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट में ये सोचिए कि कम से कम 70-80% ऑफिसर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कम से कम 20 से 30% ऑफिसर इस तरीके से बैठे रहते हैं कि इनकी जो नीचे वाले लोग हैं, इवन उनका बस चले तो बेलदार की भी तनख्वाह खा जाएं। क्योंकि पिछला कैडर व्यू जो हुआ था 2012 में, उस कैडर व्यू में अगर मैचिंग सेविंग हुई है तो वो कहां से हुई थी? वो मैचिंग सेविंग बेलदार से लेकर ड्राफ्ट्समैन तक और जूनियर इंजीनियर तक की पोस्ट को ही सरेंडर करके किया गया था। आज भी जब प्रिलिमिनरी हमने सबमिशन किया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट इंक्रीज करने की हम बात कर रहे हैं, हमने डिमांड की है कि कम से कम 20% पोस्ट जूनियर इंजीनियर का बढ़ना चाहिए। क्योंकि जूनियर इंजीनियर जो हम बोलते रहे हैं कि बैकबोन है सीपीडब्ल्यूडी का, तो वो बैकबोन अगर वीक हो गया, संख्या ही कम हो गई, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो काम कौन करेगा? तो इसका मतलब काम असिस्टेंट इंजीनियर करेगा, और असिस्टेंट इंजीनियर काम करेगा तो उसकी पोस्ट को आप, उसकी ड्यूटीज को आप डाइल्यूट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उससे काम जूनियर इंजीनियर का ही कराना है आपको। तो दोस्तों, इस स्थिति में जरूरी है कि कम से कम जूनियर इंजीनियर की पोस्ट 20% इंक्रीज हो। ये एक थॉट सेंट्रल की तरफ से हम लोगों ने प्रिलिमिनरी सबमिशन में दिया है, जो आप लोगों ने किसी न किसी तरीके से पढ़ने की कोशिश की होगी, ग्रुप्स में डाला हुआ है। दूसरा हमने लिखा कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट इंक्रीज करने की बात हम कर रहे हैं, वो उसी तरीके से करो जो पिछली बार की थी। 2012 में भी मैचिंग सेविंग उसी तरीके से की थी कि जूनियर इंजीनियर मान लीजिए आप इस बार कम नहीं करना है, तो आप नीचे ड्राफ्ट्समैन का जो केडर है उसको ऑलमोस्ट आपने डाइंग केडर डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए नया रिक्रूटमेंट करना आपने बंद कर दिया। तो उसका काम कौन कर रहा है आज? उसका काम जूनियर इंजीनियर ही कर रहा है या असिस्टेंट इंजीनियर कर रहा है? तो उसकी जगह जरूरी है कि प्लानिंग जो पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर की है उसके साथ एक जूनियर इंजीनियर को लगा दिया जाए, और जूनियर इंजीनियर अगर लगाना है तो उस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जो पोस्ट आप ड्राफ्ट्समैन की सरेंडर कर दिया है या कर रहे हैं, उससे मैचिंग सेविंग करो। आपके पास कोई फोरमैन नहीं है, आपके पास कोई वर्क असिस्टेंट नहीं है, आपके पास अगर देखा जाए तो स्किल्ड कैटेगरी का कोई वर्कर भी आज अवेलेबल ठीक से नहीं है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आते हैं और वो कोई क्वालिफाइड या क्वालिफिकेशन के साथ जोड़कर यहां दिखाया नहीं जाता, मिनिमम वेजेस ही दिया जाता है उनको। अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल से अगर कोई काम कर रहा है, दिल्ली में ये प्रथा है, पिछले 10 साल से सेम लेबर काम कर रही है, और सेम लेबर मिनिमम वेजेस बड़ी काम कर रही है, उनको कोई इंक्रीमेंट थोड़ी दिया जाता है। तो मायने ये हो गया कि डिपार्टमेंट और जो सीनियर ऑफिसर, उनको पता है कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जो काम करा रहा है वो उन लोगों से काम करा रहा है जो क्वालिफाइड भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास इंस्पेक्शन आ जाती है, क्यूसी आ जाती है, और समस्या ये हो जाती है कि हम बिल पेमेंट कर देते हैं, और बिल पेमेंट नहीं कर देते हैं तो ऊपर से दबाव आता है कि आप तो डिले कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट को। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरा ये बोलना है दोस्तों कि जो मैचिंग सेविंग डिपार्टमेंट पैसा नहीं देकर कर रहा है, उस मैचिंग सेविंग से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें, जूनियर इंजीनियर की पोस्टें 20% इंक्रीज हो और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट भी इंक्रीज हो, ताकि हमारा जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स है वो जो खोने की कोशिश हो रही है वो खोया नहीं जाए। आपने देखा कि ट्रांसफर एक बहुत बड़ा हथियार डिपार्टमेंट लेकर चल रहा है। कुछ चीफ इंजीनियर वर्क्स कम टीएलक्यूए तो ऐसा समझने लग गए कि अगर मैंने एक ट्रांसफर कर दिया ना तो मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। आप उस सीट पर बैठे हुए, अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बना रहा हूं या बिल फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। उसको ड्यूटी से बढ़कर उस आदमी को बोलना कि अरे मैंने तो आपका ट्रांसफर कर दिया था, आपके लिए कितना बड़ा काम मैं कर दिया है,
तो दोस्तों, जो भी ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं सरकार के लिए कर रहे हैं, और वो जो सीनियर ऑफिसर बैठा है वो भी सरकार के लिए ही ड्यूटी कर रहा है। वो हमारे मेंबर्स के पास जाकर ये ना बोले कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर किया है, कोई फेवर नहीं करता है, और इतना मानकर चलिए कि दबाव में करता है। एक बार नहीं करता है, दोबारा करता है। उसको पता है कि ये केस जेन्युइन है तभी करता है। लेकिन इसके साथ साथ समस्या बड़ी वो भी है कि जो 2018 में 3 साल प्रोबेटी गाइडलाइंस के जोड़कर हमारी स्टेशन टेन्योर की पॉलिसी आई, उससे भी हम लोगों को और संगठन को एक दबाव में रखने की एक कोशिश डिपार्टमेंट के उन गिने चुने ऑफिसर्स की है जो ये चाहते हैं कि ये डिस्टरबेंस हो। दिल्ली में और कहीं आसपास के एरियाज में ये देखा गया कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर, कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से भी बैठा हुआ है। वहां प्रोबेटी गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए ही प्रोबेटी गाइडलाइंस एप्लीकेबल है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कि जो ऑर्डर करने वाला आदमी है उसको अपने ऊपर भी कम से कम बाबा विवेकानंद की वो बात याद रखनी चाहिए कि अगर मैं प्रीचिंग करता हूं तो मेरे को पहले अपने ऊपर प्रीचिंग का भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ट्रांसफर पॉलिसी में जैसे मुकेश शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि उसमें काम चल रहा है, और जो प्रेजेंट डीजी है, इतना बोला जा सकता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमने पाया है कि एक सिंपैथेटिक अप्रोच उनकी है। और कई बार यह होता है कि जब सुपीरियर ऑफिसर सिंपैथेटिक अप्रोच रखता है तो नीचे अच्छा नहीं लगता। ऐसी थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर ऊपर वाला ऑफिसर नीचे वालों को एसोसिएशन से, संगठन से झगड़ा करना चालू कर देता तो बहुत खुश होकर घूमते हैं। अगर थोड़ा अच्छा बात सुने, जेन्युइन बात सुने, सिंपैथेटिक ले, तो वो अच्छा नहीं लगता कई लोगों को। फिर भी एसोसिएशन सेंट्रल में अपना पूरे जिम्मेवारी से काम कर रहा है, परस्यू कर रहा है, और इस उम्मीद से कर रहा है कि हम इस मामले में जो ट्रांसफर पॉलिसी का जो चेंज का मामला है, उस मामले में भी कुछ न कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे। सबको पता है कि 7th CPC में क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी हुआ है, पहले भी होता रहा है। हमको 30% और फिर नीचे वाला और फिर 8% इस तरीके का HRA भी मिलता है। सब वो इसलिए मिलता है कि वहां सर्कमस्टांसिस पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो यही बात हम लोगों ने सबमिट किया है कि आप XYZ जो सिटी का क्लासिफिकेशन है उसको बेस करके आप इस पॉलिसी को रिव्यू कीजिए, सो दैट जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर बर्डन ना हो, हरासमेंट ना हो, और डिपार्टमेंट आज जो ट्रांसफर टीए और जेटी देने से बचने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, उसकी भी जरूरत ना पड़ेगी। आपने देखा होगा पीछे IRT के ऑर्डर हुए, उसमें IRT के ऑर्डर में सभी को, जिसने टेन्योर कंप्लीट किया था या नहीं किया था, सबको विदाउट TADA डिक्लेयर कर दिया। हालांकि हमारे दोस्तों ने तो बहुत जल्दबाजी में कैट में चले गए और उसका रिप्लाई अभी तैयार कर रहा है डिपार्टमेंट। तो कई बार जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, परस्यू करना चाहिए, क्योंकि पिछले कितने सालों से टेन्योर कंप्लीट अगर हो गया है, उसमें अगर ट्रांसफर हो रहा है IRT, सबको TADA और मिला है। मैं बीच में अभी हम लोग बात करने के लिए गए थे, तो उसमें अजीत कुमार साहब का ही एग्जाम्पल मैंने कोट किया था कि साहब काबुल से रिक्वेस्ट करके ही तो इंडिया आए थे। तो काबुल पार्लियामेंट बनाने के लिए गए थे, अगर ये बोल देते कि मैं अभी एप्लीकेशन नहीं डाला है सर, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए या 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद एप्लीकेशन तो डाला कि मेरे को चॉइस पोस्टिंग दे दो। जब हार्ड एरिया में जाता है तो चॉइस पोस्टिंग देने का एक प्रोविजन बनाकर रखा है ना डिपार्टमेंट ने, तो उससे भागने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे राइट हैं
उनको लेने के लिए भी हमको संघर्ष करने की जरूरत है और संघर्ष करते रहना पड़ेगा। जैसे ही किसी स्लीप मोड में आ गए कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने देखा कि न्यूज़पेपर का रिम्बर्समेंट, उसके लिए ऑर्डर निकाल दिया। मतलब छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो डिपार्टमेंट दे सकता है, उनके लिए भी डिपार्टमेंट भागना चालू हो गया है और असिस्टेंट इंजीनियर को ये मान लिया है कि इसको कैसे ना कैसे दबा कर रखना है। और ये असिस्टेंट इंजीनियर को दबाकर रखने की जो स्थिति है वो आज नहीं है। आज हमारी संख्या है, आज हम 3000 हैं, हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लास 1 का 45% हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये स्थिति है। तो दोस्तों, मेरा यही बोलना है कि सब लोग जागते रहें और अगर ड्यूटी करनी है गवर्नमेंट की, अपना काम तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राइट है उसके लिए सजग रहने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, सबको पता है कि 1/1/2006 में से जो पे कमीशन इंप्लीमेंट किया था CCSRP रूल 2008 के हिसाब से, छठा वेतन आयोग, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का जो पे स्केल है वो 6500 से अपग्रेड करके 7450 कर दिया गया था। शेड्यूल का पार्ट था। परसुएशन हुई और हमारी सेंट्रल टीम उस टाइम रिप्रेजेंटेड बाय चरण बाबू सर, उसको रिप्रेजेंट किया। 10/3/17 में ऑर्डर भी निकाल दिया फिक्सेशन का। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ऑर्डर ले लिया, इनकी एरियर भी ले लिया, लेकिन बाद में उस ऑर्डर को रोकने की कोशिश की और ऑडिट ऑब्जेक्शन का रिप्लाई ना देने की वजह से उसमें और कॉम्प्लिकेशन आ गए। लेकिन फिर गुवाहाटी में हमारे दोस्त कैट में गए और उसके बाद वो जो विड्रॉल का ऑर्डर था उसको कैप्टन अबेंस कर दिया गया और वही स्टेटस अभी चल रहा है। उसके बाद फिर कैट में रिप्रेजेंट किया एसोसिएशन ने, उसमें डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट ये माना है कि हमने तो दे दिया था, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, वो नहीं दे रहा है। तो वहां डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्योंकि पार्टी नहीं था तो कैट की तरफ से ये बताया गया कि आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भी पार्टी बनाने से ज्यादा अच्छा है। तो दोबारा अभी कैट में केस को डाला है और डिपार्टमेंट को 4 वीक का टाइम दिया था कि आप रिप्लाई दे दीजिए। हमने वो कैट केस डालने से पहले डिपार्टमेंट ने जो एक ऑफिस नोट भेजा था जिसमें बताया था कि आपकी ये डिमांड को एक्सीड नहीं कर सकते, उसका रिप्लाई देते हुए डिपार्टमेंट को ये बोला था कि आप इसको अंडरस्टैंड करो, जबरदस्ती हमको फोर्स मत करो कोर्ट में जाने के लिए। मतलब दिस इज वेस्टिंग योर टाइम आल्सो एंड आवर टाइम आल्सो, और मेंबर्स का पैसा भी उसमें जा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 4 वीक का जो टाइम था वो 4 हो गया, 4 से 8 हो गया और अभी 12 वीक हो गए, अभी तक रिप्लाई सबमिट करने की पोजीशन में डिपार्टमेंट नहीं है। बीच में 3 बार हम लोग मिल लिए, कुछ डाउट था वो डाउट भी क्लियर कर दिया, बता दिया कि 7450 का मिनिमम 13,860 है, वही बनेगा, पहले फिक्सेशन करो, बंचिंग बाद में। लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है, वो पुराने वाले फिर CPC की बात कर रहा है, बोला SC को जो स्केल मिला था ना उसमें बंचिंग नहीं मिला था, वहां 3700 से 4500 कर दिया था। अब 5वें वेतन आयोग में तो हम लोगों को 2-2 इंक्रीमेंट के बाद 1 इंक्रीमेंट दिया था, वहां स्केल की फिक्सेशन की तो कोई बात ही नहीं थी। तो दोस्तों ये स्थिति है डिपार्टमेंट की, उसको समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लगता है कि पैसा पॉकेट से जाता है और असिस्टेंट इंजीनियर को किसी भी तरीके से, फिर एक बार बोलता हूं कि दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगली डेट अभी 12 मार्च है और ये उम्मीद है कि हम जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक बार कोर्ट में जाने के बाद तो ये होता ही है कि जज के मूड के ऊपर है कि वो किस दिशा में लेकर जाएगा। वो सरकार के लिए सिंपैथेटिक है, सरकार का पैसा ना जाए
तो उसके लिए जैसे एमएससीपी का केस था, आप सबको पता है कि देते देते हमको पीछे धकेल दिया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो ऐसी उम्मीद यहां नहीं है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन है और गजट नोटिफिकेशन में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है और डिपार्टमेंट ने भी राजभाषा अधिकारियों को भी दिया है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी इस बारे में फिक्सेशन हुई है। तो ये उम्मीद है कि हमको मिलेगा। लेकिन इसी बीच में जो सेकंड हियरिंग में ऑनरेबल कैट पीबी दिल्ली ने उसमें बहुत साफ शब्दों में हिदायत दी है, डायरेक्शन दी है कि जो भी मेंबर एप्लीकेंट 1 का है, एप्लीकेंट 1 इज एसोसिएशन सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन, जो भी इस एसोसिएशन का मेंबर है उसका कोई रिफिक्सेशन या कोई रिकवरी ना किया जाए। मेरा सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जहां भी कोई स्थिति ऐसी आती है तो उस कैट के जो इंटरीम ऑर्डर को लगाकर डिपार्टमेंट में सबमिट करें। मैंने कई दोस्तों को बोला था कि आप ये सबमिट कर दीजिए, शायद वो किसी और दिशा में चल रहे थे तो वो सबमिट नहीं किए उसमें और उनकी रिकवरी भी हुई। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आती है कि डिपार्टमेंट या पीओ की डायरेक्शन में कोई रिकवरी का प्रपोजल है, उसमें ये सबमिट कर दीजिए, एसोसिएशन को कॉपी दीजिए, सो दैट कि अगर कोई कंटेम्प्ट का प्रोविजन हमको करना पड़े तो वो कंटेम्प्ट का प्रोविजन हम लोग कर सकते हैं और कैट में हम डाल सकते हैं। बहुत साफ है, इंटरिम ऑर्डर की कॉपी ग्रुप्स में डाली हुई है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल टू द मेंबर ऑफ द एप्लीकेंट 1। मेंबर एप्लीकेंट नंबर 1 इज सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन। आपको यही लिखना है कि आई एम द बोनाफाइड मेंबर ऑफ सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन और दिस इज एप्लीकेबल टू मी एंड देयर शुड नॉट बी एनी रिकवरी और एनी रिफिक्सेशन टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस ओए और इंटरिम ऑर्डर। तो मेरा होप है कि ये जिन लोगों के साथ अगर कोई ऐसा रिकवरी का स्थिति इवन रिटायरमेंट में भी है तो कम से कम डाल दीजिए, सो दैट हम लोग अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उस कॉपी के साथ कंटेम्प्ट में जा सकें डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में या उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जो इस तरीके की गलतियां करते हैं। दोस्तों, रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जो स्थिति है आपको सबको पता है कि उसमें जो हार्ड वर्क पीछे से चला आ रहा था उसी दिशा में, उस कंटिन्यूटी में हम लोगों ने काम करना चालू किया और उसमें ये बोला जाए कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वाई के तोमर जी और हमारे प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा जी, उन्होंने अथक प्रयास किया उसमें और इतना ज्यादा प्रयास किया कि आज जो स्थिति है वो काफी सुहावनी सी दिखती है। 17/10/2012 तक की जितनी वैकेंसी थी, जो भी थी, जो कैलकुलेशन में कम आई, ज्यादा आई या डाइवर्सन की वजह से हमको नुकसान हुआ, तो जो भी थी उसका डीपीसी सिविल का भी और इलेक्ट्रिकल का हो गया है। 17/10/2000 के बाद की जो वैकेंसी है उसका मूवमेंट अभी चालू है। एसीसी मांगना चालू किया है। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एडहॉक हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो मुकेश शर्मा जी और तोमर जी से कनेक्ट हो जाएं, अगर अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, और अपना सपोर्ट, अपना सहयोग और अपना साथ उसमें रखें। अपनी एसीसी की डिटेल टाइमली भिजवाएं, जहां कोई तकलीफ हो रही है तो उसको बताएं, अननेसेसरी कोई डिस्प्यूट की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, अपने साथी का भी उसमें देने की कोशिश करें, सो दैट ये जो होली मिशन है इसमें हमको सफलता मिले और जो ये एडहॉक का भूत है डिपार्टमेंट ने हमारे पीछे लगा रखा है, इससे निजात मिलने के लिए हम आगे बढ़ सकें। और क्योंकि एडहॉक कोई परमानेंट नहीं है, आपने देखा होगा कि दिसंबर में एक डीओपीटी का ऑर्डर आ गया था, उससे बहुत ज्यादा विचलित स्थिति अभी भी बनी हुई है। उसको ये ना सोचें कि वो हमारे सिर से हट गया है, तो इससे अच्छा है कि वो जल्दी जल्दी हम लोग अपना जो भी फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करें। अगर आपकी सीनियरिटी लिस्ट में कोई गलतियां हैं उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको भी क्लियर करें, ताकि जो फाइनल डिस्प्यूट की स्थिति वहां पर ना बने और आगे कम से कम फाइल चलती रहे। तो इसमें एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार हमारे प्रेसिडेंट और वाई के तोमर जी के लिए एक स्पेशल
क्लैपिंग दे दें कि जो मेहनत से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और एक रास्ता मिल रहा है। जो हमारा एक मेन एजेंडा होता था पहले कि रेगुलराइजेशन होना चाहिए, वो रेगुलराइजेशन की दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि ये CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन के मार्फत से ही हो रहा है, इसमें कोई और दूसरी एसोसिएशन या किसी और की मेहनत नहीं है। तो दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ भोपाल जोन की बात थी, मैंने भी बाबू साहब से बात हुआ था और आज सागर जी से भी बात हुआ, वहाँ के मेंबर से भी मेरा रिक्वेस्ट है जो भी आज अवेलेबल हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक जोन क्रिएट करें और उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है वो मेंबरशिप की है। मेंबरशिप तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर छत्तीसगढ़ और भोपाल में मध्य प्रदेश की, जिसमें आपका इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर वो सब कंप्लीट होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना मेंबरशिप एक लिस्ट बनाकर और वहां से एक छोटी मीटिंग या बड़ी मीटिंग करके एक फॉर्मल रिक्वेस्ट रीजन को भेज दें, सो दैट कि रीजन आज के अडॉप्शन में जो जनरल बॉडी का अडॉप्शन है उस अडॉप्शन को लेते हुए सेंट्रल टीम को लिख दे और हम लोग वहां एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसकी अप्रूवल के बाद आपको वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि शायद और एक्टिवली मध्य प्रदेश काम करेगा, इंदौर काम करेगा, जबलपुर काम करेगा, ग्वालियर काम करेगा, रायपुर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे है, उनकी संख्या तो ऐसे ही 40-50 से ऊपर है ना। तो वो वहां से तो हो सकता है कि डिमांड कुछ और आने लग जाए, लेकिन वो डिमांड आए उससे पहले आप सब लोग मिलकर उस लिस्ट को कंपाइल करके रीजन में भेज दें और सो दैट कि वेस्टर्न रीजन की जो स्ट्रेंथ आज यहाँ शो की है उसको और मजबूती से आगे संगठन में भी रिप्रेजेंटेशन मिले। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी जो वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए है और हमारी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं। तो मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना तन मन धन से अपना काम करें, ऑफिस का काम ठीक से करें और मजबूती से करें, ईमानदारी से करें और इस संगठन को भी उतनी ईमानदारी से सीखते रहें। और एक बार फिर सभी दोस्तों का धन्यवाद करते हुए, सभी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस का धन्यवाद करते हुए और सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हुए, अगर कोई बात रह गई तो उसके लिए आप दोबारा पूछ लीजिएगा। उनका धन्यवाद करते हुए मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आप इतना पेशेंटली सुना और बोलने के लिए और दिल है कि मैं बोलता रहूं, ऐसा लगता है कि बंद ना करूं। हाँ, इसी बीच में मेरे को हमारे दादा दिखाई दे गए, चैटर्जी साहब। दादा हम लोग दिल से लगे हुए हैं उस काम के लिए, उस काम को मैं नहीं बोल रहा हूं और उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ होना चाहिए और नहीं होगा तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे, है ना। वो कोशिश तो कभी बंद नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उतना साथ हमको नहीं दिया। साथ तो दिया है, उतना नहीं दिया। थोड़ा सा और साथ दे देते तो शायद वो वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी साथ दिया। मैं यही बोलता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और एसडीजी साहब का भी धन्यवाद कर देता हूं। उनका सपोर्ट हमारे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। ऐसा उम्मीद था कि वो आज आने वाले थे, इधर आते तो और अच्छा लगता। इन शब्दों के साथ एक बार फिर धन्यवाद करते हुए CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. We'll now have a group photo. All office bearers of Western Region, please come on the dais. 1 minute program. And then I just need to clarify one more thing. We have got YouTube streaming going on. That account, we have got a Gmail account called cpwdewr@gmail.com.
We tried to use that for our live streaming, but it asked for minimum 50 subscribers. That's why we were forced to go for another Gmail account, which is my account dkk.cpwd@gmail.com. That is because उसको password मेरे को पता है, बाकी किसी को पता नहीं मेरे पास. So I had to force to use that password. Just clarification, it's not my personal use. It was because we had the YouTube live commission ready to go on. We needed an account there. CPWD AWR का काम नहीं किया. They want 50 का, that's why I was forced to go for my account. Thank you for that. हाँ. The Jay Association wanted to honor Sri Shishpal Singh. We request you to please come on the dais. Jay Association representatives. Jay Association representatives. Please get the bouquet ready. We'll have blue. कब? All Western region representatives, please. कुछ लोग नीचे करा रहे हैं, ज्यादा फिर से मिलेगा. जितने भी लोग आना चाहिए आपकी को. आइए आइए. All members. अरे आ जाओ ना, आ जाओ. हाँ जी सिंगर. वर्मा सर आइए सर. आइए सर. उधर उधर चलते ना, उधर चलो. आइए सर, आप इधर आइए. आप आइए. अरे ठीक है. नहीं बैठ. अरे नहीं आप बैठ. अरे हम लोग बैठ. सर बैठिए. सर बताओ. इधर तक पूरा आ जाएगा. इधर तक पूरा आ जाएगा. आइए सर, इधर आ जाएगा. आ जाएगा पूरा. अच्छा अभी आए ना. हाँ आए. ये होने के बाद बुला था. डायरी में आने वाला. इधर नजदीक आ जाओ सर. थोड़ा सामने खड़ा हो, ऐसा लग रहा भाषण दे रहा हो. कंफर्मेशन आने दो. सर जय एसोसिएशन आ गए. जल्दी आ जाओ. जय एसोसिएशन प्लीज कम.
Yes, sir. Relax. हाँ हाँ बस Hello. Last 2 minutes. I am very much thankful to each and everybody for central team, eastern team, or south team. Okay. और स्पेशली अजित कुमार सर एंड आर्किटेक्चरल टीम इतना पेशेंटली हमारे साथ में कंटिन्यूस हमेशा एसडीसी ऑफिस को मैं देखा था। अजित कुमार सर हमेशा कोई भी प्रोग्राम में सुबह से शाम तक हमारे साथ में रहता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आता है हमको। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खाना बहुत वैरायटी बना हुआ है, नियर अबाउट 35 आइटम्स। 2 नॉन वेज काउंटर लगा हुआ है, 1 वेज काउंटर, और इडली पानी पूरी भी है। इडली नहीं, डोसा एंड पानी पूरी भी है। हर चीज टेस्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, स्पेशली फॉर पेशेंटली लिसनिंग आवर प्रोग्राम एंड entertaining us. Thank you. Sponsors also, thank you very much for the sponsors for their presence and involvement in the for reach this program successful. Thank you, sir. चेंबूर और दादर के लिए बस रेडी हैं। जैसे डिनर खत्म हो जाएगा, बस रेडी है, तुरंत बस में बैठिएगा सर। हो गया लाइव तो